Hello, 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 chat. We are live with Clutch Chess because हमारे गुकेश क्लच करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया विन एंड यू नो व्हाट आई नो 5 मिनट डिले हो गए बट मेरा अपने में चश्मा टूट गया भाई स्ट्रीम से जस्ट 5 मिनट पहले सो क्लियरली एक्सप्लोसिव गेम्स इन द मिक्स सो वेलकम चैट आते ही स्ट्रीम लाइक कर दो बिकॉज आज मैच होने वाला है इट इज गुकेश द वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस 3 अदर टैलेंटेड प्लेयर्स अपकमिंग प्लेयर्स है नाम जान जाओगे बहुत जल्दी मैग्नस कार्लसन फैबियानो कारुआना एंड हिकारू नाकामुरा साउंड नहीं है कह रही है चैट अरे बाप रे भाई साउंड ही नहीं साउंड तो होगी भाई साउंड होनी चाहिए आई थिंक साउंड होगी हेलो हेलो साउंड है भाई अपनी आवाज बढ़ाएं भाई प्लीज वरना कान चेक कराएं गोवा नहीं गए गोवा जाएंगे भाई आई थिंक 30 तारीख को होपफुली जाएंगे या नो कैमरा सिर्फ मेरी शक्ल है भाई एंड बट मेरी शक्ल से काम चल सकता है भाई इतनी बुरी नहीं है कार्लसन बिल्कुल एंड लास्ट टाइम ये दोनों खेले थे तो टेबल बैंगिंग हुई थी तो इस बार पूरा सामान हम रेडी करके बैठे हैं जैसी टेबल बैंगिंग होगी हम भी साथ में बैंक करना चालू कर देंगे क्या बैंक करना है 10 चीजें यहाँ पे रेडी टेबल पे तो बिल्कुल रेडी है भाई हम लोग साथ में आई थिंक ही इज ट्रैवलिंग फॉर गोवा प्रीटी सून ये कौन सा चश्मा है भाई टूट गया यार अभी 5 मिनट पहले चश्मा टूट गया मेरा तो ये मेरा 4 साल पुराना स्पेयर चश्मा है सो से मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है नीचे कार्लसन मुझे नेपो लग रहा है गुकेश मुझे प्रग लग रहा है सो थोड़ा बहुत शेकी है भाई साज भाई आज नहीं है भाई 5 मिनट्स ईच मूव 10 प्लस आई थिंक समथिंग कैन वी द टाइम कंट्रोल एक बार अगर नजर मारते हैं यार समय भाई आई डोंट नो इफ वी नो द एग्जैक्ट 10 प्लस 5 right is the time not mistaken so it's going to be 6 games today and आज 2 games होंगी गुकेश वर्सेस कार्लसन की 2 games so it's going to be Gukesh against Magnus with the white pieces and instantly afterwards it's going to be Magnus versus Gukesh and Gukesh के होंगे black and chess में जो लोग काफी टाइम से कौन है वो लोग समझते हैं भाई कि white pieces से कितने एडवांटेज होते हैं कौन समझता है भाई yes या no लिख दो कौन है वो लेजेंडरी प्लेयर्स चैट में जो समझते हैं व्हाइट की एडवांटेज जो डेली बेसिस पे उसका इस्तेमाल करते हैं कौन है वो लोग बताओ भाई जो लोग व्हाइट से समझते हैं उनको पता है कि व्हाइट से जीतना बहुत जरूरी है अगर मैग्नस ने पहली गेम ब्लैक से भाई धुलाई कर दी तो फिर सेकंड गेम भी गई भाई वी नो दैट ठीक है इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्राइक बैक अगेंस्ट मैग्नस विद ब्लैक लाइक बोलते ना यू कैन ओनली क्लाइंब सो मेनी माउंटेन्स सो आई थिंक मेरे हिसाब से पहला गेम स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है एडवांटेज ये है कि अगर पहली गेम जीत गए तो सेकंड गेम में भी जीत सकते हैं भाई तो कुछ भी पॉसिबल है सो फॉरगेट आज गुकेश खाली मैगस से नहीं खेलेंगे ही विल आल्सो प्ले 2 games अगेंस्ट हिकारू सो दैट्स गोना बी फैसिनेटिंग एंड 2 games अगेंस्ट कारुआना तो ध्यान रखो भाई वी हैव द वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन we have the world number 2 Hikaru Nakamura we have the world number 3 Fabio Caruana and ये world number 4 थे Gukesh उस टाइम पे जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था but he is not world number 4 anymore so बाकी तीनों प्लेयर्स की रेटिंग वही है of course they've played less number of games at least Hikaru and Magnus but Gukesh की रेटिंग थोड़ी नीचे आई है but he is gaining back momentum I think recent European club cup में उन्होंने बहुत बढ़िया खेला so yeah let's see if he can beat the strongest players of the world वर्ल्ड नंबर 9 नहीं बट वो वापस आ रहे हैं वापस वर्ल्ड नंबर 10 थे 9 आ चुके हैं 8 भी आ रहे हैं मैग्नस सेड ही इज नॉट फीलिंग व्हाट एट बोर्ड नाउअडेज 9 आई नो यू हैव 9 लाइव्स मिस्टर कैट जी बट ज्यादा 9 की 9 एक बार में उठ जाए ठीक है भाई दोनों की एक्यूरेसी 100% बिल्कुल भाई 100% एक्यूरेसी सो फार मतलब दोनों प्लेयर्स आ रहे हैं भाई फाड़ू जैसे खेल रहे हैं ठीक है भाई बोलो पेंसिल भाई हम लोग पेंसिल 5th स्टैंडर्ड में यूज करना छोड़ दिए थे अब हम पेन इस्तेमाल करते हैं यार साज भाई आई थिंक इस टर्न के लिए नहीं आएंगे ही बी बैक फॉर द वर्ल्ड कप ही इज ट्रैवलिंग आई थिंक बहुत जल्दी क्योंकि वो बुडापेस्ट से लंबी फ्लाइट लेके आएंगे विद अ लेओवर ऑन प्लूटो उनका बड़ा शौक था बचपन से प्लूटो देख के आऊं मैं वो ठंडी ठंडी वादियों में सो मैंने कहा जाओ भाई लेओवर करके आ जाओ आप जीएम कब बनोगे बिल्कुल भाई अगला स्टेप वही है भाई जो जब गुकेश की 3050 रेटिंग हो जाएगी तो उसके बाद मेरा जीएम बनना ही अगला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मतलब किताबों में मैच का चालू होगा मैच चालू बहुत जल्दी होगा यार आई थिंक शुड हैपन वेरी क्विकली आई थिंक रैपिड चेस है तो डिले विले तो उतना कुछ खास है नहीं शुड हैपन वेरी वेरी सून बट रिगार्डलेस वी आर रेडी वी आर बिल्कुल रेडी वुड दे बी कैमरास वर्ल्ड कप यस कैमरास होंगे वर्ल्ड कप में आई थिंक बहुत बढ़िया ब्रॉडकास्ट होगा एज यू विल सी बड़ा मजा आने वाला है भाई ऑन साइट होगा गोवा से लाइव ब्रिंग यू द एक्शन बहुत फीलिंग आने वाली है भाई प्लीज से मैंने अरे थैंक यू मिस्टर अरमान खान जी कैसे हैं आप सीवा स्ट्रीम पे कैमरा से आई डोंट नो यार ओके हाँ हाँ ठीक है
सारी टियर लिस्ट में नहीं लाए आप भाई। साज भाई की वो मेरे खुद के चैनल पे थी, साज भाई भी बिजी है। मैच कब शुरू होगा? आई एम गेसिंग विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 minutes इट शुड हैपन। दैट्स माय गेस। 10:30 इज द ऑफिशियल टाइम टू गो लाइव भाई। सो दैट्स द फीलिंग कि भाई बहुत जल्दी गेम्स भी चालू होंगी, एटलीस्ट दैट्स द फीलिंग। आ सो हमें कह रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, बाय द वे, उनको कह रहे हैं कि प्लेयर्स बैठ चुके हैं बोर्ड के ऊपर। सो बहुत ही जल्दी तशरीफ ले चुके हैं, गेम चालू होगी। पहला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पर भाई, जहां भी स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, टीवी के स्क्रीन पर, कौन सी पहली मूव खेले मुकेश? आई थिंक ही इज गोना गो फॉर E4। आई थिंक ही इज गोना बी एम्बिशियस की पहली गेम है, फ्रेश माइंड, फ्रेश फ्रेश में आया हूं, अभी यूएस में बैठा हूं, अभी यूरोप से फ्लाइट लेके आया हूं भाई, अभी फुल मोमेंटम से चैलेंज करने का मैग्नस को। तो मुझे लगता है ईफो खेलेंगे। व्हाट डू यू थिंक चैट विल हैपन? एंड स्ट्रीम लाइक करना ना भूले भाई। लेट्स गो, लेट्स गेट टू जल्दी से 100 200 300 500 लाइक। लाइव के मतलब मैंने साथ में को भेजा है, ही इज गॉन टू ऑन साइट। वो कैमरा चुपके से कोने में लगा रहे हैं। सो जब तक वो लगाते हैं तब तक हैंडल करना पड़ेगा आपको। C4 आई थिंक इज द लीस्ट लाइकली। यूजुअली नहीं खेलते लोग पहली गेम में, बट खेल दिया तो भाई सडनली यू विल बी द हुडीनी ऑफ टुडे। मैच स्टार्टेड 11:40 भाई। 11:40 कैसे चालू हो सकता है भाई? 11:40 में तो भी 1 घंटा 10 मिनट है। लाइट थोड़ी बढ़िया। अरे आरसीबी कहां से आ गए भाई? नहीं नहीं भाई, इस बार नो आरसीबी कैलकुलेशन। मतलब इस टूर्नामेंट में एक बहुत यूनिक चीज है। सो डे 1 डे 2 एंड ईफर ऑन द बोर्ड भाई। ईफर खिलाना भाई, यस लेट्स। ओ D6 by Magnus Carlsen, D4 भाई। Magnus choosing something very interesting, knight F6, knight C3 is the normal choice यहाँ पे। आई थिंक E5 यहाँ पे यूजुअली कहते हैं मार मार के एक्सचेंज कर सकते हो क्वींस, बट नहीं करना चाहिए। वाइट शुड मेंटेन 2 पॉन्स। यहाँ पे कई बार ना लोग कहते हैं कि E5 के बाद लेट मी जस्ट टेक एंड एक्सचेंज क्वींस, बट यूजुअली ब्लैक का किंग कैसलिंग जाने के बाद भी प्रीटी सेफ होता है। सो दैट्स व्हाई नाइट F3, नाइट D7, बिशप C4 एंड अभी बिशप P7। यहाँ पे आई थिंक कुछ G6 होता है, जहां पे आई थिंक नाइट G5 यू लूज, सो बिशप P7 वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहां पे पॉन टू A4 बाय गुकेश। बहुत जल्दी खेल रहे हैं। चैट कम ऑन, प्रेडिक्शंस डाल दो भाई। वोट में 65% लोग कह रहे हैं गुकेश विंस। दैट्स इनसेन। 29% मैग्नस। बेचारा मैग्नस या कहीं पोल देखेगा तो सदमे में आ जाएगा। 7% लोग कह रहे हैं ड्रॉ। आई थिंक राइट नाउ ड्रॉ इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट। A4 C6 आया ऑन द बोर्ड एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स B5 ब्लैक का आइडिया था, इसलिए A4 खेला। यहाँ पे रुक E1 वेरी लॉजिकल। बोर्ड इज लैगिंग साइड को। अरे भाई कोई चक्कर नहीं है भाई, बोर्ड की लैग हम अभी अभी गायब कर देंगे भाई, जिस तरह सहज लोग गायब हो गया भाई धोखा देके। मैच बिल्कुल बिल्कुल रुकी वन प्लेड एंड नाउ आई थिंक ब्लैक रुकी 8 खेल सकते हैं, बट वहां पे नाइट G5 रुके फिर रेपिटेशन है। सो दैट्स व्हाई ही प्लेज H6 अवॉइडिंग नाइट G5। बट गुकेश बहुत जल्दी H3 खेलते हुए। एंड चैट रैपिड चेस है। रैपिड मतलब बहुत जल्दी, तेज तेज। इमेजिन वट एवर यू डू इन लाइफ, आप पढ़ाई करते हो, डांस करते हो, दौड़ते हो, जितना तेज दौड़ोगे भाई उतना दर्द होगा। सो उतना पेनफुल होता है, उतना स्ट्रेसफुल होता है हर मोमेंट। आता है रुक टू E8 एंड नाउ आई थिंक बिशप के डेवलप करने का मौका आ चुका है। यू कुड ऑल्सो पुट द बिशप ऑन F1, काफी लॉजिकल मूव होती है, बिकॉज ब्लैक कई बार D5, नाइट B6, B5, ये बिशप कई बार ऐसे हवा में लटक रहा होता है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे उसकी तरह। तो यू कैन ऑल्सो पुट इट ऑन F1, आई थिंक वेरी लॉजिकल। और यू कैन प्ले बिशप E3 ऑल्सो वेरी लॉजिकल, या फिर A5, गेनिंग मोर स्पेस जितना मिले उतना इलॉन मस्क आपको $1,000,000 देगा भाई। I think Magnus was tilted due to that game, but it's been so long. He's back mentally. In fact, I'm pretty sure he's back mentally. Oh, by the way, Bishop P3, my move played by Gukesh. I'm not sure if that's a good sign. And now chat 420 की watching, बहुत जल्दी स्ट्रीम लाइक कर दो भाई। 420 लाइक होने चाहिए chat. स्ट्रीमर को पूरा उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। By the way, Bishop P3. Okay, let's see. Our ED4 possible है, बिकॉज आपने रुक E8 खेला है। अगर आप यहां पे नहीं खेलते, व्हाइट कुड हैव प्लेड D5। उसके बाद ये रुक E8 पे इज वेरी स्टूपिड, राइट? बिकॉज यू कांट अटैक द E4 pawn, so that's why E takes D4 एंड यहां पे यूजुअली यू टेक विद द नाइट। बट बिकॉज यहां पे नाइट टेक्स के बाद देयर कुड बी बिशप F8 अटैकिंग दिस pawn, मे बी गुकेश माइट टेक विद द बिशप और इवन द क्वीन, लाइक ही माइट चूज अनदर पीस। दैट्स व्हाई ही इज थिंकिंग। एंड चैट किस किस को याद है ग्रैंड चेस टूर? यस या नो लिख दो भाई, एक बार यस या नो लिख दो भाई। ग्रैंड चेस टूर, जहां पे वो क्रेजी, मतलब ना, एक गुकेश ने विन करी थी, फिर मैग्नस ने विन करी थी, फिर तीसरा ड्रॉ हुआ था 1.5 ईच। उस टूर्नामेंट में रैपिड सेक्शन में गुकेश वाज डोमिनेटिंग, क्रशिंग एवरीवन, लेकिन ब्लिट्स में ही वाज गेटिंग क्रश्ड बाय एवरीवन। सो इट वाज अ कंप्लीट पैराडॉक्स। इस बार क्या होगा? दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम रैपिड, कि वो 25+10 था, बट दिस इज ऑल्सो नॉट ब्लिट्स। सो बिल्कुल मिडल में है भाई, बिल्कुल मिडल में। मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप अपने दोस्त के घर गए सेलिब्रेट करने, या आपका दोस्त आपके घर आया PS5 खेलने के लिए, आप दोनों सेंटर में मिल रहे हो।
किसी के भी घर पे भी नहीं हो, तो क्या होगा, क्या खाना खाएंगे, कहां पार्टी करेंगे, कुछ पता नहीं है. सो इट्स गोना बी अ सरप्राइज. Bishop had played and now again putting pressure on that e4 pawn. That is where the magic lies. ये आरसीबी लगी, आरसीबी नो कैलकुलेशंस, वी आर गोना विन दिस. 8 मिनट, लेकिन मैग्नस से 50 सेकंड पीछे है गुकेश. ही नीड्स टू प्ले क्विकली भाई. इट्स नॉट गोना बी इजी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना बी इजी. Come on, come on, come on, come on, come on. We believe in Guki. I'm sure he's improved. Even we are sure. यार पता क्या हुआ चैट, जो हमने ग्रैंड स्विच देखा, किस किस को वो ट्रॉमा याद है भाई? मुझे तो बहुत याद है. इट्स ऑन पार विद वो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, भी नॉट एज मच बट या प्रीटी मच सिमिलर. ऐसा ही ट्रॉमा मुझे हुआ था. बट आई थिंक गुकेश ने से बहुत सीखा होगा. वेन एवर दीज प्लेयर्स सफर सच अ लॉस, दे कम बैक, दे लुक एट द ड्रॉइंग बोर्ड, कहां कहां पे मिस्टेक्स करी, एंड दे गेट बेटर. दैट्स व्हाई गुकेश इज द वर्ल्ड चैंपियन. किसी को याद होगा 2024 या 23 में, आई थिंक 23 एंड में वो 2750 पहुंच गए, एंड देन ही लॉस्ट लाइक 30-40 पॉइंट्स इन अ रो इन वन इवेंट, and then he came back again. So he's used to learning from his failures and getting back up again. So Bishop फन खेल दिया यहां पे. बिशप पैर हम नहीं देंगे किसी भी हालत में. हमारा बिशप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीस. लुक एट दिस, पॉइंटेड टुवर्ड्स द ब्लैक किंग. सो ये नहीं देंगे. बिशप ड्रॉस बैक, एंड अब हमारा प्लान है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, आज साहज भाई नहीं है तो आज तो इस, बोलते ना क्या क्या नाम है भाई, साहज भाई का फेवरेट नाम बता दो भाई, उनको आज हम थोड़ा दर्शन करेंगे. आज एफ पॉन आजाद है भाई. आज उस जेल के जेलर अवेलेबल नहीं है. ही कैन पुश द पॉन टू F4 एंड गेन मोर एंड मोर स्पेस भाई. इंक्रीमेंट इज 5 seconds आई थिंक, एंड दैट मींस कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा. बिल्कुल. ओ मैग्नस बाय द वे फॉर द फर्स्ट टाइम behind Gukesh on the clock. He moves the knight beforehand. F pawn move नहीं करने दे रहे. But we still have other options. We can play A5 gaining space. जैसा मैंने पहले भी कहा. We can play, I don't know, I was thinking like knight को move कर सकते हैं. थोड़ा सा awkward लग रहा है. And he plays A5. My move. Wow. साज भाई वेलकम वेलकम. साज भाई बाय द वे ट्रैवल सुन कर रहे हैं. यू विल सी हिम एट द वर्ल्ड कप. साज भाई मैग्नस भी डर गया भाई, एफ पॉन चलने नहीं दिया. एंड नाउ आई थिंक वी हैव 8.5 minutes ईच. इट्स गोना बी सुपर फैसिनेटिंग कि कौन जीतेगा यहां पे. बाय द वे लुक एट द रेटिंग्स वंस. If you really want to understand who's the stronger player on paper, Gukesh की रेटिंग 2693, मैग्नस 2808. 115 रेटिंग का डिफरेंस है भाई. 115. इमेजिन. ओके, मैग्नस डेवलप्स. आई थिंक उनका लॉन्ग टर्म गेम सिंपल है भाई. क्वीन D7, कभी ना कभी किसी ना किसी गली में. आई थिंक D5 यू वुड लव टू प्ले. फिलहाल के लिए आई थिंक मे बी नॉट सो इजी. ऑल्सो C5, यू नेवर नो, बिशप यहां पे आएगा, पॉन कैन बी वीक. सो वेरी इंटरेस्टिंग. एंड फिलहाल टाइम नेक टू नेक चल रहा है भाई. मेरे ग्लासेस स्ट्रीम से 4 मिनट पहले टूट गए भाई. 4 मिनट पहले टूट ही गए भाई. तो 4 साल पुराने स्पेयर ग्लासेस लगाए हैं भाई. अरे यार भाई, ये अब नए बनाने पड़ेंगे भाई. खर्चे खत्म नहीं हो रहे भाई. कम ऑन गुकेश, लेट्स गो. भाई मेरा फोन भी गिर रहा है. इज दिस रेटेड गेम भाई? बिल्कुल. रैपिड ब्लिट्स रेटेड एब्सोल्युटली. इफ ही बीट्स मैग्नस, जितनी रेटिंग मिलेगी ना भाई, उतनी तो मुझे पिछले 10 साल में नहीं मिली. कम ऑन भाई. गुकेश स्टिल थिंकिंग. एंड चैट पता है, ऐसे टाइम कंट्रोल में 10+5 में यू गेट 2 things. So blitz chess में you get one long think, जहां पे you can think for a minute. Vishy sir, 1 minute 43 seconds, famous example. इस टाइम कंट्रोल में you will get 2 things. This is one of those things. वो गुकेश अभी ले रहा है. तो एक और बचा है भाई, बस एक और. बिल्कुल पीयूष पांडे जी, बिल्कुल पीपी आपका नाम है. मेरे को पीयूष पांडे याद है, मुझे बिल्कुल पीपी से याद है. एंड बाद में विषय से खेला यहाँ पे. स्टिल गुकेश थिंकिंग, ओके मे बी इज गेटिंग अ बिट ऑफ अ लॉन्ग थिंक नाउ. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. राहुल द्रविड़ जी हमारी हिंदी फॉलो नहीं कर पा रहे. वेलकम ऑल, ग्लैड टू हैव यू ऑन द स्ट्रीम. डू लाइक द स्ट्रीम. Gukesh wins today, then Tiku wears the last in Goa. No, bro, it's not going to happen. I have to get new ones. I don't even know how will I get new ones in time now. Oh, damn, that's going to be tough. Bhai, Gukesh, 6 minutes 55 seconds. Bhai, I mean, I know I mentioned Vishy sir with 1 minute 43 seconds, but I was kidding. Come on, Gukesh. Come on, come on, come on, Gukesh. You have to move now. Oh, G3. But that's what I was thinking. That's what I was thinking. G3. With the idea of renting knight F4, bishop G2. That's exactly what I was thinking. Wow. मिल भाई कह रहे हैं गुकेश, मिल भाई आओ भाई, गो आओ भाई. बाय द वे ओके, टाइम पे मैग्नस बहुत आगे. एंड आई थिंक मैग्नस D5 उनका प्लान था. कैन ही प्ले D5 इज द क्वेश्चन चैट. बिकॉज अगर वो D5 यहां खेल सकते हैं, आई थिंक मैग्नस इज फाइन. ही माइट बी फाइन. मैग्नस भाई, मैं बोलता अभी मैग्नस D5 मत खेल, बट knowing Magnus, अगर होगा तो खेलेगा भाई वो. Chat. Okay. Not a bad deal. Still equal for Gukesh. By the way, now if you take
Suddenly, black के pieces थोड़े से active लग रहे हैं. Gukesh apparently has to find h4, which is not easy. I think bishop g2 जो मुझे logical लग रहा है, that makes a lot of sense. अरे बढ़िया बढ़िया. साहिल फिश यूजर. अरे भाई फिश मैं खाता भी नहीं हूं तो यूज क्या करूंगा भाई. बाय द वे 7.5 minutes वर्सेस 6 minutes. चैट चैट पोल में गुकेश क्लियरली है, बट एक बंदे का नाम स्पैम कर दो. हु डू यू थिंक is likely to win in this particular moment? 39 seconds taken for Bishop D2, by the way. Gukesh or Magnus? Come on, chat. Oof, come on. You can do this. You can pull this off. What is happening? Come on. भाई क्या फील है भाई. दिस इज टू प्लेयर्स. मैग्नस मैगी भाई. मैग्नस the only player who can dominate an Indian poll in the world, in the entire world, is clearly Ben Stokes. I mean, Magnus Carlsen. Clearly, no other guy can. Mistake! क्या mistake है? So apparently, Chad, you can just take on f6, queen f6, take on d5, and if cd5, is this a free pawn? Rook takes, bishop d. Arey bhai, okay, but he found a nice move. He didn't find the best move. He found the second best move. Nice move by Gukesh again. And now he can take on e5 or play e5. Come on, Gukesh. Come on. Maar do wo pawn. Us pawn ko nani yaad la do bhai. Come on. Take that pawn. नहीं भाई, ड्रॉ मुश्किल है भाई. आई थिंक इनकी राइवलरी खतरनाक है भाई. गुकेश मैग्नस, the rivalry is now real. Magnus, every time he wants to prove he is the better player. Gukesh every time wants to prove that he is potentially going to be the GOAT next. But तो दोनों के लिए draw करना is not easy. By the way, chat, look at the clock. Red flag number 1. भाई मुझे wave करना चाहिए. है नहीं रेड फ्लैग मेरे पास. कोक का कैन है, वही वेव कर लेता हूं भाई. रेड फ्लैग नंबर 1. टाइम सिचुएशन 2 minutes behind now for Gukesh. Come on. And he takes it. Nice move by Gukesh, taking that pawn. And now Magnus has to take with the knight. I think he will find knight takes d5, but he's slightly worse suddenly. Bishop b4. एक गलती कर दी उन्होंने. And Gukesh थोड़ा फायदा उठाते हुए गलती का. And ये a6 काफी इंटरेस्टिंग है. बीच में उन्होंने घुसेड़ दिया था मजे में. There's no rivalry. भाई, I disagree, Mr. PT भाई. I think rivalry जरूर है. And I think even though हमें फील नहीं होती, मैग्नस को साइकोलॉजिकली थोड़ी बहुत हर बार फील होती है जब वो गुकेश के सामने बैठते हैं. भाई किसने वो गॉगल वाली पिक देखी भाई? चारों प्लेस ही क्यूट लग रहे थे चारों यार. उसमें दिख रहा था भाई मैग्नस और गुकेश साथ में नहीं खड़े थे. वेरी इंटरेस्टिंग. कम ऑन, लेट्स गो. मैग्नस का टाइम कम होता हुआ. I like that time difference suddenly is down to less than 1.5 minutes now. Magnus Carlsen under slight pressure. 1K watching, chat, stream like कर दो. Let's get to 500 likes जल्दी से. It is our own world champion. What is the greatest player of all time? कौन जीतेगा? E takes d5 pressure. Magnus, tough choice. Bishop takes, knight takes, pawn takes. 3 options, 1 correct choice. Not easy. Brain 90% Magnus, heart 60% Gukesh. भाई हार्ट तो 100% होना चाहिए यार. ब्रेन आई अंडरस्टैंड, हार्ट तो अपने साइड पे होना चाहिए. गो गुकी गो. बिल्कुल भाई, राइवलरी हो सकती है. अगर एक गेम जीत गया ना भाई, अगर एक गेम गुकेश जीत गया अभी, तो अभी की अभी राइवलरी. Magnus finds the best move again. Now bishop takes d5. Very important move. Of course he will find it. And now I think you want to take on e8. Distract the queen. Very important. Found it. And now you take on d5. Black को सारे कमजोर पॉन, मतलब विटामिन B1 2 से लेके कैल्शियम तक सारी कमी है इनको. मार दो बिशप भाई, जल्दी से मार दो भाई. And then take the pawn on a6. And white is slightly better. And ये बिशप जो है ना, wait, did he play? No, he's not played. After bishop takes, played. Yes, go. Now this pawn is weak. Look at this bishop. क्या dominant piece है भाई. Oh, center of the board. सीधा किंग की तरफ देख रहा है, सीधा क्वीन साइड देख रहा है. ये रुक कभी हिल नहीं सकता. ब्यूटीफुल पीस. टाइम भी लेवल होते हुए only 45 second difference now. Gukesh, now Magnus has to find queen b5. Only move or Magnus is plus minus 0.8. I think he will find it. I mean, it's Magnus we're talking about. He will, of course he finds it. Yeah, of course he finds it. Queen on the board. And now rook a2, I think very logical. देखो ना, simple है. Rook attacked, pawn attacked. You have to save both. अगर b pawn गया, black will have an outside pass pawn. We cannot give Magnus an outside pass pawn. Let's go rook a2. Very important move.
Draw incoming. To be honest, draw is not so bad against Magnus. But if anybody is better, it's white. I think Queen A4 now is a logical choice. I think you want to trade queens. End game में white slightly better है. क्यों है भाई? कौन है हमारे chat के Magnus भाई? Why is white better in the end game? कौन बताएगा? बताओ भाई. कौन है भाई smart? I think like Magnus, bro. I'm with Gukesh, but it's Magnus. I can't decide, man. I agree with you, man. I think Magnus always the favorite. Yeah, you could be a queen up and he would be the favorite against you. But Gukesh के against थोड़ा psychological part जरूर आता है. तो you never know. Exactly. Pawn islands. पॉन आइलैंड्स क्या होते हैं यार? आइलैंड मतलब सारे पॉन जो साथ में चिपक के बैठे हैं, ऐसे भाई भाई करके ये दोस्ती वाला गाना गा सकते हैं. तो ऐसे ये वाले दो पॉन्स गाना गा सकते हैं, ये वाले तीन पॉन गाना गा सकते हैं. बट यहां पे गाना गाने के लिए ये तीन साथ में, बट ये दोनों गाना किसके साथ? जय और वीरू अलग हो गए भाई. सो क्लियरली इट्स इजी टू अटैक एंड बेस्ट मूव. अरे भाई लेट्स गो. गुकेश पुटिंग ऑन द प्रेशर. Still, I think if anybody is better, it is Gukesh. Although it is close to equal, I have to admit that. But okay, I mean, Magnus has slightly better position. We have to take it, yeah. And let's not forget, chat. एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? Who is the greatest endgame player of all time? कौन है भाई? एक बार नाम उनका चैट में लिख दीजिए. अगर हम उनको एंड गेम में हराएं तो अलग थोड़ा सा टेस्ट आएगा, नहीं है ना? अलग अलग मजा आएगा थोड़ा सा भाई. सो लेट्स सी क्या होता है. फिलहाल तो 5.5 मिनट एंड चैट लेट्स गेट टू 500 लाइक्स जल्दी से, बिकॉज हम चाहते हैं और लोग आए. एंड यू नो व्हाट चैट, लेट्स नॉट फॉरगेट. Let's not forget the World Cup starts in 3 to 4 days from now. 1st November, round number 1, 3 players qualifying to the candidates. 3 players: Prag, Arjun, Vidit, Nihal, Arvind, Hari Krishna. I mean, so Ronak, Leon, bhai, kitne players they are fighting for that candidate spot. So do not miss that. By the way, first में चालू होगा. By the way, Queen D3, best move by Magnus. Magnus भाई थोड़ा गलती करने हैं कभी कभी भाई. लगना चाहिए इंसान हो भाई ऐसे, वरना वो एलियन वाला के ले जाएंगे आपको कि भाई आप हमारे ही दोस्त हो. Prag will qualify anyway. Yeah, Prag will likely qualify anyways. Arjun, I think, needs it more. But regardless, Prag last time came, qualify. Finals पहुंचे थे भाई. So he's the clear favorite right now. By the way, time situation again increasing a little bit. थोड़ा बहुत pressure बनता जा रहा है. 1 minute and 20 seconds now. Come on, Gukesh, come on. Apparently, knight f1 is the best move. Second best move is b4. And after, look at this, what black has to play. Black has to find bishop takes b4, c takes b4, queen takes b4, and now queen c6. Bro, this is very difficult. Very difficult. So b4 तो very unlikely होने वाला है. बहुत कम chances. I think knight f1 maybe is the logical move because knight is attacked. You have to move the knight. Oh, he finds the best move. लेकिन बहुत time लिया गुकेश ने. 56 seconds he took for this move, chat. 56 seconds. That's a lot. भाई चश्मे मेरे अजीब लग रहे हैं. ठीक भाई, आप बंदे हो या जहां भी जाते हो सब बंद हो जाता है. नहीं भाई, मैं भारत बंद में इन्वॉल्व नहीं हूं. बिना नाइट एफ1 खेल चुके हैं. बाय द वे, मैग्नस आल्सो टेकिंग सम टाइम ऑन द क्लॉक. चैट ध्यान रखो, ये नाइट जा रहा है E3 पे लॉन्ग टर्म. एंड लुक एट कौन हमारा इंतजार कर रहा है भाई. काजोल, आई मीन पॉन ऑन D5. द नाइट वाले पॉन ले जाएंगे. एंड फिलहाल के लिए लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये भी दोनों मिला के प्रेशर डाल रहे हैं. सो B4 स्टिल इन द एयर. आप थोड़ा जल लीजिए भाई. ये लो, टेकन जल. क्वीन E4 नाउ. सी, क्वीन E4 का थ्रेट क्या है भाई? देयर इज नो थ्रेट. देयर इज नो थ्रेट. सो यू हैव टू प्ले एवरी मूव विद द पर्पस. भाई कभी ट्रेन में बैठते हो कि हाँ भैया ट्रेन जहां ले चलो वहां चलेंगे, या फ्लाइट में बैठोगे? नहीं ना. यू हैव अ डेस्टिनेशन माइंड. सो डेस्टिनेशन रखना बहुत जरूरी है. व्हाट एम आई डूइंग विद माय नेक्स्ट मूव? इट शुड बी वेरी क्लियर. देखते हैं क्या होगा चैट. फिलहाल के लिए 3.5 minutes each. आई थिंक अ ड्रॉ वुड बी ग्रेट. आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, बट विन का अलग ही मजा है ऑफ कोर्स. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, इसके बाद एक और गेम है. एक और गेम है. 2 games बैक टू बैक अगेंस्ट द गोट ऑफ चेस. सो लेट्स सी क्या होगा. Saj bhai has a chance for candidate spot. Saj bhai is not playing the World Cup. He'll be commentating. So unless वो फील्ड में उतर जाए, वो ऐसे वो फील्ड में उतर जाए, it's going to be difficult. How much increment is there? 5 seconds by the way. And time neck to neck बराबर हो चुका है अब. बिल्कुल बराबर टाइम. 3 minutes 22 seconds. गुकेश फिर से आगे जाते हुए. Magnus feeling slight pressure again. Chat, let me show you the best move for Magnus. It's rook a6. Very weird move. Second best move. H5. I mean, kind of logical. You want to open the white king side, but again, not easy to play. It's like a slow plan, right? You want instant solutions. Weight loss करना है तो कल सुबह तक करना है. मुझे पता है भाई, नहीं होता है. So H5 is a very slow solution here. Show camera. अबे क्या प्लेयर कैमरा नहीं है भाई? मैं साज को भेजा है.
वो कैमरा वो कोपचे में लगा रहे हैं ऐसे, मतलब कोपचे से ऐसे चुपके से कहीं टेबल के नीचे लगा देंगे. सो होपफुली विल गेट कैमरास दैट वे, बट मुश्किल लग रहा है भाई. Because he's commentating, Kshitish bhai. And meanwhile, 2.5 is Magnus minute behind. That is amazing. Magnus Carlsen is a minute behind for the first time in this game. Can Gukesh use that to his advantage? अब क्या होता है ना chat? अब क्या होता है कि अगर मैग्नस ने गलती कर दी, that's where the game ends. Like, I know he's Magnus, he's the GOAT. अगर अभी गलती कर दी, that's gonna be a disaster. So he has to find the best moves now. क्योंकि अभी 1 minute is a lot different. Like 8 minutes or 7 minutes is a lot more comfortable. Oh, by the way, wait, what happened? Oh, he found Rook A6. How on earth did Magnus find Rook A6? And by the way, किसी को आइडिया पता है इस मूव का? Can anybody guess? कौन है भाई वो अगला लेजेंड भाई हमारी चैट में? कौन है भाई जिसकी ये लो 4000 है भाई? बताओ भाई, what is the idea? The idea is Rook E6, Rook E1, Queen F1, checkmate. भाई मैं चला भाई, दिस इज डेंजरस. मुकेश भाई थोड़ा ध्यान से है, थोड़ा 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 ध्यान से है, थोड़ा ध्यान से ध्यान से भाई, हार भी सकते हैं. वाओ, व्हाट अ मूव. लाइक यू माइट प्ले B4 एंड ब्लैक विल इग्नोर रूक E6. तुम खाओ पॉन, हम किंग खाते हैं, मेट खत्म. बाहर देखो भाई कहां चला गया. ओ माय गॉड भाई, गुकेश हैज टू बी केयरफुल. मैग्नस कार्लसन ट्राइंग टू विन विद द ब्लैक पीसेस. Oh, it's not slow. It's not slow because ध्यान देखो. Split the board into two. Look at this half of the board. There are like all the white major pieces are on the queen side. इनका influence है ही नहीं. Black की queen king side की तरफ नजर रख रही है. The rook if it comes in, knight भी ready है, h pawn भी ready है, bishop भी ready है. Suddenly हम queen करते रह जाएंगे और दो queen के साथ भी हार जाएंगे हम लोग. मैनसिंग इज सो सेफ. एग्जैक्टली, यू हिट द नेल ऑन द हेड. किसके हेड पे पता नहीं, बट बिल्कुल सही मारा है. एंड नाउ गुकेश अगेन बिहाइंड द क्लॉक बाय, ही इज फीलिंग द प्रेशर. गुकेश इज फीलिंग द प्रेशर नाउ. ही रियलाइजेस मैग्नस प्लान. 1 मिनट 50 सेकेंड. वेयर इज ताल भाई? ताल भी यहां पे मैग्नस से हार जाता भाई. ताल इज नोन फॉर अटैकिंग गेम्स, अ लेजेंड ऑफ द गेम, बट ये एंड गेम है मेरे दोस्त. एंड oh my god, okay, he has to find rook d2. Finds it. Oh. मैं डर गया भाई. Rook d2 now attacks the queen, gains some time, and now I think maybe queen f5, yeah? Looks logical, h3 pawn attack करने के लिए. And Gukesh is trying to win, yeah? ये pawn b4 is a winning move. You want to create a pass pawn. That's why he played b4. He's still trying to win. If he wanted a draw, he could have just played rook a1. Rook a1, passive move, avoiding any trouble, but he's trying to win. Both players trying for a win. This is where you get a result, chat. This is where you get a result. भाई neck to neck clock चल रहा है भाई. Chat, question for you. Honestly बताना. Who do you think is better in time pressure भाई? Honestly भाई, Magnus or Gukesh? What do you think? Come on, come on, come on, come on. Come on. मैग्नस भाई को थोड़ा सा जलेबी वलेबी खिलाओ यार, अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रखो भाई. एक गुकेश नहीं दिख रहा है मुझे चैट में. आई कांट सी वन गुकेश. दैट टेल्स यू द डोमिनेंस ऑफ मैग्नस कार्लसन इफ यू हैव नेवर हर्ड दैट नेम. बाय द क्वीन f5, एक्सीलेंट मूव. अपेरेंटली यू आर सपोज्ड टू प्ले knight e3 and give up that pawn. That's not an easy decision. Or just play ba5, allow rook e1. Not an easy decision either. Oh my god, Gukesh is under pressure now. He needs to come up with some good moves. Okay, we are moving to the 1 minute mark now. Very difficult situation. एक गलती दूर हो सकते हैं. एंड चाइल्ड लेट्स नॉट फॉरगेट, इसके बाद एक और मैच है, तो ऑफ कोर्स कम बैक करने का ओही. नाउ रूक e1 ओनली मूव. व्हाट? क्वीन e1, क्वीन e1, कम ऑन क्वीन e1. मिस्टेक है, कम ऑन क्वीन e1. क्वीन e1 is a brilliant move. Gukesh could be better here. Only move rook queen d1. नहीं निकालेगा. चैट, व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? डज ही फाइंड इट? डज ही फाइंड इट? 50 seconds. Come on, come on, come on. Queen d1, a6 पे there is rook e1, chat, and then queen b5 and you're barely holding on. He has to find queen d1. That's the only move to get a better position. a6. भाई साहब, प्ले बटन ही गिर गया भाई. लगता है 1000 सब्सक्राइबर कम हो गए मेरे. Okay, tough, tough, tough. And now chat, rook e1 or knight h4. Only two moves for the greatest player of all time to equalize, or he's lost now. Oh, wow.
Mate in one, queen b5 played, and now look at this. Best move for black, chat. Guess the best move for black. The best move for black is bishop to c5. There is no way Magnus can find it, yeah? I think knight h4 is the logical move. You take, and it's a draw. And it's a draw like this. I think that's the logical sequence. There is no way black finds bishop c5. Magnus ho ya na ho, there is no way. Because bishop c5 ke baad, I think the idea is, if you take with the queen, it's mate. And if you take with the bishop, there is knight e5, knight f3. ओके मैं जा रहा हूं. आई थिंक क्रिकेट कमेंट्री में जगह खाली है क्या भाई? वो समझ में आएगा ज्यादा थोड़ा सा. फुटबॉल कमेंट्री, लाइक कोई मतलब कबड्डी, हैंडबॉल, किसी कमेंट्री तो मैं कर सकता हूँ यार. आई थिंक चेस तो नहीं हो सकती भाई. दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है भाई कमेंट्री करना है. कोई स्पोर्ट है इसी कमेंट्री में कर सकते हो? बताना भाई. कोई जगह खाली हो, कोई वैकेंसी हो तो आई वुड लव टू कमेंट इट. बिकॉज चेस तो क्लियरली क्वीन डी3 ओनली मूव क्वीन डी3. हाउ डिड मैग्नस फाइंड दिस? 5 seconds, Gukesh, queen d3. Oh, he finds it. He also finds it. By God, move the queen d3. Only move or he was lost. He was lost. Wow. 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 भाई दोनों प्लेयर्स को सल्यूट है भाई. बट द गेम इज स्टिल ऑन. The game is still not over, chat. It still goes on. 24 seconds. He takes, pawn takes, very important, of course. रुक, ओह द गेम गोज ऑन. अभी रुक ई2 मत खेलना भाई. रुक f1 इज मेट. ध्यान से. ओके दिस इज. Did he lose on time? 93. Are you kidding me? 93 was the only move there. Are you kidding me? 93 was saving the game. That makes no sense. And Gukesh lost the first game. Oh my God. What was that? Chat, second game baki hai. It will start instantly. Do not go anywhere. But before we have the second game, we have to look at what happened here. Wait. So here, apparently he had to find rook b2 or queen e. Just keep everything solid. But he played rook d1. Knight h4 was winning. Because agar aap pawn se marte ho, queen g4 check and rook gaya. So you, and if you don't take this mate. But Magnus blunders with knight f4. And apparently the best move was knight e3. Sacking the queen. Knight e3, rook a1. And the a pawn is queening. Wow. Wow. And no wonder Gukesh didn't find it, yeah? And Magnus Carlsen wins the first game with the black pieces. What a match this was. I think honestly, this has been the match of the, I don't know, match of the last 2-3 months for me. A crazy matchup there. I think both players finding some excellent moves. So chat, second game starting soon. And by the way, Caruana against Hikaru dekhte hain. But second game, this is it. Starting as soon as the Caruana game finishes. So let's have a look at the Caruana game. But what a matchup here. Meanwhile, Fabiano Caruana crushing Hikaru Nakamura as well. So very interesting matchup. And by वो bishop c5 क्या move थी यार. What a move bishop c5. I have to show this यार. Anybody joining in, I'm going to give you a puzzle of a lifetime. What is the best move for black? What was the move for black here? क्या move थी जो मैग्नस ने निकाली जहां से तो winning chances मिले? निकालो भाई. जिसने देखी है वो दोबारा enjoy करे. जिसने नहीं देखा है भाई एक बार guess करो. What was the move? Okay, so once again, yeah, because he didn't see the move. 93 was very hard to find. Yeah, bishop c5. That's freaking insane. What a move. And to Gukesh's credit, he found the only defensive move, queen d3. So both players playing some fascinating chess today. Wow. By second game का इंतजार हो नहीं रहा है. Meanwhile, let's get Caruana against Hikaru. जल्दी से. I think we just take also, yeah, on e4. Prime thing was something else though. Bhai, I have to admit, this matchup was so exciting. 10+5 format, I'm kind of getting accustomed to it already. I love this format. And now I think, मेरे साथ chat, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, I think Gukesh with the black pieces. Question to you, chat. Now the second game will start soon. Question to you.
Will Gukesh go for the win as black? Because now he could play a safe opening. Ki, bhai, I'm going to keep it safe, some e4, e5 drama, Petrov, Petrov, and take the draw. And then at least he gets half a point on the board. Or he says, ना भैया मुझे जीतना है 1-1 तो करके रहूंगा, and then he's gonna risk losing 2-0, which as we know can put him on a tilt. So do you think he will try to go for a win? Yes or no? That's very important because black pieces hair is gonna be risky. Magnus wins, he will lose. He will lose. Draw. Sicilian would be a crazy choice. We have not seen Gukesh play that opening at all, to be honest. No, Max is absolutely goat. He is pushing for against Magnus with black. I agree. By Asu निकलेंगे, किसके निकलेंगे तो audience के कि it's class chess first round easier. And chat, let me point out something very interesting to you. So, clutch chess day 1, 2, 3, 3 दिन का event है. The number of points you get for a win on day 1 is 1. The number of points you get for a win on day 2, if I'm not mistaken, is 2. And the number of points you get for a win on day 3 is 3. So you could be in the last place after 2 days and win the event. So काफी interesting event है ये. I don't know why it's that way. That's very confusing to me personally. But I think it's a nice, interesting format to try out. But regardless, ये तो day 2, day 3 कल आएगा भाई. भाई पहले, let me start dating somebody. शादी बाद में होगी ना. So let's focus on day 1 first. Let's try to crush this. And then we see on day 2, day 3. Let's go. 2-0 नहीं यार. You can't sit as an Indian fan. You can't sit 2-0. You have to back one each. One each को back करना पड़ेगा. And of course, there was a 5-minute difference in the two games. I think 3-4 मिनट हो चुके हैं. So I think 1 या 2 मिनट गेम चालू हो रही है. Chat, we are ready. Gukesh with the black pieces. क्या वो come back कर पाएंगे? I'm gonna send a poll for game number 2. I think game number 1 तो Magnus ले गया भाई. दिल वाले धुले लेंगे. Magnus game जरूर लेता है. So now it is CARLSEN versus Gukesh. Game 2, CARLSEN wins, Gukesh wins, and आधा 50-50. भाई 50-50 कभी होता नहीं है भाई. As you usually know, anybody who's in a relationship. Oh, by the way, D4, let's go. Magnus choosing D4, chat. Let's see knight F6 on the board. Will we see a king's Indian? Will we see a Nimzo Indian? Will we see an Indian winning today? Knight F3, okay. Queen's coming maybe. Catalan. टिको भाई 2-0 बोलते हैं लेकिन 1-1. Oh, by the way, we have a Catalan. So Magnus choosing one of his main opening weapons. कोई साइड मैं बोल रहा था साइड लाइन नहीं चूज करी. एंड देन ही प्लेस नाइट D2. बाय द वे इस पोजीशन में बिशप D2 मेन मूव. नाइट D2 उतना कॉमनली खेलते नहीं है, पर रुकेश को पता क्या करना है. A5 इट्स स्टिल मेन लाइन थ्योरी. बिशप D2 व्हाइट कैसल करेंगे. एंड ब्लैक ने क्या अचीव किया? ब्लैक ने कहा कि आपका नाइट C3 पे आना चाहिए था. आपने इसको नाइट D2 खेला, आपने बिशप ब्लॉक किया, तो मेरा बिशप B4 चेक मूव वर्थ इट है. समझ रहे हो? ऐसे वो कहते हैं ना कि लाइक ठीक है मेरी इनकम 10,000 रुपए है लेकिन आईफोन लाख का है तो मैं साल में चुका दूंगा. ऐसा ही लॉजिक है, बट इट वर्क्स. A3 by the way, Bishop has to drop back to E7 now. I think black भी जल्दी से कैसलिंग करना पसंद करेंगे. And of course यहाँ पे ये जो pawn है ये इन दोनों pawn को रोक रहा है. Knight C6 putting pressure on that central pawn. And of course black is white is hoping कि black ये मारेगा, मैं knight से मारूंगा और मेरा knight game में घुस जाएगा. So ये knight अभी bishop को block कर रहा है. So white has to find a way to get this bishop out. अगर कूद पाता तो वो ऐसे कूद के यहाँ आया था. He can win only if he goes for drawing beginning. You know what? I think desperately win के लिए जाना है. If you go for a desperate win, I think that's where you struggle. So from my point of view, you have to play solid chess. Magnus Carlsen को हराना मुश्किल, नामुमकिन से एक कदम पहले आता है. तो it's possible. It's possible to defeat him, yeah? This is looking good for black. You know what? I wouldn't really say that. I think दोनों players के अपने chances हैं. White has 2 pawns in the center. जैसा आपने सुना होगा center बहुत जरूरी है. Third term, दूसरी term आ चुकी है, तीसरी term भी आने वाली है. So I think center is very important. And meanwhile, black के pieces थोड़े passive है, right? The bishop on D7 would love to be on F5. That's the dream square. Dream यहाँ पे है, but यहाँ पे blocked है pawn से. So still I think black is also having some real problems to solve. लेकिन यहां पे 1.5 मिनट का डिफरेंस है. एंड गेस व्हाट? गुकेश
1.5 मिनट आगे, सो क्लियरली चूज किया है कि भाई आई एम गोना प्ले वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली। गुकेश जीतेगा भाई। थर्ड टर्म भी आ गई क्या, तो आ जाएगी भी, तीसरा पॉइंट भी आ रहा है, E4 आ रहा है, फिक्र मत करो। रैपिड में तो मुकेश मुश्किल है कि जीत पाएगा मैग्नस से। अरे भाई रैपिड किंग है भाई, रैपिड किंग, पूरा रैपिड में बैठ के यूएस गया है वो, पता है तुम्हें? देखा, ब्रांड इंटीग्रेशन, स्पॉन्सर आवर स्ट्रीम एंड वी विल इंटीग्रेट योर ब्रांड, थैंक यू। E4 बाद में तीसरा पॉइंट, थर्ड टाइम आ चुकी है। E4, नाइट टेक्स, क्वीन गेम में आ रही है अटैक करने के लिए कार्लसन की, बट मुकेश कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, बिशप C6, रानी पे नजर। मैग्नस रानी को छुपाते हैं, टू पे C4 पॉइंट डिफेंड करते हैं, बट ये नाइट B3 पे आ सकता है, टक इन द रुक, द बिशप कैन कम टू C6 एनीवेज। जो बिशप पैसे था, जो बिशप सेंटर में नहीं आ पा रहा था, अब वो डोमिनेंट पीस होगा, काउंटरिंग व्हाइट्स मेन टारगेट। भाई क्रेजी मूव, मुकेश 2 मिनट आगे। I see Gukesh is disappointed, but now he wants to come back. That's the dream, bhai. That's the dream कि Gukesh come back करेंगे. We really want the world champion to challenge the GOAT, right? That's the hope, bhai. That's the hope. Come on, come on, come on. बाय द वे गुकेश अपना पहला ढंग का वो करते हुए, सोचते हुए यहाँ पे कि क्या करना है मैंने यहाँ पे, वेयर आर माई पीसेस गोइंग, डू आई वांट प्ले दिस, डू आई वांट प्ले दिस फर्स्ट। चैट, एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट होता है चेस प्लेयर्स का, इट्स नॉट अबाउट द राइट मूव्स ओनली। इनफैक्ट अगर आपने चेस कभी खेला होगा, आपने देखा होगा, और होता है यार मैंने ये मूव देखी थी तो मैंने खेली क्यों नहीं। ये ना बता, किस किस को ऐसा लगा कभी, ये बताओ भाई, यस बताओ भाई। ये इसलिए लगता है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द राइट मूव्स, इट्स ऑल्सो अबाउट who's making them, you, I mean it's also about the timing कि भाई आप कब चल रहे हो। क्या आप पहले नाइट B3 खेल रहे हो फिर बिशप C6, क्या आप पहले बिशप फिर नाइट B3, ये जो ऑर्डर होता है ना, ये ऑर्डर इज एज इंपॉर्टेंट एज द मूव्स देमसेल्व्स। सो ये ऑर्डर सही निकालना बहुत जरूरी, एंड आई थिंक गुकेश फाउंड द राइट ऑर्डर, काउंटरिंग दैट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिशप ऑन G2। एंड यहां पे अभी भी फाइनली ये बिशप गेम में निकलता है, लेकिन अभी स्ट्रेस नहीं है, वी कैन प्ले नाइट टू B3, पुटिंग प्रेशर ऑन दिस पॉन, नंबर वन। एंड नंबर टू, हम रुक को C1 पे नहीं आने दे रहे। इमेजिन आई प्ले H6, नाउ रुक C1, and suddenly knight B3 पे my rook can आराम से move up the board. Now I am not giving the rook a choice, so knight B3 would be very logical. I suppose rather than losing on a time, play fast, fast, fast. Yeah. Fast is always better, bhai. Always, always. Speed is very, very important. मुझे WhatsApp text आ रहे हैं बहुत सारे, I don't know why, but I'll check. I like this approach. Okay. Come on. By the way, Gukesh using a minute on the clock. Chat. Come on, chat. You like the stream. We want Gukesh to have a comeback. Believe in yourself, कहते हैं लोग. We believe in Gukesh also, भाई. You अपने साथ साथ अपने ऊपर विश्वास होना, गुकेश विश्वास जरूर है. Meanwhile, गुकेश भाई थोड़ा तेज लेकिन ऐसे छलांग मारने का कई बार, कमान क्रिश की तरह, कमान। अभी मैं वो थामा मूवी देख के आया हूँ, उसमें ऐसे छलांग मारता है वो आर्यमन नहीं, क्या नाम है उसका भाई, वो क्या है भाई एक्टर का नाम यार, अरे वो थामा वाला भाई, बताना भाई कोई। कमान बाय द वे, आयुष्मान, यस आयुष्मान भाई, आर्यमान तुम्हारा एडिटर का नाम है। भाई, उसको हीरो बना दिया मैंने, इतना बड़ा हीरो भी नहीं है अभी। Come on, okay. Time is now narrowing down. 8.5 minutes थे हमारे पास. Now it's 8 minutes each. मेरे पसीने टपकते जा रहे हैं गुकेश की क्लॉक के टाइम के साथ साथ. Very easy. Oh, so दोनों बिशप साइड से निकलते हुए, ऐसे एक बिशप होता है ना वो पुरानी बॉलीवुड मूवीज में, मैंने पहले एग्जांपल दिया है, बट एक हीरोइन इस पेड़ के पीछे से और हीरो इसके पेड़ के पीछे, दोनों वो आंख मिचोली कर रहे हैं, ऐसी दोनों बिशप्स यहां से निकलते हुए, उनकी नजर ओपोनेंट के पीसेस के ऊपर है, नहीं मिलेंगे भाई, नहीं मिलेंगे। मीनवाइल मैग्नस फिर से डीप सोच में जाते हुए, एंड आइडिया आई थिंक ये है, क्योंकि डजंट वांट टू कमिट टू एनीथिंग, he wants to really just keep it solid, he wants to wait for the right moment. मैंने पहले भी कहा ना, मोमेंट इंपॉर्टेंट है, खाली मूव नहीं। तो ही इज वेटिंग कि भाई पहले मैं आराम से नाइट B3 खेलूंगा, मे बी आई ऑल्सो प्ले क्वीन E7, रुक D8, पुटिंग माय रुक ऑन द ओपन, हाफ ओपन फायर। तो ही इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, बहुत जरूरी है। एंड मीनवाइल चैट, 8.5 minutes, 7.5 minutes, गुकेश अगेन 1 minute up on the clock, so good signs, early signs, but good signs. Come on भाई, यार कुछ कैफीन लेने का मन कर रहा है भाई। आई विश कोई ग्लास होता मेरे पास। अच्छा है, ग्लास है, ग्लास नहीं है। होता भाई।
चेस एनएम बाय द वे, बिल्कुल भाई, एनएम भाई, 22 रेटिंग है हमारी भाई, भगवान की दी हुई है भाई, हमने तो दी नहीं। मैग्नस एक्यूरेसी बाय द वे, चैट एक्यूरेसी अगर हम देखें कितनी है एक्यूरेसी मैग्नस की, मैग्नस इज 98.7 एंड गुकेश इज 98.6। आई फील आई क्रैक्ड दिस जोक बिफोर, बट गुकेश को अभी वो फील हो रहा है जो हर ड्यू में एडमिशन वाले बच्चे को फील होता है भाई, 98.6 इज नॉट इनफ। 0.1 से रह गया भाई, 0.1 से रह गया थर्ड लिस्ट में एडमिशन। Come on, come on, come on, come on, come on. By the way, Magnus Carlsen has been thinking for a long time. This is great news for the world champion. Can he stage an epic comeback? अगर comeback कर दिया तो भाई फिर डांस बनता है, सब मिलकर डांस करेंगे अगर जीत गया तो। जीत गया तो भाई चैट आज ट्विटर पे डांसिंग वीडियो डालना भाई, आज 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 के लिए एनीबडी कैन डांस भाई। ओ बाय द वे, D5, so Magnus Carlsen wants a committal move. He wants to clarify the situation instantly, but एक बिशप आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आप ये गजनी मूवी की याद आ रही है, आपने हीरोइन को ब्लॉक कर दिया, बट हीरो इज नाउ सुपर पावर्ड, राइट। सो मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग मूव है ये। ऑल्सो अलाउज द नाइट टू कम इन, बट ब्लैक कैन टेक द पॉन। सो नाउ विल गुकेश ग्रैब दिस फ्री पॉन? वेर गोइंग टू पूजा एंड ईयर भाई, ईयर वाला बंदा अपना ईयर लेके बुढ़ापे में बैठा है, तो वो मुश्किल है। पर पूजा का जरूर कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू पूजा का, आई वांट गुकेश टू विन आउटराइट, दैट्स द होप। चैट अगर वो नहीं मारते, ही इज गोना बी वर्स। So technically he has to take this pawn, and after 95 उनको C6 खेल के ये solid रखना है। That is the ideal setup. He has to take this pawn, even though it looks risky. He has to grab it. Come on, come on, come on, come on, come on. गुकेश, अगर हम सब लोग भाई एक एक आई डोंट नो इफ यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन भाई, कौन कौन बिलीव करते हैं भाई, अगर हम सब लोग एक बार बोल दे गुकेश जीतेगा भाई, तो क्या पता कुछ हो जाए भाई, एक बार करके ट्राई करके देख, देयर इज नो हार्म ना, एक बार करते हैं। गुकेश जीतेगा भाई, जीतेगा भाई गुकेश, लेट्स गो भाई, एक बार लेट्स सी इफ इट वर्क्स। Guki, find this move. Why Guki has to find this move actually. Okay, he's not lost if he doesn't find it. But, if you're playing Magnus, so, second best move काम नहीं करती. It will never work. गुकेश जीतेगा भाई, ये हुई ना बात। गुकेश विल मैनी नहीं है भाई, मैनी में बहुत डिफरेंस है भाई। आई कुड गिव एग्जांपल्स बट आई वुड रादर नॉट। गुकेश वन एक बंदे ने फास्ट टेंस में ही कर दिया। अरे ये हुई ना भाई, ये वो बंदा जो लगान में छाता लेके आया था भाई, ये वो बंदा है जो मतलब बोलते ना कड़कती धूप में छाता लेके निकलता है भाई। मान गए भाई, मान गए। टू बायस कमेंट्री, बिल्कुल भाई। आई विश इट वाज चेस 24 इंडिया अगर चैनल का नाम होता तो हम बायस कर पाते। लेट्स गो, गुकेश भाई ने मार दिया है प्यादा। मैग्नस कार्लसन हो गए हैं स्ट्रेस्ड, टाइम लगभग बराबर है, बट गुकेश अभी बढ़िया पोजीशन भाई, पोएट्री लिखने का मन कर रहा है। क्या होता है, गुकेश ने मार दिया है प्यादा। कंप्लीट करो चैट, कंप्लीट। मतलब 95 खेल दिया, ओनली मूव C6 प्लेड बाय गुकेश, एंड नाउ बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, एंड नाउ क्वीन B5, ओनली मूव फॉर मैग्नस, एंड ही फाइंड्स इट इन 7 seconds। भाई यार बोलते हैं ना, जैसे वो किसी ने सुना है मैक्स वर्स्ट है भाई, वो वाली ट्यून कोई मैगस की बननी चाहिए भाई। कोई कोई ट्यून बना है, पॉपुलर करो भाई, बनता है भाई। हर बार ओनली मूव्स निकालने वाला आदमी मैग्नस कार्लसन। आप तो बोल रहे हो बहुत ज्यादा भाई, ज्यादा बोलना पड़ता है भाई। अकेले में जो साथ बैठा है मैं चिल करता हूँ, साज भाई करो करो काम करो भाई, अपन चिल करेंगे, बट आज काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा भाई। टू लेट्स गो। 6 मिनट बाद में गुकेश बिहाइंड ऑन द क्लॉक फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस गेम। गर्मी बढ़ती जा रही है, एंड ही हैज टू हैंडल द प्रेशर, ही हैज टू हैंडल द नर्व्स। 1 पॉन, 2 पॉन, 3 पॉन, माधुरी दीक्षित भी इतने पॉन्स काउंट नहीं कर सकती, उतने मर रहे हैं। कौन सा बचाएंगे गुकेश? क्या वो D4 खेल के ये बचाएंगे? क्या वो नाइट B3 खेल के ये बचाएंगे? क्या करेंगे वो? टाइम मैनेज करो यार, यही तुम्हारे पेरेंट्स ने बचपन से कहा है, तुमने किया? किया तुमने? नहीं किया ना, नहीं बनाना टाइम टेबल, तो किस बारे प्रेशर डाल रहे भाई? करेगा अपना दोस्त करेगा भाई। यू फॉलो F1 भाई, यार पता है मैंने वो ड्राइव टू सर्वाइव देखा था, उससे इंटरेस्ट बन गया मेरा। आई नेवर फॉलोड F1, बट मैं सिर्फ F5 में इंटरेस्टेड था, बट नाउ F1 एज वेल। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन कुकेश भाई, थोड़ा हम टू डू कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा फास्ट इज पार्ट ऑफ इट, तो ट्यून बनेगी नहीं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन भाई, 4 मिनट दिख रहा है भाई।
Does anybody feel stressed? Like as a batsman 99 पे होता है ना, like we know, like there's no difference, but you feel psychological pressure. Same चीज है भाई, 4 मिनट देख के मेरे को और पसीने टपक रहे हैं भाई. Oh, by the way, oh no, no, that was not the move actually. Chad, the problem is dono pawn mar rahe. Which one shall he save is an important question. He saves the a for one. I think that's a good choice. And now, very important, only move rook d5. If Magnus doesn't find it, he's lost. If course, he will find it, yeah? Because if rook पे जाता है direct, then I can simply push this pawn. I have other moves as well. In fact, g5 loses a piece. So Magnus only move rook takes d5. Of course, he will find it, yeah? Of course. मैग्नस भाई अगर थोड़ी गलती कर देते तो ये अच्छा मौका था भाई, थोड़ा सा चेस को पॉपुलर करने के लिए अरे यार भाई यार, चेस पॉपुलर मैग्नस का खुद ही कर लूंगा मैं. ओके, रूक डी5 मार दिया. चैट, कौन है भाई जीनियस हमारी चैट में? यहाँ की बेस्ट मूव गेस करो. टेक अ शॉट, टेक अ शॉट. के5. वाओ, ओ वाओ, गुकेश भाई क्या मूव निकाली है भाई. Rook a5. Your queen was attacked, and I thought he'll play queen e7, but no, rook a5. भाई बोलते ना नहले पे दहला. ओहो, feeling. And now I think Magnus maybe might have missed this move. That's an epic move. And now, chat, the fact that Magnus is thinking maybe he missed it. Very rare you play a move that Magnus missed, yeah. So थोड़ा credit तो बनता है. And now I think यहाँ पे Magnus best move queen trade करो. But to be honest, in that end game after something, okay, you have to first take the queen. Sorry. You have to take the queen. Okay, ठीक है. Okay, I got confused for a second. मैं खुद confused हो गया. इतनी complicated खुद confused हो गया मैं भाई. Come on, Magnus भाई, गलती कर सकते हो आप. You still have a chance to make a mistake. गलती कर सकते हो. For example, queen c6, very big mistake, but आज के लिए चलेगी. We will ignore this mistake. Come on, let's go. टाइम बराबर होते हुए फिर से. मैं लिखने से पहले खेल दिया, बोलने का मौका नहीं दिया. अरे बिल्कुल, गुकेश किसी का इंतजार नहीं करते because he's to do. गुकेश, let's go. Oh, by the way, best move by Magnus, best move, Gukesh. बढ़िया चाले खेलते हुए दोनों players. Look at the accuracy of both players. 99.2 for Gukesh, 99.1 for Magnus. Magnus feeling the Delhi University effect. क्या करेंगे यहाँ पे? 0.1 से पीछे. By the way, g5 now apparently is the best move. Idea being as a bishop hilta hai, so you can simply chop off the knight. Very logical move. Also, rook d5 looks quite logical. d5 अपने control में अपना ही जलवा है. By the way, 97 and rook e8 mate का threat है. कुछ तो करना पड़ेगा भाई. कुछ तो करना पड़ेगा. If you play, I don't know, some random move, yeah, b6, that's literally mate in 2. So be very careful, Gukesh bhai. come on. Gukesh feeling the pressure. Chat, ये pressure है ना. When a chess player sitting looking at the clock, आप ऐसे बैठे होते हो. ऐसे. What the rook d5, second best move in the position. Nice move. Now only move for Magnus Carlsen. Rook knight c4. भाई बंदा only move पे only move तो ऐसे खेल रहा है जैसे मतलब वरुण धवन डांस मूव पे डांस मूव छोड़ ही नहीं रहा है भाई. कुछ तो छोड़ दे. नाइस मूव. एंड नाउ आई थिंक रूक d2 हम खेल नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली. 2 पीस हैं व्हाइट के, सो वी हैव टू स्टार्ट किकिंग द ब्लैक पीसेस, व्हाइट पीस. सो g5 b5 दोनों फेंकते हैं भाई, एक करके. एंड लेट्स किक दोस पीसेस बैक. चैट, बाय द वे, लेट्स गेट टू जल्दी से. बाय द वे चैट, ऑलमोस्ट 2000 लोग, कितने 1700-1800 लोग देख रहे हैं. डू लाइक द स्ट्रीम चैट, डू लाइक द स्ट्रीम. लेट्स गेट टू व्हाट 1000 लाइक्स. अगर हम पहुंच गए तो भगवान भाई सुनेंगे. भगवान भाई बोलते ना, 1 लाइक 1 दुआ भाई. लेट्स गेट टू 1000 लाइक्स. मीनवाइल g5 played नाइस मूव. Excellent move by Gukesh. You are attacking that bishop, and more importantly, king को सांस लेने का मौका दिया उन्होंने. बहुत जरूरी था भाई, बैक रैंक इश्यूज थे वहां बहुत सारे. Bishop d6 and rook e8 was made, so nice move. And now, bishop e3, for example, is a big mistake. As I mentioned, b5 and Gukesh is winning. So Magnus has to find 2 moves, either check or knight b6. Not easy moves. Not easy moves. The choice for Magnus is difficult. क्या बंदा यार, मैग्नस गलती करते भाई, एक गलती तो कर दे.
नाउ आई थिंक गुकेश को रुक मूव करना पड़ेगा. रुक D3 फील्स लॉजिकल, मूविंग द रुक अप. हम पूरा अंदर नहीं जा, जितना अंदर जा पा रहे हैं उतना अंदर जाते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी रेडी फॉर रुक D2 बेसिकली. Rook D3 also controls the F pawn, also allows Rook B3 Kalko. I think a very active way. Let's not forget the bishop attacks the B2 pawn. Come on, come on, come on, come on, chat. Come on, Gukesh. Rook D3. By the way, Rook F5 also. I think there are a few moves, but I think Rook D3 is the best move. Okay, pressure. 2 minutes 50 seconds. What will Gukesh play here? Oh, this is stress. This is stress. Come on, Gukesh, come back करना है. पहली game, Magnus won. Anybody joining in? This is clutch chess. 3 days of intense rapid action. It is just 4 players. Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Gukesh Domaraju and Fabiano Caruana. वर्ल्ड के टॉप 1 to 3 and the world champion. इससे tougher competition I think दुनिया में कोई है ही नहीं. It's rapid, so not really Gukesh's strong suit जैसे classical. So ये एक सुनहरा मौका है हिकारू को हराने का. By the way, इसका अगला मैच against Hikaru and he's gonna play all the players every day, today, tomorrow, day after. तो भाई क्या ट्रेनिंग है before the World Cup. गुकेश भाई, मैं स्पीच दे रहा था, मेरी वेट करने की जरूरत नहीं थी भाई. इतनी इज्जत तो मत दो भाई, चल दो भाई. भाई इतना इज्जत भी नहीं देने का भाई, चलो भाई. बाय द वे, ओ चल क्यों नहीं रहा है भाई. कम ऑन. Oh, did he play nice move? He finds the best move. Let's go. Gukesh still putting pressure. He's behind the clock. पता ना, एटलीस्ट एक चीज तो अपने साथ होनी चाहिए, either the clock or the moves. मैच के पास चारों है, but we have two at least एक तो है. Okay, 3 minutes 51 seconds now. What will Magnus do? He wants to play for the win, right? Like he could play something normal, try to exchange pieces. I think that's the best move. But if he's a bit more ambitious, the Magnus trying to go for the win, he might overpress a bit. Oh, finds the best move, bro. Magnus is crazy. And now apparently knight D2 is best. Hey. भाई एक Gukesh OP. This was with 1 minute 50 seconds on the clock. This was so hard. एक बार Gukesh OP भाई, एक बार. हमें 2000 लोग चेस 24 इंडिया पे देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3000 चेस कॉम इंडिया पे देख रहे हैं. एक बार Gukesh OP बनना चाहिए भाई, चाहे रिजल्ट जो भी भाई. दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट मूव टू फाइंड, वेरी डिफिकल्ट. एंड नाउ नाइट F3 आइडिया विद G4 इनकमिंग. वो व्हाइट किंग को ऐसे लॉक कर देने का ताले में, समझ रहे हो? लाइक ऐसे वो बिल्कुल ऐसे ताले में लॉक कर देने, कोई सोल्यूशन नहीं है. अगर H3 तो H5. He can also take, by the way. He can also take. That's also a good move. Come on, come on, come on. 1 minute 24 seconds. He finds it. 97 only move for Magnus. By the way, Rook D7 only move for Gukesh. Only moves में खेल रहे हैं. One move and the game is gone. One bad move, game over. खत्म खल्लास. And he finds the best move. Wow. And we are in a Rook endgame now. Bhai sahab. इतना टफ फाइट के बाद रुक एंड गेम. एंड नाउ आई थिंक किंग G7 इज बेस्ट. इफ यू टेक दैट एक्टिवेट्स माय रुक एज मैग्नस. आई डोंट वांट टू डू दैट. रुक D5 आल्सो गुड, बाय द वे, आल्सो प्रीटी डिसेंट. एंड एक्यूरेसी, बाय द वे, रविकांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 99.2 एक्यूरेसी. ओ ही टेक्स इट. ओके, अच्छा, ही इज गोना गो रुक B3. ओके, फेयर इनफ, आल्सो प्रीटी सॉलिड. योर कैमरा इज अ बिट लैगी. इतना करते हो, कंजूसी करोगे भाई. कैमरा मेरा मस्त है भाई, आई डोंट नो लैग क्यों कर रहा है. नेट भी मस्त है भाई, पूरा मतलब बोलते हैं ना 200 kbps की स्पीड है भाई, तो बढ़िया स्पीड. रुक चेक. ओके, बाद में रुक B3 आएगा. दिस इज अ वेरी गुड स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज़ ना हमें एक तीर से 2 निशाने करने हैं. सो ये रुक जब यहां आएगा, इट डिफेंड्स माय पॉन एंड इट अटैक्स योर पॉन. समझ रहे हो? सो मैंने अपना भी बचा लिया और तुम्हारा भी खा लिया. सो बोलते ना, it's perfect. That's why I think Rook B3 is an excellent move here. Although of course right now this is hanging. पहले बचाना पड़ेगा. 200 kbps is pretty strong यार. अब मैं फास्टेस्ट स्पीड रखता, बट आजकल फ्लॉपी डिस्क मेरी दोस्त लेके चला गया यार, तो आई थिंक आई कुडंट यूज इट, बट या. ओके, वेट. ये आपको एनालाइज करना है. यू कैन नॉट टेक ऑन E3 विदाउट एनालाइजिंग दिस फॉर एटलीस्ट 30 minutes. डू नॉट टेक ऑन E3. थैंक गॉड भाई, थैंक गॉड, भगवान मारा भाई. किंग पॉन एंड गेम बहुत ट्रिकी होती है भाई. You have to rook endgame and draw efficiency higher. Black's rook is active. ध्यान रखो, rooks are meant to be active always. एक पीस अगर है ना जो एक्टिविटी में विश्वास रखता है, वो है रूक्स.
बाद में B3 नाइस मूव है, अगर मारोगे तो रुक से मारूंगा एंड सडनली आपके रुक को पीछे जाना है, दैट इज स्टिल अ ड्रॉ। बट मैग्नस ना वो हल्की फुल्की वो बोलते हैं मोमबत्ती जला रहा है, लाइक यू नो कि डेट नहीं होने वाली, बट कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर ली उन्होंने। सो रुक B3 खेल दिया है एंड नाउ आई थिंक यू हैव टू गो रुक D7। यू कैन आल्सो गो रुक A2। आई थिंक दैट्स द मोर एक्टिव मूव कि आप काउंटर प्ले के लिए खेलो, बट देन इट्स अ ड्रॉ। आई थिंक ये लाइकली ड्रॉ होगा, बट अ ड्रॉ अगेंस्ट मैग्नस विद ब्लैक पीसेस इज नॉट अ बैड रिजल्ट एट ऑल यार, दैट्स अ प्रीटी गुड रिजल्ट। या रुके टू ऑन द बोर्ड, ग्रेट मूव बाय द वे, अगर आप मारोगे तो मैं मारूंगा, प्रिटी फेयर रिजल्ट। मैग्नस नाउ विल नो, ओ दे आर गोइंग फॉर अ ड्रॉ, ओह वेट 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 जस्ट वेट। सो मैग्नस कह रहा है भाई अभी नहीं ड्रॉ, रुको, बिकॉज ओके, रुक F2 H4, is he playing for a win? No way, yeah, now it's a draw. I think now it's a draw, now there's not much to do actually. Guki can't win this, सत्यम भाई जितना भी कोशिश कर ले ये गेम ड्रॉ ही होगी। Yeah, king has to go back and now I will even play at H5 check. Okay, just rook B5, very very comfortable draw, and that is a great result for the world champion who's drawn against Magnus Carlsen with the black pieces. I think एक बार गुकेश बनता है भाई, I think very good game भाई, बहुत टफ मूव्स निकाली उन्होंने, वो नाइट D2 नाइट F3, क्या क्रेजी आइडियाज थे इन टाइम प्रेशर। Beautiful game by Gukesh. I think amazing game. And let's not forget his next game is against Hikaru Nakamura. Bhai, so that's gonna be a tough match. And Magnus se wo dobara kal khelenge, but that was a great game. Yeah, amazing game there, Gukesh. And ek bar, can the chat spam the accuracy by 99.4 and 99.5? That is crazy impressive for a rapid game. भाई रैपिड गेम 99.5 एक्यूरेसी, समझ रहे हो? मतलब अगर 200 चालें खेलोगे उसमें से एक गलती, जस्ट इमेजिन 200 चालों में से एक गलती, यही हुआ ना ऑड्स, दैट्स इनसेन। And by the chat, as they wait, let's go to the Hikaru game because वो गेम ही चल रही है, and Gukesh का अगला मैच will be against Hikaru Nakamura as soon as this game finishes. Hikaru, by the way, lost the first game to Caruana, and he's staging an epic comeback here. Look at the attack he has, Queen on F4, Rook hanging है, look at the Knight on C6. By Hikaru अगर यहाँ जीत गए ना तो गुकेश के momentum मिल जाएगा उनको थोड़ा सा। Chat, should we kind of hope for a Hikaru loss? Like, I don't want to do that, but yeah, Gukesh अगर फॉर्म में आ गया तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा मुझे। क्या लगता है चैट? What do you think? Oh, by the way, knight is the only move for Hikaru. Not an easy, actually it is easy because rook e4 मेरा rook खुल रहा है, so very logical actually. Jinx it, yeah? भाई साहब कोई मतलब रहम ही नहीं है। मेरी एक्यूरेसी अभी 92% है भाई, हम सीबीएसई बोर्ड्स की बात नहीं कर रहे, हम चेस की बात कर रहे हैं। ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ इज प्रीटी फेयर, आई थिंक ड्रॉ है लाइक। By the way, knight e4 अगर खेलते हो by chance, there is queen takes e, sorry, queen takes knight takes by hallucination. इनके एक्स से अलग ही है, exactly. Come on. मेरा 56% एवरेज, तो ड्रॉप कर रहे हो क्या भाई अपने पीसेस? बाय द वे, नाइट टेक्स e5, लेट्स टेक दैट रुक, फ्री का रुक है, मार दे, खत्म करें एंड फिर पास पॉन ले ले हिकारू जी। By the way, एक मिनट दोनों के पास चैट, let's keep in mind अगला मैच गुकेश का is against Hikaru Nakamura, 2 games, and the best part is he's going to play Magnus again, and this is a 3-day event, so इसमें at the end standings क्या होंगी, that is what matters. And just imagine अगर गुकेश wins ahead of Magnus, Hikaru, Caruana, world number 1, 2 and 3. So भाई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है यार। भाई कहां से हो आपके दिल से यार मिस्टर उत्कर्ष विद सो मेनी सिंबल्स, इतने सारे क्यों हैं मात्राएं पता नहीं मुझे। only move again, knight h7, what? बाप रे, that's a big blunder, and now Hikaru is completely winning for Hikaru Nakamura now. Wow. नहीं हेट वॉश नहीं है भाई, दिल से प्यार है भाई, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहे तो बेटर है भाई। सागा में क्यों नहीं करा? आई हैव नो आइडिया एक्चुअली यार, आई थिंक ही इज इन द यूएस, तो मे बी ही माइट बी रिकॉर्डिंग सम इंटरव्यूज, गॉड नोस, बट सागा भाई विल बी देयर फॉर द ब्रॉडकास्ट। आई थिंक साथ में करेंगे हम लोग, चेसकॉम चेसबेस दोनों साथ में करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप, सो स्टे ट्यून फॉर द वर्ल्ड कप। सारे इंडियंस फाइट करने को आ रहे हैं, विल बी अ पिक बाय द नाइट प्लेट, बट इट्स टू लिटिल
एंड टू लेट भाई, रुक एफ8 मारेंगे, क्वीन अंदर, क्वीन जी4, क्वीन डी7, पास पॉन है मेरे पास भाई, कोई रोक ही नहीं सकता। या हिकारू नाकामुरा अबाउट टू विन। थैंक यू लव फ्रॉम भोपाल इंडिया। बिल्कुल भोपाल में गया हूँ भाई, बहुत ही सुंदर सिटी के बगल में ही है वो, कौन सी, इंदौर, ब्यूटीफुल सिटी। गुकेश मैग्नस प्लेड वेरी वेल, आई थिंक इट्स गोना बी अ बिग फाइट इन दिस टूर्नामेंट, नो क्लियर फेवरेट। श्रेयान भाई, अच्छा लगा आपने कहा नो क्लियर फेवरेट, आई मीन दिल से झूठ बोला है, मतलब आई आई एम इन द सेम बोट एज यू भाई, साथ में डूबेंगे बट मजा आएगा। By the way, ooh, interesting. So suddenly queen e5 threat hai, so you have to play queen d6. But I'm thinking, why not just queen e3 यहां से घुसने की तैयारी। So यहां से नहीं घुस पाए तो यहां से घुसेंगे, मगर king h6, then how do you win the game? It's not clear yet, yeah? How does white have get the final blow? Final blow कहां से आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है अभी, because black के पास भी pass pawn है, let's keep that in mind. Yep, we'll be seeing the World Cup and we'll have the cameras, बिल्कुल मजा आएगा भाई। If Gookie wins, will he throw the king? Wow. भाई असली सवाल तो अमित जी ने पूछा है। आई डोंट थिंक सो ही थ्रो द किंग, इज माय गेस, बिकॉज एक तो वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा वो इवेंट था, बोलते हैं ना उसको ऐसे, एग्जीबिशन मैच, ये वाला थोड़ा सीरियस इवेंट है। सो आई डोंट थिंक ही थ्रो द किंग, बट मे बी दिल में या ही विजुअलाइज द किंग फ्लोइंग, हु नोस। Okay, Hikaru now close to a win. I think queen e3 is the winning move for Hikaru Nakamura. Going for queen h6, he finds it. And now I think Fabiano Caruana is going down. Yeah, it's over. Queen g6, knight f6, tra, goodbye, tata, finish, khatam, ghar, jao. I mean, game khatam. No way, Gukesh now throwing the king will be the and yeah, it's not about this. I think वो exhibition match में I think it made more sense. यहाँ पे this never gonna happen. Yeah? Gukesh is very respectful towards his pieces. वो सारे game हारा हो जीता हो, he will always adjust the pieces at the end. He's very respectful. By the way, that's a win for Hikaru and standings आपको दिख रही है. Gukesh fourth place में जरूर लग रहे हैं, but keep in mind he's the only one who's played Magnus, so it's not really the correct representation of his skill. And इसका मतलब अगला मैच is gonna be Hikaru Nagamura versus Gukesh Domoraju. चैट पोल डालते हैं, देखते हैं कि चैट का इस गेम के बारे में क्या है कहना। रुको भाई, क्या कहना, कोई मूवी थी ना भाई, आई थिंक गोविंदा की, मे बी आई एम मिस्टेकन, बट एनीवेज, सो इट इज हिकारू वर्सेस गुकेश। हिकारू के व्हाइट है, सो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड। गुकेश को एक और ब्लैक लगातार मिल रहा है, बट आई थिंक ही डिड ड्रॉ ट्वाइस अगेंस्ट हिकारू, सो दैट्स ग्रेट। या हिकारू विंस, गुकेश विंस, ड्रॉ, लेट्स गो फॉर इट। प्रीति जिंटा की थी क्या, रियली? आई थॉट गोविंदा की है। देखो भाई, दिल बोल रहा है गुकेश जीतेगा, उसी जगह दिमाग बोल रहा है नो चांस फॉर हिकारू। आई एग्री भाई, नो चांस फॉर हिकारू, आई एग्री भाई। देखो, आई एम गोना डू अ बेट, ठीक है चैट, आई डोंट नो, लेट्स डू अ चैलेंज, ठीक है। सो अभी हमारे कितने लाइक्स हैं? हमारे 554 लाइक्स है चेस 24 इंडिया पे, ठीक है। एंड कितने लाइक्स चेस कॉम इंडिया में, लेट मी सी। चेस कॉम इंडिया हमारे लाइक्स है 653, ठीक है। अगर दोनों चैनल्स पे 1000 लाइक हो गए अगले, बिफोर द नेक्स्ट गेम स्टार्ट्स, 1000 लाइक दोनों में, तो अगर गुकेश हार गया गलती से भी, तो आई एम गोना गिव आउट चेस्को मेंबरशिप ऑन बोथ द स्ट्रीम सेपरेटली। एक एक, या तो गुकेश जीतेगा या फिर आपको एक मेंबरशिप मिलेगी भाई, एक मेंबरशिप दोनों स्ट्रीम पे दूंगा मैं। लेकिन 1000 लाइक करना जरूरी है बिफोर द गेम स्टार्ट। जल्दी भाई, आप ट्रेन के अगेंस्ट रेस लगा रहे हो भाई, जल्दी लाइक हो जाना चाहिए। Hikaru will win. Go Hikaru, Nani bro. I think we are going to see some surprises today. And I think Hikaru का थोड़ा सा comeback होगा. Of course, he had that comeback in the last game against Fabiano. But Gukesh थोड़ा अलग टेढ़ी खीर है भाई. I think Gukesh ने बहुत practice करी है. Let's not forget he won a gold medal at the European Club Cup just a couple of days back. Yeah, so he's in form. जीतने भाई, जीतेंगे देखो, एक होता है ना कि कई बार यू वांट हेज अगेंस्ट योर ओन बेट। सो मान लो आपको कह रहे हैं कि लॉटरी टिकट मिली तो 1 करोड़ रुपए आपके, सो माइट इज बेट ऑन अ फ्यू अदर नंबर्स कि अगर नहीं जीते लॉटरी तो भाई कुछ और मिल जाए। सो वैसा है। सो आइदर रुकेश विंस एंड वी सेलिब्रेट, और जस्ट इन केस कुछ हुआ तो मेंबरशिप तो, एंड आई एम दैट श्योर कि जीतेगा भाई, दैट्स व्हाई आई पुट द मेंबरशिप अप। Gukesh revenge started. I think only time will tell कि रिवेंज है कि नहीं।
लेकिन पहली गेम टफ होगी, क्यों? फिर से वही बात है, गुकेश के ब्लैक पीसेस है। ब्लैक पीसेस जीतना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो विल ही हैव द स्ट्रैटेजी कि भाई मैं पहला गेम ड्रॉ करता हूं, इसे मैग्नस से किया, एंड देन पुश फॉर व्हाइट, और ही थिंक्स भाई ब्लैक से हराया था हिकारू ने, ब्लैक से ही हराएंगे। इफ आई वाज गुकेश, आई वुड बी थिंकिंग इन दैट एंगल। भाई मैं थोड़ा सा नॉटी हूं, बट गुकेश थोड़ा शरीफ है, देखते क्या होगा। बाद में पोल कह रहा है 63% गुकेश विन, 28% हिकारू। सो क्लियरली we know who the audience is supporting. Can someone tell me which tournament? This is Clutch Chess Champions Showdown. 4 champions across the world. It is Gukesh Damaraju from India, Hikaru Nakamura from the US, Fabiano Caruana from the US, and Magnus Carlsen from नॉर्वे। एंड मोदी जी प्लीज मैग्नस जी को इंडिया में ले आइए, फिर हम सारे ओलंपियाड फिर से जीतेंगे। भैया व्हाट इज योर स्कोर? मैं जा रहा हूँ खेलने, मैं जा रहा हूँ खेलने, कल निकल रहा हूँ, परसों पहुंचूंगा। 15 मिनट ब्रेक करेंगे आई थिंक। वो 15 मिनट ब्रेक वॉज फ्रॉम द गेम, सो आई थिंक दैट गेम एंडेड लाइक 10 मिनट हो गए भाई अब तो, लिटरली आई थिंक सो इट विल स्टार्ट वेरी वेरी सून। व्हाई गुकेश ऑलवेज लुक सो इनोसेंट, अदर प्लेयर्स लुक, गुकेश यार इनोसेंट लगना अच्छी बात है। आई थॉट इट्स लाइक अ गुड थिंग, लाइक मतलब इवन लगना, नॉट दैट अदर प्लेयर्स लुक लाइक दैट, बट इवन लगना को मेरे लगता बुरी बात होगी, लाइक आई थॉट दैट वे एटलीस्ट। लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, या मतलब आई डोंट नो, बैड बॉय इमेज यार वो ऑन पेपर लगती है, बट नॉट ऑलवेज। Are the games played on board? Yes, it's been played in the US right now. Either Gukesh wins or Hikaru loses. Wow, Manoj bhai with the bold predictions. How is Hikaru? He anything? Bro, I think कई बार क्या होता है ना, if you are the guy who was the second to climb Mount Everest, let's say, ठीक है, the world might not recognize that it's a great achievement because maybe people don't know your name like as much as the first one, but that's still pretty impressive. Hikaru, if you look at an all-rounder, right, so across all formats, online, over the board, consistently winning events, चाहे वो speed chess championship हो या चाहे वो candidates में qualification हो, he's always there. He's world number 2. So I disagree with you there, politely. I think he is one of the legends of the game, and maybe टॉप 10 प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम में उनका नाम आएगा, स्पेशली बिकॉज आजकल क्रैमनिक का नहीं डाल रहे कई लोग। विल बी स्ट्रीमिंग वर्ल्ड कप, एंड इफ यस वी कैमरा व्यू, और नहीं, वी विल हैव द कैमरास बाय, वी विल बी स्ट्रीमिंग टुगेदर विद चेस बेस इंडिया। सो सागा विल बी देयर, तान्या विल बी देयर, साज विल बी देयर, हर्षद विल बी देयर, आई विल बी देयर, अमृता विल बी देयर। सो इट विल बी अमेजिंग। इट इज गोना बी, आई डोंट नो रिवील करना कि था कि नहीं करना था, बट कर दिया मैंने भाई। ओके, टाइम ट्रैवल, टाइम ट्रैवल। आपको नहीं बुलाया भाई, मुझे नहीं बुलाया, मेरी रेटिंग थोड़ी सी कम है आई थिंक इस टूर्नामेंट के लिए, लाइक थोड़ी सी, इतनी सी, मतलब कुछ लाइक 600 पॉइंट, आई मीन थोड़ी थोड़ी सी कम है। बट वेटिंग फॉर द गेम टू बिगिन। हिकारू के अगेंस्ट क्या खेलना चाहिए बाय द वे? फर्स्ट गेम चैट, फर्स्ट गेम, व्हाट डू यू थिंक हिकारू प्लेस? आई थिंक हिकारू विल गो फॉर, इफ आई वाज हिकारू नाकामुरा, what would I play? Takes, and mate. No, what would I play? I think I might play e4. I think I might play e4. And e4 ke against Gukesh will usually play e5. I think he will not change. Like he will stick to that, I feel. Oh, there is no way he plays b3. There is no way on earth he plays b3. Bhai, no, I just talked to Adiban a few days back, and मैं उससे पूछा कि which is the opening, which encapsulates the Goan spirit, right, for the World Cup. So I think he said b3, but he said London also. So I think वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे भाई b3. आई थिंक b for beach and b for b3. So I think maybe we play in the World Cup. But अभी के लिए I think he will go e4. I think. टेक्स सिक्स आप ये क्या है भाई? कैन यू गुकेश इन फ्यूचर? यस, यस डेफिनेटली। आई थिंक अगर गुकेश कभी साइमल करेगा अगेंस्ट यंगस्टर्स, तब मेरे को मौका मिल सकता है। लंदन सिस्टम होगा भाई, लंदन हिकारू नहीं खेलता यार। आई हैव टू बी, सी, हिकारू इज हिकारू इज अ बिट इमोशनल, सो इफ ही इज प्लेइंग गुकेश, जस्ट कीप इन माइंड, सेकंड कंटेंडर लाइक फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, कैंडिडेट्स याद करो, हिकारू व्हाइट वर्सेस गुकेश ब्लैक। अगर हिकारू जीतता, he would have qualified to the world championship and likely beaten Ding. तो एक साइकोलॉजिकली एक प्लेयर के दिमाग में होगा कि भाई यार, अगर मैं गुकेश को हरा दिया था, आई वुड बी वर्ल्ड चैंपियन, राइट? एंड कहीं ना कहीं पे वो राइवलरी है,
वो इट्स नॉट said out loud, but it exists. So I think कहीं ना कहीं पे हिकारू हर बार whenever he plays Gukesh, he wants to beat him. It's a psychological. Hey, I don't know why Sagarwai is not streaming here. I have no idea, unfortunately. इंडियंस वर्ल्ड स्टेज पे अग्रेसिव हुए ही कब थे, थोड़ा तो अग्रेसिव होना चाहिए। क्या देखो, हर कोई विराट कोहली नहीं होता। आई मीन मे बी देयर बी अ विराट कोहली इन चेस एट सम पॉइंट। आई डोंट नो, बाय द वे, हु डू यू थिंक इंडियंस में है ऐसा प्लेयर who could be like as aggressive as Virat Kohli? To be aggressive, you also have to be the best, I feel. Like Virat Kohli is aggressive because he was one of the best, right? Arguably, but he was the best. If you are like number 15 or 30 or 50 in the standings, it's hard to be aggressive, right? Because you will get trolled sometimes. मैग्नस तो है ही, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं भाई। मैग्नस साइल हो चुका भाई, हरा दिया भाई उसने बुरी तरह। अर्जुन, अनीश, क्यूजेडी होगा, अनीश सरकार। इतना लंबी प्रिडिक्शन भाई साहब, 4 साल का बच्चा है यार अभी वो। अनीश तो नहीं यार, कम ऑन, अनीश इज द कामेस्ट गाय वी नो, चाहे सरकार हो या गिरी। Nihal, I mean, Nihal is aggressive on the board, but not off the board. Like, who is the player who could throw the king? I can't think of one Indian player who can throw the king. Like, there's not even one name that comes to mind. By the way, chat, the game is beginning pretty soon, maybe in a minute, I think. ऐसा मुझे किसी ने बताया या मैं खुद ही बोल रहा हूँ जस्ट टू कीप चैट इंटरेस्टेड, बट आने वाली गेम। विदित, डू यू थिंक विदित विल थ्रो द किंग? भाई विदित तो अपना किंग दूसरे किंग से चिपका देता है भाई। इतना प्यार उनके किंग्स में, वो कैसे फेंक देगा दूसरा किंग यार? ही लव्स द ओपन किंग सो मच कि ही वांट्स हिज किंग टू आल्सो स्टे क्लोज। इट्स नॉट गोना हैपन। अर्जुन, हाँ, जो बंदा हारने जीतने में कभी एक्सप्रेशन आज तक नहीं दिया है, इतना काम डिमीनियर है उसका, अर्जुन का, सो काम एंड कंपोज, वो किंग फेंकेगा। वाह 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 वाह, क्या गैस है भाई। अनीश नायक, भाई उसके लिए गेम जीतना ही पड़ेगा ना भाई, किंग फेंकने के लिए, तो अनीश नायक का थोड़ा मुश्किल है। Uh, Hare Krishna, I doubt it, bhai. Srinath is the Prag is the only answer. Do you think Prag will throw the king? नहीं यार। समय रैना maybe, but who is समय रैना winning against? By the way, समय का birthday था कल यार, so happy birthday समय भाई। Wishing you all the success, keep growing, keep full of follow भाई, बिल्कुल। I mean, जिंदगी में ऐसे जनरली। लाइव कैमरा लगा दे भाई, मेरा कैमरा तो लाइव ही है भाई, लाइव ही है, बट ऑन साइट हम लोग है नहीं यार। यार बहुत महंगे होते हैं कैमरा आजकल यार दुनिया में। बट वर्ल्ड कप के होंगे भाई, वील हैव द वर्ल्ड कप कैमरास। प्रग नहीं करेगा भाई, प्रग आजकल पॉडकास्ट करने लगा है यार। वंस यू एंटर पॉडकास्ट, एज यू नो बाय नाउ, यू हैव टू अ बिट कामर। पॉडकास्ट करने के बाद आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सो प्रग आई थिंक विल बी वेरी वेरी काम। Magnus equal to Max Verstappen equal to Sachin. Gukesh equal to Lewis Hamilton equal to Rohit Sharma. Fabiano equal to Alonso equal to Virat Kohli. But I disagree. Virat equal to Fabiano. Fabiano बहुत calm है. Virat, I think Virat has to be Verstappen. I feel like they're aggressive, right? Like Verstappen makes sense. Like I can equate Virat and Verstappen, not Virat and Sachin. Like accomplishment wise, maybe yes, but in terms of personality, no. Can you beat Divya? Divya say, I think she's very strong. There's no chance I can beat her now. With top Indian chess players, if you've played them when they were younger, you are lucky. Like I've defeated Prag before. I've drawn against Arjun. एक बार वो टॉप प्लेयर्स हो गए उसके बाद तो मुश्किल ही है भाई। इट्स नॉट गोना हैपन भाई, कुछ भी कर लो तुम। आई थिंक दिव्या विल प्रॉब्ली बीट मी ब्लाइंड फोल्ड, वेरी वेरी लाइकली। साहब भाई को हरा देंगे भाई, साहब भाई को हराना छोटी उंगली का काम है भाई, बिल्कुल आराम से भाई, आराम से। चैट में तो नहीं है ना भाई, चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, चैट में नहीं है, नहीं है। विराट, मैग्नस, रोनाल्डो, वाह वाह वाह, बात सही है। दैट दैट आई थिंक मेक सेंस। अरे गेम चालू करो भाई, लेट्स गो, वी नीड द गेम्स टू स्टार्ट राइट नाउ। क्राम, अबे यार, लेट्स अवॉइड द फॉरबिडन फ्रूट, द टॉपिक राइट नाउ। विराट इक्वल टू लेवॉन, वाह वाह वाह, लेवॉन इतना स्वीट है भाई, इतना स्वीट है शुगर। और भाई विराट भाई अग्रेसिव एज मिर्ची, नहीं नहीं भाई, डजंट मेक सेंस। Gukesh is one win to get his momentum. बिल्कुल सही कार्तिक, I think that's what he needs. एक win चाहिए होती है यार, you need that win under your belt to feel कि things are gonna go my way and not the highway. And कहीं ना कहीं पे लगता है कि यार if I take risks, it's gonna go in my direction, right? So वो confidence बहुत जरूरी है। कब होगा स्टार्ट? काउंट करो भाई, चलो लेट्स काउंट टिल 30, चालू हो जाएगा आई थिंक।
हैंड्स इक्वल टू, अरे भाई भाई ये क्या बोल दिया यार, आई विल नॉट से इट आउट लाउड बिकॉज वरना लोग कंट्रोवर्सी बना देंगे। विराट इज लाइक गैरी, ओह दैट्स अ प्रिटी फेयर कंपैरिजन एक्चुअली, but the Gary of the 80s and 90s, yeah, not the Gary now. Gary is very very humble, like, but I've heard stories, yeah, like he was very aggressive. विराट इक्वल मैक्स रोनाल्डो, मैक्स इक्वल टू कॉर्नर। भाई पर कॉर्नर ने तो बहुत सारी वो लाइक, इट्स नॉट, इट्स जस्ट हाइप फॉर द सेक ऑफ हाइप समटाइम्स, समटाइम्स। आई सॉ क्रेजी गेम ना, क्रेजी गेम थी भाई, साथ वाज विनिंग आफ्टर 7-8 मूव्स, बट क्या करे भाई, मैग्नस इज मैग्नस। Gukesh is calm as Dhoni. Actually, that's a fair comparison, I think. Gukesh, Dhoni, I think makes a lot of sense. What about Vishy sir, Virat? Yeah, Vishy sir also, I think, was very quick. Like he used to play very quickly. I think Justice Saravan has mentioned this pretty well in an interview, that he was so shocked by how fast Vishy sir used to play. But Vishy sir is also very sweet and calm and composed. Like, so very hard to, personality wise, maybe different. Yeah, that was very sad about Daniel Nazitsky. And I couldn't believe it, actually. I couldn't believe it because like he's always been my favorite commentator in terms of pure skill, right? I mean, so that was very, very sad. बाय द वे चैट, सही भाई, कोई अपडेट की कितने सेकंड लगे गेम चालू होने में, एनी आइडिया? बताना भाई जरूर प्लीज, इफ कुछ भी आइडिया लगे तो, कितने सेकंड लगने वाले हैं, बिकॉज दोनों किंग्स आर स्वेटिंग, कि कब किसको फेंक दिया जाए कुछ पता नहीं है। लेवॉन इज जेठालाल ऑफ चेस वर्ल्ड, यार मैंने देखा नहीं है, मुझे सो प्लेयर्स आर एट द बोर्ड, चैट प्लेयर्स आर एट द बोर्ड, हाथ गर्म कर दो, पोल पे वोट कर लो, पॉपकॉर्न ले आओ भाई, अगर नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। 2 मिनट का एक्टिव पॉपकॉर्न खा सकते हो, स्पॉन्सर इंटीग्रेशन प्लीज, एक्टिव भाई स्पॉन्सर करिए हमें। लेट्स सी क्या होगा बाय द वे, एंड चैट पोल्स में 1000 वोट से ऊपर आ चुके हैं, 63% पीपल से इट इज गुकेश विंस, एंड 28% खाली हिकारू को। भाई हिकारू भाई, मतलब पोल आपके साथ नहीं है भाई, तो हार ही जाओ भाई। अगर एक केबीसी होता तो हिकारू तक हार गए होते। एंड D4, लेट्स गो, D4 ऑन द बोर्ड, नाइट F6। शायद हिकारू ने जो मैग्नस वाली गेम है एनालाइज जरूर करी युकेश वाली, बट ही चूजेस नाइट C3, निम्जो इंडियन ऑन द बोर्ड, E3 मेल लाइन। चैट अपनी प्रेडिक्शन स्पैम कर दो एक बार, चैट गुकेश हिकारू ड्रॉ, जल्दी स्पैम कर दो एक बार, देखते कौन किसको वोट कर रहा है। काफी सॉलिड चॉइस से अनपिन किया नाइट को, हिकारू के वाइट है। पहला काम गुकेश को करना है इक्वलाइज, व्हेनेवर यू आर प्लेइंग विद द ब्लैक पीसेस, द फर्स्ट गोल इज टू इक्वलाइज द गेम, बैलेंस कर लो गेम, उसके बाद यू कैन गो फॉर द ऑफेंस। जब ओपोनेंट पंच कर रहा है ना, यू डोंट स्टार्ट पंचिंग, यू फर्स्ट डिफेंड, टायर हिम आउट, tire him out, and then you punch back. And C5, nice move, challenging the white center यहाँ पे, so white को critical decision, black देखो ना castle कर चुका है, so his king is in safety, but white का king अभी भी 1 और 2 चाल दूर है castling से, so as of now he's trying to open the center when the white king in the center, logical chess, logic। सब लोग केश कह रहे हैं दैट्स क्रेजी, कुछ लोग हिकारू भी कह रहे हैं 1.5.5, बाय द वे 2 गेम्स है यहाँ पे हर प्ले के साथ। सहज भाई टायर हिम आउट कह रहे हैं भाई, सहज भाई देखो यार, सहज भाई नहीं यार, नो डबल मीनिंग जोक्स। आई थिंक हम हमारा स्पॉन्सर नहीं है MRF टायर, सो वी आर नॉट गोना मेक एनी टायर जोक्स टुडे। MRF भाई यहाँ पे कुड स्पॉन्सर्ड अस, सो प्लीज डू कांटेक्ट अस, हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। वॉल्यूम इतना हाई क्यों है? वॉल्यूम कम कर तो पापा जग जाएंगे, तो इसलिए वॉल्यूम हाई कर दिया, पापा को जगाना बहुत जरूरी है। एंड बाद में A3 खेल सकते हैं हिकारू यहाँ पे, जस्ट टू गेट दैट बिशप, ही प्लेज इट, एंड नाउ ऑफ कोर्स आपको बिशप मारना पड़ेगा, बिशप टेक्स, सो व्हाइट को मिलता है बिशप पेयर, ये मिलता है व्हाइट को। लेकिन ब्लैक को क्या मिलता है भाई? ब्लैक को मिलता है एडवांटेज इन डेवलपमेंट, सो ब्लैक का किंग is already castled, is safely tucked in the corner. So now I think he's going to play E5, knight C6 before white can castle. Very important. Come on, come on, come on. By the way, Gukesh फिलहाल समय का पूरा मतलब समय से अच्छा खेल रहे हैं भाई, आई लव इट यार। 1 मिनट आगे भाई। लेट्स कीप इन माइंड, इफ देयर इज वन प्लेयर जिनसे टाइम पे आगे रहना मुश्किल है, तो वो हिकारू नाकामुरा है। Like he is maybe slightly 1% less strong in actual moves than Magnus, but in terms of pure time management, he is the best. So उससे आगे होना big deal.
You watch Dragon Ball? I used to watch as a kid. I used to love Dragon Ball. बहुत क्रेजी है. तो नेटफ्लिक्स से मैंने रिसेंटली देखा कि उन्होंने ऐड कर दिया है. नेटफ्लिक्स यू स्पॉन्सर दिस वन. भाई कितने स्पॉन्सरशिप हो गए बिना बिना पैसे के. देख रहे हैं भाई, फ्री में स्पॉन्सर करें हम लोग. तो वहां पे मैं देखा था रिसेंटली. मतलब नाइट इज प्लेड नाउ, रुक C1, वेरी लॉजिकल मूव. एंड नाउ Mukesh can play E5 सेंटर में. ब्लो ओपन द सेंटर, खोल दो भाई सेंटर बिफोर वाइट कैन कैसल. Against Max round one, what happened? Saj bhai, when you face some sadness in life, the first step is to forget about it. So we are not going to discuss round one. I think we'll move on in life, just like my ex did. I think you should learn from your heartbreaks. By the way, which shall we do now? Oh, look at this. Blue arrow aa raha hai. I think, only couple of moves possible. ये बिशप मुझे दे दे ठाकुर. So knight से माना चाहिए. Queen takes also possible, but I think knight takes is more challenging for white. Yeah, but he just lost on time. He resigned with 1 second on the clock apparently. Acha, okay, I was disconnected. Oh wow. So is the board back now? Okay, chat. बोर्ड गायब है. सो तुम्हें पजल दे रहा हूं मैं चैट एक्चुअली, इसलिए इसलिए बोर्ड गायब है. दोबारा करना पड़ेगा क्या स्क्रीन शेयर मुझे? वर्चुअल वाला दोबारा करूं क्या? आई थिंक साज का भी यही इशू होता है ना, आई थिंक. हाँ हाँ, कर लेता हूं मैं. दोबारा कर दिया भाई. चेक इफ इट हेल्प्स. बोर्ड नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा. मुझे तो दिख रहा है. तुम्हें नहीं दिख रहा बोर्ड? क्या बात कर रहे हो यार? देखो, मेरा चश्मा टूटा है, बट चश्मे का नंबर तुम्हारा ही बड़ा है. चैट चेक करना भाई. भाई समय भाई, ज्यादा देर चैट को नहीं बना पाऊंगा भाई. ज्यादा देर नहीं बना पाऊंगा भाई. आई थिंक 30 seconds इज द मैक्स. जब मैं चैट को ऐसे थोड़ी पलटी पड़ा सकता हूँ, उसके बाद मुश्किल है. आ रहा है बोर्ड. आ रहा है भाई. आ रहा है आ गया भाई. बोर्ड आ गया भाई. आ गया ना. कुछ तो दिख रहा है आता हुआ मुझे, है ना? आ गया. लेट्स गो भाई. आ गया भाई. बोला चुका है चैट. हमारे बिशप G4 नॉट द बेस्ट मूव. चैट हमने यहां छोड़ा था, राइट? दिस इज वेयर वी लेफ्ट इट. नाइट टेक्स D5 प्लेड. Bishop B5, slight error, but Gukesh had a chance to win this, get a better position with E4. He misses it and plays Bishop G4, and now the game is again equal. Ooh, tough chance. Gukesh misses that मौका. मौके पे चौका मारना आसान नहीं है भाई. हम एड देखते हैं क्रिकेट के टाइम पे, बट एक्चुअल गेम में बहुत मुश्किल. 200 kbps ट्रू भाई. आई थिंक किसी को भी नेट प्रोवाइड अच्छा पता है तो बताना भाई जरूर. आई वुड लव टू अपग्रेड टू अ फास्टर प्लान, लाइक एटलीस्ट लाइक 300 kbps तो होना चाहिए. विराट इक्वल टू टाल मैग्नस. अरे भाई, अगर गुकेश जीत जाए तो गुकेश को सब टाइटल दे देंगे हम लोग भाई. मैक्स वर्स्टैपेन, डू जो भी चाहिए सब दे देंगे भाई. कम ऑन. बाय द वे, फिलहाल के लिए टाइम पे बहुत आगे हिकारू नाकामुरा से. दैट इज अ ग्रेट साइन. एंड हिकारू क्या करेंगे? बिकॉज E4 इज नाउ कमिंग, एंड नाउ इट्स इवन स्ट्रॉन्गर बिकॉज नाइट इज नाउ पिन्ड. सो अगर आप कैसल करते हो, गुड बाय गेम. दिस इज वेरी वेरी स्कैरी. सो आई थिंक कुछ तो करना पड़ेगा भाई. Saj Bhai might be traveling for some of the days of the event. That's why he's not commentating. So he'll be there for the World Cup. Hikaru, by the way, he takes on C6. Slight error. The bar has gone down. Capture bhai. This is great for Gukesh. He looks better right now. And yet the only problem is the king. Once you take on F3, iska Hikaru king हमेशा के लिए कमजोर रहेगा. अब कोई भी टेबलेट इनको सेफ नहीं कर सकती. By the way, very important, the queen is not only attacking the pawn, is attacking the bishop. Keep in mind, do not forget, bishop attack है बिल्कुल राइट में. तो कुछ तो चलना है. या तो E4 खेलना है या फिर bishop F3. Come on, Gukesh, take that knight. उस घोड़े को मार दो, घर भेज दो उसको. Don't overhype, bro. I am excited, bro. Okay, so Gukesh, I think, can take the knight on F3, and there is some hope, there is some pressure actually, because once you capture back with the pawn, then the king's side opens up, and what happens is, the king is weak. Sometimes it's very easy for the opponent to attack your king. So I feel like Gukesh has good chances, genuinely good chances. But this moment is kind of crucial. So let's see what does he do. Right now, I think time is equalizing, and if it doesn't equalize, then
Like, would you take on f3 and open the king, or would you, just play e4? Let's see. Meanwhile, सॉरी, आई डोंट नो, आई स्टार्टेड hallucinating बीच में, क्या हो गया था, दौरा पड़ गया था, होता है, स्प्लिट पर्सनालिटी थोड़ा चलता रहता है मेरा। मीनवाइल चैट, बाद में टाइम बराबर होता है, बिल्कुल बराबर टाइम हो रहा है भाई, 7 मिनट 19 सेकंड, 7 मिनट 24 सेकंड। कमान के जल्दी चलो भाई, कमान कमान कमान, जल्दी जल्दी, प्लीज डोंट अंडर हाइप। अरे भाई, अंडर अपर, सब लोग अंडर अपर पहनते, तभी मैं क्यों ना करूं भाई, मैं भी करूंगा। बाद में फिलहाल के लिए टाइम पहली बार गुकेश का टाइम नीचे जाता हुआ। हिकारू के साथ ऐसी गलती नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप द आई ऑन द क्लॉक। आई थिंक गुकेश सेंसेस कि यही है वो क्रिटिकल मोमेंट जहां पे मैं विनिंग एडवांटेज ले सकता हूं। इस बार उनको आइडिया लग चुका है चैट। क्या वो हराएंगे मैग्नस कार्लसन को? लेट्स फाइंड आउट। आप इंग्लिश मत बोलो, बहुत गंदा है भाई, तो भोजपुरी बोलो क्या भाई? भोजपुरी मस्त है अपन का मतलब। कौन 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 भाई यार, इतना ही सोचना यार भाई। भाई, दिस इज स्ट्रेसफुल। He has to take on f3. I mean, he's considering e4 for sure. But I think bishop f3 is so, like, this is the move you play in bullet chess, right? अगर आपको 1 सेकंड क्लॉक पे है, you take. Okay, nice move. And apparently now bishop a5 and knight d2. Only two moves. Okay, knight d2 found. And now f5. Okay, that's not easy actually. That's not easy because e4 hanging hai. You cannot afford to give. Okay, not a big fan because chat, now the problem is ye bishop versus knight ka game aa gaya, and now it's all about can black attack. If black cannot attack the white king, then I think white is better because ye pawn weak hai. Knight can sit on d4 in the end game is clearly better against the bishop. So black को attack करना है. For example, अगर यहाँ पे हम खेले h6 and white कहे, okay, I'm gonna take the pawn, then rook takes e4. Queen takes e4, queen d1 checkmate. So you are hoping for these tactics to work. Otherwise, I think long term white is better. Long time white is better यहाँ पे. पनीर भाई, पनीर मेरा वेज का सेकंड फेवरेट डिश है भाई आफ्टर राजमा। सो पनीर इज ऑसम भाई। पनीर अगर नहीं होता तो भाई हम कैसे वेज वाले खाना खाते भाई? क्या खाते वेज में? मुकेश कांट विन अगेंस्ट t3. He can and he will interstellar. By the way, rook b played, now attacking the b2 pawn. Gukesh counter play की जाते हुए, excellent move played. I think queen c2 only move. By the way, if you play b4, there is a ridiculous move, c5. Oh, वाह! अगर पॉन से मारा, देयर इज रुक b2 एंड गुकेश विंस, एंड अगर रुक से मारा, देयर इज क्वीन d3 रिजाइन्स. सो क्वीन c2 निकाल दिया हिकारू ने. हिकारू इज ट्रिकी, ही सॉ ऑल दोस आइडियाज, एंड नाउ द बेस्ट मूव चैट इज रुक टू b5. वाओ, गोइंग फॉर एन अटैक. Come on, come on, come on. Rook b5. By the way, queen g5 also a logical move. Rook e5 also a logical move. It's all about the attack. It's all about the attack now. अगर queen trade हो गई, white is just clearly better. Come on, come on, come on. Gukesh, 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 Gukesh. कोई रुक को ऊपर ले आओ. Come on, Gukesh. Fifth rank. आज कान हिला के दिखा दो. नहीं भाई, कान का कॉपीराइट उनके पास है भाई. आई डोंट वांट टू गेट कॉपीराइट स्ट्राइक बिकॉज ऑफ इट. सो वो नहीं करेंगे हम लोग. कान नहीं हिलाएंगे. कुछ और कर सकते हैं, हिला सकते हैं. लाइक वी कैन डू द पूजा कैबिनेट में भी. राजमा डोमिनेट्स एब्सोल्युटली भाई, बट यहां पे कौन डोमिनेट करेगा इज द क्वेश्चन. टाइम पे पीछे जाते हुए, क्योंकि 2 मिनट की एज से ज्यादा है हिकारू के पास. चैट, आई एम गोना आस्क यू अगेन. अब क्या लग रहा है? हु इज गोना विन दिस मैच? गुकेश, हिकारू या ड्रॉ? अपनी प्रेडिक्शन स्पैम कर दो बिकॉज दिस इज द मोमेंट, द क्रंच मोमेंट. मुकेश भाई, थोड़ा नर्वस ही आ रहा हूं मैं. ओके, आई थिंक द इंटेंट इज राइट. कई बार होता है ना, लाइक मतलब यू वांट टू गिफ्ट योर गर्लफ्रेंड समथिंग ऑन अ बर्थडे, बट देन आप लेट हो जाते हो फॉर द गिफ्ट, राइट? लाइक यू समहाउ गेट स्टक इन ट्रैफिक. सो योर इंटेंट वाज राइट, but you didn't execute it well. So वही situation है यहाँ पे. And now the queen is not really threatening much, and apparently white can just play b4 and even h3 actually, and gain a slight halka sa edge, like halka fulka nanna munna sa edge. Come on, come on, come on, come on. Hands always, Hikaru always makes strategy to make Gukesh low on time. I think that's a strategy for everybody in the world actually. It's not just Gukesh. Hikaru is going to play quickly. That's what he does. That's the Hikaru thing.
And you just have to play fast and play good moves. I didn't understand your analogy because I am single. Sad for you, bro. Valentine's Day is coming. Hopefully, you will solve that problem soon. Update from Magnus and Fabi, by the way. In the other game, the game is dead equal right now. It's complicated, but it's completely equal. So we'll stick to this game. Meanwhile, Hikaru's time also dropping down slowly but surely. H3, nice move played. Pressure again. Kaha jayega Bishop? Tough choice. You want to put it here also because you want to control D1. You also want to put it here because you want to defend E4. You also want to put it on C8, to be honest, just to kind of bring it on A6. So multiple choice, answer question है ये. यहाँ पे बहुत सारी अच्छी choices actually. I don't know which one is the best one. I like Bishop C8 actually. I love this. Bishop D3 आके बैठ गया तो सीधा गोद में आके बैठ जाएगा White King के Bishop. Crazy. But not an easy move to find though, right? I think Bishop E6 is the other move. This is a Hikaru type position. Actually, I would disagree, I think. Once the queens are traded off, I think that's pretty simple for white. The queens board पे है ना, जब तक black की रानी उसके defense के लिए ready है भाई. If she is ready for an attack, I think anything is possible. Hikaru has not castled, but engine is showing equal. Bhai, the thing is, he will castle next move. Oh, by Bishop C8. Beautiful move by Gukesh. And if castles now, the idea is Bishop A6. Let's say, I don't know, Rook E1. And the Bishop can now sit on D3. What a square. Let's go, bhai. Let's go. Come on, come on, come on. Bishop C8 now. Your favorite of all time in cricket and chess. I think chess it's very hard to choose. Pure chess skills, maybe it's Magnus. But overall, I might choose Anish Giri there. But in terms of cricket, I think Virat Kohli we all love. But of course, Sachin, I think during his time, did something fast. Dhoni also his journey, right? It's crazy. By the way, Rook E6. In the right spirit. First of all, you defend the pawn. आपने पॉन को बचा लिया, अपने लंगड़े त्यागी को बचा लिया है. एंड दूसरा आइडिया है रुक G6 क्वीन G5. So I'm threatening to checkmate you. And of course the bishop prevents the knight from coming in for defense. Keep that in mind. Very important. ये बिशप खाली दिखने में अच्छा नहीं है, काम भी कर रहा है भरपूर. Come on, come on, come on, Gukesh, you can do this. हिकारू का किंग फेंकेंगे नहीं, बट लेकिन कुछ तो क्रेजी करेंगे. Now is the question, do you take this, chat? Important, do you take this? Because abhi ke liye apparently it's not the best because your attack is not ready. Or would he find the insane move Rook B5? Oh, Rook B5 is tough. Rook B5 is tough. Like tough wala tough hota hai na. Although S6 is also decent. I think just king ko back rank issue now. Like usually जब आपके king के पास तीनों pawn ऐसे होते हैं, कई बार ना कोई हटके चेक आ जाती है and you get checkmated. So ये basic tactics है. You want to play h6. Should I recharge your internet? Bhai, recharge my spirit, bro, with typing Gukesh OP in the chat. Internet तो हम भी recharge कर लेंगे भाई. Why take a dumb knight? Not a problem. Yeah, but it can be, if you want to attack white, then this is a good defender. But I think maybe the attack is not as strong yet. So maybe taking it does not make sense right now, at least. If the queen was here, the rook was ready to come here, maybe I might take. सेम चॉइस भैया, लव यू. अरे थैंक यू देवी भाई. फिलहाल के लिए 2.5 मिनट भाई. 2.5 किलो का हाथ भी मार्केट में नहीं चलता आजकल. 2.5 मिनट चलेंगे क्या? कम ऑन गुकेश, यू हैव टू प्ले क्विकली बिकॉज द गेम इज स्टिल ऑन. दिस माइट बी अ लॉन्ग गेम इन द एंड गेम. ही कैन नॉट अफोर्ड टू टेक सो मच टाइम. feeling the pressure. I am in India. बिल्कुल भाई, I am in India and I'm going to stay in India भाई. मैं कमेंट ऑलमोस्ट पढ़ दिया था भाई. अच्छा है नहीं पढ़ा, वरना शायद इंडिया से जाना ही पड़ता. अच्छा है नहीं पढ़ा भाई, वरना मेरा भी अभी ट्विटर पे कुछ ट्रेंड हो जाता. बच गए भाई. ये क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ. कैसे हुआ ये मेन क्वेश्चन है. ही हैज टू प्ले नाउ. गुकेश, कम ऑन भाई. व्हाट इज ही थिंकिंग? ही हैज टू प्ले नाउ. Has he forgotten he's playing against the speed king Hikaru Nakamura? And he finds h6, one of the best moves. Nice moves, but he took 1 minute and 52 seconds for it. 1 minute and 52 seconds. That's a lot of time. And now apparently Rook B5 is the best move.
भाई कैंसिल करने के लिए एक बंदा काफी होता है भाई। आई हैव सीन इट इन रियल टाइम भाई। एक बंदा ट्विटर पे सवाल पूछता है, एक बंदा आंसर करता है, एंड सडनली यू आर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर फॉर सम रीजन व्हिच मेक्स नो सेंस। आई हैव सीन इट भाई। बात है मेरे लिवर में थोड़ा दर्द हो रहा है यार, ज्यादा पानी पी लिया शायद। आई डोंट नो व्हाई, टू मच वाटर। बाय द रूबी 5 प्ले, कम ऑन लेट्स गो गो। अरे 4.5 minutes right now, 1.5 minutes। हिकारू यहाँ पे, आई थिंक हिकारू इज इन फॉर द एंड गेम, स्टिल होपिंग कि थोड़े एक्सचेंजेस होंगे। गुकेश बाय द वे देखो ना, सारे पीस रेडी हैं, सारे पीस रेडी है किंग साइड पे, एक दूसरे को कूद रहे हैं भाई ये लोग, यू नो, जस्ट टू गेट टू द किंग साइड। ही नोज ही हैज टू अटैक। By the 93 played, and now what do you do? You said, देखा मैंने कहा ना, ये डिफेंस के लिए आ गया। Now this plan makes no sense. Now this plan makes no sense. So now we A5 trying to break on the queen side. Like आपका ओपोनेंट यहां डिफेंड कर रहा है तो यहां अटैक करो, यहां डिफेंड कर रहा है यहां अटैक करो, दोनों जगह डिफेंड कर रहा है तो सेंटर में अटैक करो। लाइक यू नो फुटबॉल का जो वो पेनल्टी शूट आउट होते हैं, टिपिकल टिपिकल। Oh, by the he's going down to the 1 minute mark, but he's finding the best moves. It's the best moves against a huge time edge for Hikaru. You know what? Will the moves triumph for the time? Let's find out. Can normal fans watch the World Cup in Goa? बिल्कुल भाई, अगर आपका गोवा ट्रिप नहीं बन पा रहा है, क्या आपके दोस्त आपको धोखा दिए जा रहे हैं, तो यह है सुनहरा मौका। आइए गोवा, देखिए वर्ल्ड कप, यू नो सारे चेस स्टार्स के साथ, अनीश गिरी, यू नो गुकेश डोमर राजू, प्रणंदा आर, अर्जुन एरिगेसी, विदित, एवरीबडी डिसेंड्स ऑन इन द ऑन द बीचेस ऑफ गोवा, एंड यू कैन ऑल्सो बी देयर। अपने दोस्तों को छोड़ो और भाई चेस तो पकड़ो, गोवा हो भाई फॉर द वर्ल्ड कप। By the way, A5 played, Hikaru using a lot of time now. Things looking amazing. और थोड़ा हिकारू 2 मिनट के चिल करने का भाई, हिकारू भाई नेटफ्लिक्स एंड चिल करो मेरे भाई थोड़ा टाइम के लिए भाई। यार जरूरी है, कभी कभी करना चाहिए संडे को चिल करने के लिए। आज मंडे है क्या? आज क्या है भाई? आज ट्यूसडे, शिट। ओके, अगर कुछ और करने का भाई। कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली? गोवा में, आई थिंक इट्स इन अरापोरा समथिंग, सम रियो रिजॉर्ट, आई थिंक वहां पे हो रहा है। डू बाय द वे, मिस्टेक भाई, कानो C5, लेट्स गो C5, बिकॉज ये वीकनेस थी, एंड नाउ सडनली द बिगेस्ट वीकनेस हैज टर्न्ड इनटू अ स्ट्रेंथ। वाओ, जो वीक कमजोर प्यादा था, उसने च्यवनप्राश टेस्ट कर, ब्रांड च्यवनप्राश, च्यवनप्राश खा लिया। अब वो बंदा चला है भाई रेस लगाने। लेट्स गो C5। Your acting is so good. Have you thought of auditioning? भाई मैंने एक रील देखी थी, बताया उसकी, मुंबई की ऑडिशनिंग की। वहां पे 400 लोग लाइन में थे who looked exactly like शाहरुख खान। तो मेरी शक्ल के साथ मैंने कहा मैं ड्रामा करूं, बेटर है, एक्टिंग नहीं हो सकती। बाय द C5 played, and now अब जो नाइट घोड़ा बड़ा धूम धमाके कोने में गया था, अब उसको वापस आना पड़ेगा। बाय द वे, ओनली मूव इज A4 और 92, अदरवाइज एडवांस। भाई वो स्टेप था ना, कौन सी मूवी था, ZNMD में, भाई करने का मन कर रहा है भाई। लेट्स गो भाई, क्वीन D2 C4, लेट्स पुश पुश पुश। कम ऑन कौन बाय द वे, लेकिन 34 सेकंड्स। ओ भाई मैं कहा तो खुश हो रहा हूं। ओके, 34 सेकंड्स, यस 30 सेकंड्स। Gukesh, come on, you have to play now, you have to play now, you cannot waste any time on the clock. By the way, he can just pushes the pawn. Beautiful move. 92. Hikaru fighting it out. He's putting the knight on D4 or F4. He can play F4, actually attack the queen. But the bishop on D3 is a great piece now, defended by none of the two pawns. By queen E5, keeping an eye on the... Gukesh is just almost winning this. If he manages to grab this pawn without any concessions, he is clearly better. The tickets will be rolled out pretty soon in the next couple of days. Follow the Chesscom India and the Chessbase India Instagram to get notified जब भी वो tickets आएंगी भाई. Queen E5 played. What happens now? Okay, so he's wasting a lot of time for no reason. I mean, he's trying to find the best moves. That's not easy when you're in front of Hikaru Nakamura, the strong, the tough Hikaru Nakamura, the speed champion, right? He's the one who wins the speed chess championship every year. Like, he's the only one who can challenge Magnus, for example. प्लेयर कैमरे लगा दो भाई, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं लगा देता भाई, बट फिलहाल मेरा ही कैमरा है भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हिकारू कर क्या? टेक्स 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 टेक्स, यही कर रहा होगा भाई, कोई फर्क नहीं है। कम ऑन।
हिकारू भाई सोचते हुए, by the way, next move automatically, yeah, like unless Hikaru does something crazy, it has to be taking the pawn, taking this pawn, and then pushing this pawn. Simple plan. Simple plan for black. So white का plan complicated, and that's why I think Gukesh has a great chance of winning with black. अगर ब्लैक से जीत गया भाई, तो गुकेश अब भी ऐसा स्पैम होना चाहिए ना कि भाई मतलब ऐसा नहीं कि समय आना की चैट है, समझ लो, लाइक ऐसा क्रेजी स्पैम होना चाहिए भाई, कम ऑन। हिकारू भी टाइम पे नीचे जाते हुए थोड़ी उम्मीदें बनती हुई, मन में लड्डू फूटा तो नहीं है बट थोड़ा सा महक आ रही है उसकी। 1 मिनट टू एग्जैक्टली 1 मिनट बिहाइंड नाउ। कम ऑन गुकेश। Oh, that's a decent move. He takes the pot. Oh, apparently he had to sacrifice the exchange. Hikaru doesn't do it just yet. अगली मूव में ये मारना है उनको. If he doesn't take it, I think Gukesh has great chances. But oh, he's allowing Hikaru to do it. But क्या Hikaru देंगे रूक बिशप के बदले? Not easy. Yeah, not easy, not easy, not easy. Come on. Rook A4 back. Just preventing that exchange sacrifice. Let's go. 18 सेकंड. 15. 13. Bhai, it's going down to the wire. Gukesh is completely winning. Look at the bar. He is winning now. But can he convert this A3 pawn is falling? Last chance for Hikaru Nakamura to take that pawn. Ow. Doesn't take it. Defends. It's still defensive mode for Hikaru. Every piece is defensive. Wow. Can he do it? Queen D2. Beautiful. You know, trying to hold on by a little tiny thread. All we need to do is remove this rook, chat. ये rook हट गया तो ये pawn दौड़ेगा. एक बार C2 पे आ गया, game is over. This is the rook we have to remove. That's it. This is gonna end with blunder, chat. This game, as we know, with such limited time, is going to end with a blunder. That's how it usually happens. But who's the one who'll make it is the question. 20 seconds is too low. I am in the same boat as you, SG29. 20 seconds is too low, but so is 58. Gukesh playing the right style of chess, playing good moves and very quickly. Very quickly, very important. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, Gukesh. Anything. Maybe he can switch. Wait. Maybe he can suddenly switch to the king side and it's not easy to defend the king actually. Now that I look at it. Maybe that's also a plan. But okay, he's playing it safe. Safe is good. Safe is good. बोर्ड लैगी है. अरे भाई वो इतने दो धुरंधर प्लेयर खेल रहे हैं तो बोर्ड भी कांप रहा है भाई. दैट्स व्हाई इट्स लैगी. क्वीन D1. Oh, rook B2. He has to do rook B2. Come on. Let's go. Rook B2 on the board. Gukesh slowly squeezing out to win. Queen G4. Hikaru goes for counterplay. Now Queen F6. Queen F2 is the threat. Come on. 10 seconds for Gukesh. He finds the best move. Oh my God. Why is my voice so squeaky? Gukesh completely winning against Hikaru, but he has no time. Can he convert this? Finds another great move. Rook B3. What a move. 9 takes. There is Queen takes. Insane move by Gukesh. Wow. What a move. This deserves like a... Bhai, this deserves like a icon. Yeah, what a move played. Rook B3. Hikaru is stunned. He's thinking. Is he about to defeat the world number 2? बार देखो, बाय द वे -3 है फिलहाल के लिए. Come on, come on, come on, come on. Hikaru trying to find his last trick. We know how tricky Hikaru is. The game is not over. The game is not over until it's over. We have to have... Oh, it's 10 seconds each now. Who's going to be the... Who's going to play... Who's going to have the final blow, chat? It's all about these final 20 seconds. Rook C1, best move by Hikaru Nakamura as well. But now I can take the A3 pawn. Pawn मर चुका है. अब क्या होगा आगे? क्या ये pawn queen होगा या ये pawn मरेगा? ये pawn game decide करने वाला है. This pawn will decide the entire game. H4, Hikaru going for counterplay, but there is none right now. The rook is passive. Oof, also gives his king an escape route. Yeah, he wants king H2 as an option. Gukesh, C2. I told you when the pawn lands on C2, black. Oh! Wow, rook G5, rook H5. Beautiful. Beautiful maneuver. Oh. By Gukesh of spam होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए for at least 60 seconds. अगर जीत गया तो 2 seconds, 1 second. Did he win?
Did he win? Did he win or not? कंफर्मेशन दो मेरे भाई. भाई कोई तो बताओ. भाई मूव्स आ नहीं रही है. He should have won, right? Come on, come on, come on. Good news though. Black से अगर हरा दिया, that's insane. If he has won, let's go. He defeats Gukesh, the world champion, has defeated world number 2 Hikaru Nakamura with the black pieces in what has been an epic game. Accuracy का difference देखो भाई, 60 decimal का 7 point difference in accuracy. And let's put it in one line. Gukesh Damaraju is back. Let's go, Gukesh up in the chat भाई. मजा आ गया भाई. क्या गेम थी भाई. ओह भाई, let's not forget second game में बाकी है. And Chad, if Hikaru is known for one thing, is known to come back. So अगला game, अब Hikaru Nakamura will be trying to strike back all steam ahead. So it's going to be a crazy game, but क्या ही comeback किया. And now look at the standings. Right, second place behind Magnus, looking cool. And we will chat as it looks great. So Gukesh has won. Let's look at the Caruana Calls. Oh, that's also ended. So that's in a draw. And now that means, oh, why Hikaru in last place. So guess what Hikaru is going to try and do is win this game with black against Gukesh. And that means कि भाई Gukesh का एक और मौका है to defeat Hikaru 2-0. एक बंदा कह रहा है प्लीज डोंट योर मैथ्स इज रॉन्ग, द डिफरेंस इन एक्यूरेसी इज 6.9. प्रणब भाई, आई नो व्हाई यू लव दैट नंबर, वी ऑल लव दैट नंबर, बट आई थिंक आई थिंक 6.9 इज करेक्ट. वाओ भाई, दैट वाज चैट. या मजा आया रे, मजा आया ना भाई. भाई एक बार यस लिख दो भाई, मजा आया तो यस लिख दो भाई, और लाइक बटन दबा दे भाई जल्दी से भाई. That was amazing. That was amazing. And now chat, I think इसका मतलब है कि अगला game is very crucial. It's going to be Gukesh with the white pieces. Already a slight edge for the world champion, right? Because white pieces से खेल रहे हैं. And second edge psychological है. I think from Hikaru's perspective, he wants to strike back, right? He wants to strike back instantly and defeat Gukesh, जिसने टेक्निकली वो वर्ल्ड चैंपियन टाइटल ले लिया. सो ही इज गोना प्ले फॉर अ विन, ही इज नॉट गोना प्ले फॉर अ ड्रॉ. ये तो क्लियर है भाई, टाइट से भी क्लियर है भाई. कितने ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा हूं आज में भाई, कोई तो स्पॉन्सर करो भाई. बिल्कुल क्लियर है भाई. सो मुझे लग रहा है कि गुकेश का एक मौका है टू लेट हिम ओवर एक्सटेंड, कीप इट सॉलिड एंड साउंड एंड लेट हिकारू टेक द रिस्क. कैन बस पकड़ लो फिर. Yep. And as you can see now, standings, Gukesh is in tight second place with Caruana. And chat, do not forget, this is a 3-day event. आज कल परसों, and कल परसों में भी Gukesh will again play CARLSEN, again play Hikaru, again play Caruana. So अगला मैच होगा इस मैच के बाद. After the Hikaru game will be 2 games against Caruana, who as we know is world number 3, and who as we know almost qualified to the candidate जब वो नेपाल से गेम हुआ था. So उनका अपना ही इक्वेशन है Gukesh के साथ. So I think everybody in this tournament really wants to beat Gukesh. If we figure out, I just realized it's like, if we figure out top 3 players who want to beat Gukesh, it's clearly Magnus, Hikaru and Fabian. तीनों यहाँ पे भाई मस्त. बहुत तेज हार्टबीट हो गई थी. अरे बिल्कुल यार, आई मीन Hikaru का किंग फेंको नहीं आई थिंक गुकेश तो कभी नहीं फेंकेगा. यू नो गुकेश, या ही विल नेवर डू दैट. एंड इट्स नॉट लाइक इट्स बैड और गुड. आई थिंक वो टूर्नामेंट एग्जीबिशन मैच था, वहां पे ऑडियंस भी हाइप कर रही थी, चिल्ला रही थी, दिस इज अ सीरियस मैच, फिडे रेटिंग सो ऑन. सो यहाँ पे वो सब नहीं होगा. ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट वो आखिरी गेम था, अभी और गेम होनी है. पता लगे गुकेश ने हिकारू का किंग उठा के फेंक दिया और अगली गेम में खुद का ही किंग नहीं है. तो लेट्स कीप दैट इन माइंड भाई. अगली गेम जो जो आज किसी और का किंग है, वो कल तुम्हारा भी किंग होगा. Nepo also, I mean, Nepo is not really playing. I think Nepo is not even qualified for the candidates this time. That would be a unique thing. He's known to be there every single time. Would love to see him there. But उनका भी आखिरी मौका वर्ल्ड कप में है. So that's going to be an exciting when the World Cup starts from 1st November. Do not miss that. इस चैनल पे आएगा and it's going to be fascinating to watch. King नहीं होगा तो मेट कैसे करेंगे? Exactly भाई वो है. But you want your king to be there. Otherwise क्या मजा. Gukesh, the world champion for a reason. Why? Bilkul. And
हैव दैट फेथ कि भाई ये इवेंट वो जीत सकते हैं. चैट, क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? How many of you genuinely believe Gukesh could win this event? Yes or no? Bas. Not second, not third, not fourth. Um, how many of you think he can win this event? क्या लगता है भाई? I see some yeses, I see some nos, I see some nevers. So ये पोल हम करेंगे. I think after day one maybe we can do this. But फिलहाल के लिए I think the game is on and look at the opening. What did I tell you, chat? Hikaru is going for a win. And which is the opening you play when you go for the win? The King's Indian. So unless वो Grinfield में जाने वाले हैं, which is unlikely, I think we're going to see a King's Indian. And look at Gukesh. Nice choice. Love that choice. Playing a solid weapon. Hikaru के solid खेलो and let him overextend. Beautiful opening choice. नो चांसेस भाई. क्लासिकल में हो सकते थे. कह रहे अमरनाथ त्रिपाठी जी कुछ भी हो सकता है. यू नेवर नो. लेट्स होप सो ही सरप्राइजेस अस ऑल. ऑल्दो आई हैव टू अग्री, आई थिंक मैग्नस इज द फेवरेट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मीनवाइल बिशप जी4, आई थिंक यहां पे यू कैन प्ले d5, kick that knight back and gain even more space. So would be very logical. Or you can play h3 and attack the bishop. Played by Gukesh instantly. मारेंगे बिशप से, पॉन से नहीं मारेंगे बिकॉज हमारा ये पॉन तनहा आइसोलेटेड हो जाएगा. And now of course this is attacked. So very important. How do we defend this? I think e3 is very logical, keeping it solid. d5 खेल सकते हैं, but d5 के बाद I think there is knight e5 and suddenly ये pawns attacked, bishop attacked. I don't want to do this. Overextend nahi karna. As we discussed, Gukesh won the first game. Keep it solid, stupid. That's very, very important. Gukesh already has the edge. I would say जो Kings Indian होता है, कौन कौन है जिसने कभी Kings Indian खेला है लाइफ में? So Kings Indian is such a opening जहां पे you can't trust the bar. You cannot trust the bar at all. ये ध्यान रखना. Basically, Kings Indian is such an opening जहां पे sometimes it will show +0.5, +1. एक गलती mate in 9 for black. Like it's very, very complicated. So Kings Indian पे बार को as it is भरोसा करना बड़ा difficult है. Best opening है भाई. अरे best तो है. Depends on the player who's playing it. By the way, e3 played e5 on the board. Great plan by Hikaru. Idea है कि आप d5 खेलोगे. I'll put the knight on e7. And hello sir, f5, f4 attack launch करेंगे Hikaru. But Gukesh ready है भाई. The bishop on g2 is a great piece. Keeps my king very, very safe. Please have two screens. I think ये rapid है. Usually classical chess में that makes sense. But rapid में I think usually we're going to look at the live position only. So that's why we don't have the separate board. But we can have it from tomorrow if it makes sense. But the standings might make more sense because we want to see Gukesh win. By the way, फिलहाल के लिए 8 मिनट, 8.5 मिनट है गुकेश के पास. So I mean, I don't want to stress. I'm chill, bro, chill. I'm chill. But थोड़ा सा, वो अंदर से होता ना, वो पैर ऐसे हिलने चालू हो गए भाई. थोड़ा नर्वसनेस चालू हो चुकी है. Ooh, h4. That's a tricky move. And it was the best move in the position, but not an easy one to, spot. Ki, bhai, what is the idea? Because after f4, you might feel attack aa raha hai, but apparently you can just play king g2 and it's great for white. Wow. Hikaru बहुत फास्ट खेल रहा है. आई अग्री. व्हाई डू सम कैम्स बाय? उनका खुद का इवेंट होगा तो मे बी दे हैव कैमरास. उन्होंने पैसे पे किए होंगे. इट्स समटाइम्स वेरी एक्सपेंसिव टू गेट कैमरा राइट्स एंड या 20% Gukesh, 30% for Magnus, 5% for Hikaru, and 22% for Fabi. So you've given relatively similar percentages to everyone. I think Magnus probably has like 50% chances of winning, if I'm being honest, because over the board hai. Then you can distribute the remaining remaining 50 between the three. बोर्ड लगी है रियली. ओके, सो मैं अगले 20 सेकंड के लिए हिकारू में टर्न होने वाला हूं. डरना नहीं, ठीक है? टेक्स. नहीं यार, ठीक चल रहा है बोर्ड. कभी कभी हल्का फुल्का लैग होता हो आगे. बाय द टाइम f4 played. Oh, didn't we just see this move? f4. That was my problem, right? कि f4 होगा. And now king g2 is the best. King g2 is the best. Let's go.
Come on, Gukesh. King G2, very, very nice move. Just defending everything. But not super simple. But okay, I mean, you don't want to take. And G4 looks like very risky because ये queen से pawn कभी भी मर सकता है. So King G2 does have some logic. Come on, King G2, King G2, King G2, King G2. सर कहां से आते हो इतना एनर्जी? भाई रात को एनर्जी अपने आप आती है. आई डोंट नो व्हाई. मे बी चैट हैज सम रीजन बिहाइंड इट. वो जब मूव खेलते हैं तब लैग होता है. अच्छा, ओ अच्छा, वो पीस धीरे धीरे आता है. ओ तो गाना सुनो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी. वो यू कैन लिसन टू बॉलीवुड म्यूजिक एंड मेक इट हैपन. डोंट नीड टू गो फॉर विन डिफेंस. हिकारू पुश. एग्जैक्टली, हिकारू जी खुद पुश करेंगे. तो दूसरा वाला पुश कर रहा है तो हम काहे करें? हम पुल करेंगे. मीनवाइल, ओ बाय द वे, G4. भाई थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा डर, थोड़ा डर, थोड़ा खौफ का माहौल है भाई. चेस कॉम और Chess24 इंडिया के स्ट्रीम पे अभी. बिकॉज G4 इज वेरी कमिटल. इट्स नेचुरल. सुजीत जी, बिल्कुल नेचुरल है, बट इट्स कमिटल. अगर इस पॉन को बचाना है, कैसे बचाने वाले हो? फॉर एग्जाम्पल, Knight C8. बाय द वे, हिकारू ने अपना ब्लंडर कर दिया. बढ़िया भाई, बच गए. बट इफ यू हैड प्लेड Knight C8, यू कैन नॉट डिफेंड दिस पॉन. If G5, H6, you take, and suddenly you can see कि भाई यहाँ पे तहलका मच रहा है. Just takes, next queen H4, and this is a bit scary. So luckily Hikaru ने निकाला नहीं. And now Gukesh is very solid. Oh, I love this position for white. Beautiful position. King side lock कर दिया. अब queen side पे खेलेंगे. वैम्पायर हो क्या जो रात को एनर्जी? भाई मैं अभी थामा मूवी देखा था, तो अपेरेंटली वैम्पायर्स को आजकल दिन में भी एनर्जी आने लगी है. दे हैव चेंज्ड. मिसेस इट एग्जैक्टली. एंड नाउ द थिंग इज चैट, यूजुअली किंग्स इंडियन में व्हाइट प्लेस ऑन द क्वीन साइड, ठीक है, एंड ब्लैक प्लेस ऑन द किंग साइड. सो मतलब कि ब्लैक को किंग साइड पे पीसेस खेलने हैं और हमें क्वीन साइड पे. अगर किंग साइड लॉक हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे लॉक हो गया, तो ब्लैक का प्ले खत्म. एंड अब व्हाइट आराम से खेल सकता है. आई वुड इवन आर्ग्यू प्रैक्टिकली, इफ आई वुड से अगर एक क्लासिकल चेस होता, व्हाइट शुड बी क्लोज टू विनिंग. लाइक व्हाइट शुड बी क्लोज टू विनिंग, बिकॉज व्हाइट का प्लान काफी सिंपल है. कुछ नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं करना है. बस किंग साइड पे थोड़ा सा ये सॉलिडिफाई करके फिर एडवांस करते चलो. बोर्ड का क्वालिटी थोड़ा लो आ रहा है बाकी ग्राफिक्स के मुकाबले. सर में कुछ है क्या चक्कर? मतलब मेरे साइड पे बोर्ड का ग्राफिक्स लो है या क्या चक्कर है? बताना भाई कुछ, अगर इफ आई कैन डू समथिंग. आई डोंट नो, मेरे को तो ठीक दिख रहा है एक्चुअली मेरे मेरे फोन पे. भाई 2x में बोलो. हो गया. भैया यू फ्रॉम विच कॉलेज? भाई थापर यूनिवर्सिटी से पढ़ा था मैं, पटियाला में. नाइस कॉलेज, एटलीस्ट वाज अंटिल सम पॉइंट. Hikaru feels Magnus and Gukesh affect both. अच्छा अच्छा, वो सेंटेंस पूरा पढ़ा मैंने, घबरा गया एक सेकंड के लिए. Knight C8 played, so nice move. I think you wanna, come allow the knight to come to B6, attack the C4 pawn. थोड़ा बाद में rook C8 भी आएगा. You're basically countering that B4 move, right? Because एक knight C5 कंट्रोल कर रहा है और एक knight C4 अटैक कर रहा है. So nice maneuver. आपका प्लेसमेंट कहां लग गया फिर? भाई प्लेसमेंट में की बातें नहीं करते भाई. रुक प्लेड. सो नाउ माय दिमाग इज सेइंग, कैन आई प्ले बिशप E2? बिकॉज आई एम थिंकिंग यार F3 तो नहीं आ जाएगा. आई मीन बिशप F3, नाइट C4. Yeah, this is apparently good for white. So then if this is good for white, then I would play bishop E2. But okay, he plays B3, also nice move. And now I think धीरे धीरे B4 की तैयारी तो करनी है. कुछ A4 A5 कर सकते हैं, मे बी किंग G2. आई थिंक वेरी लॉजिकल. whenever you are in control, मान लो कि दो सिटीज है, ठीक है, एक है गौतम सिटी, राइट, और एक है भाई गौतम की भाई की सिटी. एंड बेन हो तुम्हें मतलब वो तुम्हारे हाथ में ब्रिज है. So you decide when to open the bridge. So you want to make sure your army is in their best positions
before you open that bridge and have that fight. So white can yahan pe take his time. Queen e2, nice move. Taking it, nice. Bishop d2, making sure every piece is placed perfectly before you strike with b4 or any other move. Nice. This is close position, so knight spell is good. That's a good point actually. कि अगर close रहे तो knights are good, but knight जा कहाँ रहे हैं? The thing is, the space is so much for white कि knight के पास कोई square ही नहीं. अगर black का knight यहाँ होता, I would agree. But यहाँ नहीं है. And white does have a pawn break. अगर b4 के बाद, just to show you, ठीक है, let's go b4, मारा मारा, and suddenly right now the pawn is hanging. I can't do it. But अगर ये hanging नहीं होता, then suddenly at some point c5, knight b5, and this can be troublesome at some point. So फिलहाल के लिए Hikaru countering that b4 move, but how long can he do so? देखो भाई दिन में कितनी बार, एक बार तो नहाता हूँ यार. एक्चुअली एक बार तो नहाना चाहिए दिन में. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइजेनिक. हिकारू को ये क्या है भाई? आप तन्मय भट्ट होना भाई. तन्मय भाई ने भी वेट लूज कर लिया, बट आई हैव नॉट लॉस्ट इट येट. तो अभी अभी नहीं हूँ, लूज करना पड़ेगा. इफ एनीबडी इज अ फिटनेस ट्रेनर, प्लीज डू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम भाई. कैसे लूज करे वेट? एक एक महीने में कोई फंक्शन है भाई, अटेंड करना है. सो इफ आई कैन लूज वेट दैट बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू. ब्रो चेस बुक फॉर बिगिनर्स. आई थिंक सॉल्व टैक्टिक्स. कोई भी पजल बुक बिगिनर उठाओ या पजल सॉल्व करो चेसकॉम पे, बेस्ट. भाई बिशप d8 प्लेड. नाउ बिशप कह रहा है कि यहां मेरा कोई फ्यूचर नहीं है. लेट मी रीराउट माई सेल्फ टू ग्रीनर पैस्चर्स, जहां पे खेत होंगे, मैं दौड़ सकूंगा, ऐसे बोलते ना, ऐसे आराम आराम से. तो ही इज ट्राइंग टू इंप्रूव हिज लाइफ. यू ऑल्सो इंप्रूव योर्स. Just run 5 miles every day. Bro, there is no time to run 5 miles. That's the problem. कचौरी जलेबी और मैगी मत खाओ. नहीं खाता यार, एक्चुअली नहीं खाता मैं. आई डोंट नो व्हाई. बट एनीवेज, फिलहाल के लिए 5 मिनट. कमिंग बैक टू द गेम चैट. 5 minutes for Gukesh, 7 minutes for Hikaru Nakamura. So he's still 2 minutes behind. Hikaru maintaining that two minute difference. So कभी ना कभी कैच अप करना पड़ेगा, गुकेश को. Chew 30 times every time. That's a good advice, Nish. I think that's something I should work on. मैं बहुत जल्दी खाता हूँ यार. इतनी रात जाग के वेट लूज नहीं होगा भाई. स्ट्रीम करना भी जरूरी है ना भाई. गुकेश अब मैग्नस खेल रहे हैं. बाय द बिशप e2 एंड only opportunity if black wants to go f3. Like literally the only try, but it's not good because black के सारे पीस queen side पे है. So f3 would be a horrific blunder right now. नहीं, दवाई वाई से नहीं करना भाई. असली भाई, असली दम से अपने बल पे करना है भाई. By the way, f3 would be a bad move. Doesn't play queen e7. स्टिल हिकारू काउंटर करते हुए, मेंटेन करते हुए प्रेशर c5 पे. वो कह रहे हैं b4 खेलोगे तो ये मार दूंगा. नाइट f6. f3. Okay, if the bishop was on d7, I think we might be worried of some sacrifice. Without the bishop on d7, it's not happening. ऐसे क्यूट लगते हो मत करो यार. फोटोज में अच्छे लगने चाहिए ना यार. वेट लॉस जरूरी है. ड्रिंक ब्लैक कॉफी ब्रो. यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ब्लैक कॉफी नहीं पी सकता भाई. वो तो मुझे यार मतलब दूध वाली चाहिए. अरे if I've played now, b4 becomes even less likely. I think हमने कहा था इंतजार करना चाहिए, कुछ ज्यादा ही कर दिया. आई थिंक अब दुल्हन की शादी हो गई. अब मुश्किल लग रहा है भाई. बिकॉज नाउ b4 will also open the a file, which I'm not so sure about. Suddenly black's both rooks will be very very active, and it's becoming more and more like a draw now, I feel. Draw is good. I mean, we did win the first game, so draw is great. But we had some winning chances there. But okay, Gukesh is still fighting. No processed food. That's good advice यार. But कैसे आजकल सब कुछ प्रोसेस्ड है भाई. आजकल क्या चीज प्रोसेस्ड नहीं है. आपकी शादी कब है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बाय द वे, किंग e2 प्लेड. गुकेश के पास कोई क्लियर प्लान उनको नहीं दिख रहा है. सो ही इज फीलिंग द टाइम प्रेशर. ही इज प्लेइंग वेरी क्विकली नाउ. एंड हिकारू का टाइम ऑलमोस्ट डबल है. हिकारू अपने पीछे से एक्टिव में. नाउ व्हेन यू प्ले b4, इवन द बिशप बिकम्स एक्टिव. चैट, आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई थिंक गुकेश को ड्रॉ लेना चाहिए. He should not play b4 now because black के सारे पीस, सारे, this rook, this bishop, this knight,
एंड इवन द क्वीन लॉन्ग टर्म विल बी एक्टिवेटेड। आई थिंक इनको ड्रॉ ले लेना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए कि ये बिशप थोड़े पैसिव हो जाए, बिकॉज राइट, ओ भाई एक और पीस आ रहा है भाई। आई थिंक रैन द b4, ड्रॉ इज हैप्पी, प्ले a4 एंड टेक द ड्रॉ, या इवन जस्ट कीप दिस लाइक दिस। भाई नो ऑडियो वीडियो सिंक, कैन यू चेक सर्वाइव द ऑडियो वीडियो इज सिंक्ड, इफ नॉट भाई तो 300 मिली सेकंड का ऐड कर देना प्लीज, डू चेक। व्हाट डू यू थिंक, डज मुकेश नो वी आर रूटिंग फॉर हिम? ऑफ कोर्स ही नोज यार। जब कैंडिडेट मुकेश वन, it was like odd timings, right? It was 12 a.m. to 7 a.m. or something like that. Like he came to our stream multiple times. He knew the fans were cheering for him every single day, and that means a lot to chess players. They want fans cheering for them. It gives them purpose. थैंक यू भाई, लव यू टू भाई, इट इज सिंक्ड, बढ़िया। पिंग मी फॉर वेट लॉस, भाई सिर्फ एब्स की फोटो लगा, एब्स की फोटो भी नहीं लग रही भाई, वो कुछ और ही फोटो लग रही है। मीनवाइल हिकारू का टाइम अभी भी बहुत आगे, सो हिकारू जस्ट प्लेइंग अराउंड, नॉट कमिटिंग टू एनीथिंग। चैंडलर बिंग ओपी, सो व्हाट कैन गुकेश डू? आई थिंक ड्रॉ ले लेना चाहिए, टाइम देख लो। हाँ बट यहाँ पे पता क्या है, गुकेश को ड्रॉ चाहिए ना, उनको मिल रहा है। हिकारू कैन नॉट डू एनीथिंग, एनीथिंग, ड्रॉ चाहिए, मिल रहा है भाई, ले लो। Good observation, Hemant bhai. Not a single pawn has been traded. That means no open files. And that means कि it's very difficult for either side to make progress. भाई कलरिंग बुक की याद आ गई बचपन की यार। Queen f1, I think that's just kind of, keeping the position solid. Maybe I'll go here, not committing to anything again. Looks like a wave. I am an online, भाई फिटनेस में क्या ऑनलाइन कोच होता है भाई? Draw is a good decision. Yeah, draw is pretty fine actually. I like a draw. Draw is pretty decent. A4 खेलोगे वो भी draw है, I think. Maybe black is slightly better now, but again should be a draw. Or you can just stay there like that. There's nothing happening. ऊपर करके मेरा कमेंट देख लो भाई, वही कपड़े ऊपर ही तो नहीं हो रहे यार, हिम्मत ही नहीं हो रही भाई, इतना इतना जरूरत है भाई। लुक एट द क्लॉक, क्वीन f2, oh they're repeating, yeah, they're repeating, let's go, it's going to be a draw, that is a draw chat। and इसका मतलब Gukesh defeats Hikaru Nakamura 1.5 half, that is commendable, let's go Gukesh Chopi in second place right now। and अगला मैच उनका एक ही प्लेयर से बचा है, that is Fabiano Caruana, so let's stay tuned for that match। meanwhile let's look at the Caruana against Magnus game, जहां पे Magnus मजे में हरा रहे हैं भाई। Why Magnus playing World Cup? You know, Magnus na won the World Cup last time. If he had not won, he would have played. But because he won already, I think उनका craze चला गया. And now I think he's not that interested in classical chess. That's why you see the total World Chess Championship now upcoming, जहां Magnus शायद खेलेंगे। Why are you taking my comment? Okay, I will not take your comment. Gukesh with 2 draws and 1 win and 1 loss due to time. I think that's pretty good. Let's keep in mind that Gukesh has played Magnus and Hikaru. I mean, that's a pretty good result if you look at it carefully. Easiest way to lose fat calories, lots of water, cardio for 30 minutes light workout. चलो कल से मैं करता हूँ भाई मैं 30 minutes of cardio. Okay, now chat 3 minutes for Magnus. And by that, I think हर गेम में 5-5 मिनट होते हैं. So I think next game will start in a few minutes. We'll wait for that game. Okay, it's resigned while 2 seconds on clock. नहीं भाई ड्रॉ हो गया वो. 5 मिनट लगेंगे डेली. ऐसा क्या करवाने वाले हो भाई? फ्लोर्स पे रन करो. got it. भाई तो अब तक कहाँ रन कर रहे थे भाई हम लोग? आई कांट रन वाटर यार. आपकी बॉडी सूट पे हल्क सूट करेगा, बल्किंग करो. नहीं भाई, मुझे बल्क सूट नहीं करना है भाई. आई वांट टू बी स्लिम एंड ट्रिम. स्टेयर्स पे रन है. स्टेयर्स पे. ओके, दैट मेक्स सेंस. मैंने कहा फ्लोर पे क्या होता है भाई? फ्लोर पे रन करते हैं. बट फ्लोर्स पे इतनी मैंने हॉरर मूवीज देखी है, समटाइम्स फ्लोर पे रन करके डर लगता है भाई कि यार कभी कोई भूत आ जाएगा, पकड़ लेगा. बाय द नाइट f5 प्लेड, सो Fabiano Caruana is still creating some chances. क्या पता मैग्नस ही हार जाए. You never know chat, you never ever know, कुछ भी हो सकता है लाइफ में.
1 meal a day is a tip for weight loss. नहीं यार, I tried it by. 1 meal a day feels like, but आपकी body weight lose नहीं करती. Like it just holds on to, it goes in existential crisis mode. दीवार नहीं चलना स्टेयर्स पे हॉरर नहीं है भाई, मैंने बहुत मूवीज देखी है स्टेयर्स पे कुछ ना कुछ होता है. नहीं योगेश, प्योर लूजिंग डोमिनेंस एज मैग्नस यूज्ड टू हैव. यार मैग्नस की डोमिनेंस अलग है. आई थिंक कंपेयरिंग टू गुकेश इज अनफेयर टू गुकेश एंड मैग्नस. सो आई थिंक लेट्स जस्ट वेट. पसीना आएगा तो वो तो बैठे बैठे आ रहा है भाई. I just shifted, like, I just shifted to a rented place because of some changes in my life, and अभी AC इंस्टॉल नहीं हुए हैं. तो अभी यहाँ पे गर्मी खूब है भाई, as you can see from my shining forehead. Why don't you hire a professional fitness trainer? Bro, मैं जिम जाना भी तो चाहिए ना इसके लिए. हायर करने से क्या होगा? Why do you look like Karan Johar? I think Karan Johar looks like me. हर्षित भाई को बुलाओ, हर्षित भाई को हम वर्ल्ड कप में बुलाएंगे भाई, he'll be there. वाईफाई इंस्टॉल है भाई, वाईफाई इंस्टॉल है. माय ओ बाय द वे H4, वेट, दैट्स अ ब्लंडर बाय मैग्नस कार्लसन. अपेरेंटली Caruana इज बेटर. भाई मैग्नस हार गया तो भाई द एंटायर टूर्नामेंट इज वाइड ओपन है. मैग्नस को हराना भाई बहुत मुश्किल है. बट यू ऑल्सो डोंट वांट Caruana टू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? बिकॉज अगला मैच Caruana का गुकेश के साथ है. Your favorite company in chess, London system is the best buy. For an average player who doesn't want to be a GM, I think London system is best. World Cup starts from 1st November chat. Round number 1 will be live. Chesscom India and Chessbiz India will be doing this together. Live broadcast aega, multiple channels pe. It's gonna be a fight for 3 spots at the candidates, and of course decision to see ki kaun Gukesh challenge karega for the world championship. And chat फिलहाल के लिए 53 seconds for Caruana, so he has to play quickly and he has to play the only move and he finds it. Wow. Yep, Sahaj bhai bhi honge wahan pe. That's why he's not here. He's flying soon, so he'll be there. Thank you, Mathimesh bhai. And meanwhile, chat 1 minute 56 seconds. Magnus time तो है लेकिन position नहीं है. क्या करेंगे यहाँ पे? I think knight h5 with the idea of maybe some hanky panky g3 कुछ हो सकता है. भाई पता है, so we have been interviewing some players for the World Cup, and tell me one thing which every player loves about the World Cup. क्या लगता है वो क्या चीज है? There is one, of course, the candidate spots, but there is one thing which everybody loves about the World Cup, जो हर किसी ने बोला. What do you think that one thing is? Not the knockout format. Knockout is heartbreaking. It is Goa. It is Goa. Actually, it is in Goa. So everybody loves the fact it is in Goa. And, it's like a dream tournament. Like it can go well, even if it doesn't go that well. You are in Goa, you enjoy it. So all the players are excited about the World Cup this time. Like every single player. बीच बिल्कुल भाई. ब्लिट्स ब्लिट्स ऑन द बीच कुछ करेंगे भाई हम लोग, मजा आएगा भाई. मैंने सोचा कि इंडिया में चेस के लिए इंफ्रा की कमी है. आई अग्री, बहुत कमी है भाई. एक्चुअली आई अग्री विद यू. बाय द वे, नाइट c4 स्लाइट एरर दिखा रहा है, बट आई लाइक दिस मूव, पुटिंग प्रेशर ऑन e5, कमिंग टू d6 में भी समडे पोटेंशियली. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, क्वीन की नजर वो f7 पॉन के ऊपर है. व्हाट डू यू प्रेफर, बीच और माउंटेन? यार मुझे वो वर्टिगो का इशू है, अप एंड डाउन जाके वो उल्टी आती है. सो आई वुड प्रेफर द बीच, ऑल्दो आई थिंक both are amazing. This looks lost for black. Why Magnus black hair? So maybe you want to reframe your statement, Shreyan. Maybe if somebody else is playing, maybe yes, but with Magnus, you never know. Oh, that's a blunder. What? Wait, what was G3? Oh, he thinks कि I think rook चलना पड़ेगा and there is knight G4, and if rook F3, for example, there is knight G4 again. But he forgot apparently कि white can just play यहाँ पे, for example, क्या खेलेगा white? कुछ खेला क्या? So white can apparently just play queen e2. And if knight g3, queen d1, and Magnus is completely lost.
Magnus Carlsen is completely lost. Played. Wow. So Fabiano Caruana, whom I thought personally is the easiest to beat among all the three players for Gukesh, is beating Magnus. Bhai Sahab. Wow. Wow. And suddenly, blunder. F. Ooh, doesn't find it. Fabiano Caruana blunders the game. F3 was winning. भाई मैग्नस और फैबी को साथ में ब्लंडर करते हुए हम लोग देख रहे हैं भाई। सब लोग अपने चश्मे का नंबर चेक कर ले भाई। मेरा तो स्पेयर चश्मा आ रहा है, मुझे नया चश्मा लेना पड़ेगा यार भाई। नए नाटक आ गए लाइफ में भाई। क्या क्रेजी है भाई। दोनों प्ले गलतियां कर रहे हैं। Oh, now five finds the best move. I am sorry, what? Why is not 92 working? It's a free piece. He just completely missed a free piece. Magnus के against. Bro, I can't believe it. I can't believe it. Anybody else in the world, अगर फैबी तुम्हारे और मेरे साथ खेल रहा होता ना, उसने वो नाइट D2 30 माइक्रो सेकंड में खेल दिया होता भाई उसने। वाओ, एंड सडनली मैग्नस इज बेटर। अरे भाई मैग्नस ये भी जीत जाएगा भाई। +6 था, +6 था फैबी। आई थिंक मैग्नस गोना। अरे भाई जीत गया मैग्नस भाई। जीत गया मैग्नस। ओके ओके, सम ड्रामा स्टिल। ये नाइट्स कैसे चार ऐसे मस्त लग रहे हैं ना, क्यूट से ऐसे। अरे अरे, अरे, खेलो खेलो तो तुम लोग। ओ अनदर मौका। मौके पे चौका। क्या मारेंगे फैबी? मार दिया है भाई। एक और मौका भाई। यू हैव टू प्ले क्वीन H7 ओनली मूव। एंड नाउ नाइट G4 हिटिंग भाई। Magnus God's favorite child, but then who is Samay? Okay, by the way, knight G4 कोई ना कोई चलना है। ये नाइट हैंगिंग है, यू हैव टू मूव इट। बोथ प्लेयर्स विद 10 सेकंड्स ऑन द क्लॉक। कौन होगा प्लेयर जो गलती करेगा? क्वीन D8 चेक, आल्सो वेरी टेम्पटिंग टू प्ले। ओ माय गॉड। भाई कैसे भाई, कैसे? कैसे? आई फील लाइक मैग्नस अगेंस्ट गेम्स ना, आई थिंक दे आर लाइक सिंक में पानी। यू नो, कितना भी तुम तेज फ्लो डालो वो बहता एक ही डायरेक्शन में है। अंत में वो एक ही जगह जाना है। वो जाएगा गोल गोल घूमेगा, बहुत एक्साइटमेंट, बट अंत में जाएगा वो ड्रेन में ही। सेम चीज है भाई, सी। वेट 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 वेट, गलती गलती गलती। बट स्टिल भाई मैग्नस अलग ही है। ओके ओके ओके, 6 seconds। कारुआना, he has to take on A6। अबे यार, मैग्नस भाई थोड़े अलग है भाई, थोड़े अलग ही है, तो आई थिंक ये गेम भी जीतेंगे। एंड ही इज गोना गो टू 3 points बाय द वे। 300 येलो भाई। मैग्नस के अगेंस्ट 3000 भी 300 में पहुंच जाता है भाई। यही तो जादू है मैग्नस का। एंड नाउ इट्स लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट नाउ। ये तो मैं भी जीत जाऊंगा यार। अब तो एच पॉन है, ये तो खत्म है गेम। एच फ्यार। या तुम्हें वो थ्रीड्स देखी है? जब वो चतुरामन लिंगम दूसरे एग्जाम से एक रात पहले वो मैगजीन डालता है अपने दोस्तों के डॉर्म रूम के नीचे। ये पॉन वही मैगजीन है। इट्स अ डिस्ट्रैक्शन ताकि रियल प्रैक्टिस यहां हो पाए। एंड इट्स गेम ओवर भाई, इट्स गेम ओवर।
एंड मैग्नस जी जाएंगे 3 पॉइंट पे। इसका मतलब लेकिन एक चीज अच्छा है कि गुकेश विल बी इन सेकंड प्लेस, सो दैट्स द गुड न्यूज। एंड अगर फैबी का मोरल डाउन तो उसके हिसाब से गुकेश के लिए अच्छा है। आई डोंट नो इफ ही वांटेड दैट, बट आई मीन प्रैक्टिकली गुकेश के लिए अच्छा है ये। For pure dominance, Gukesh will have to improve his time pressure blitz. I think ये बात सही है, and thanks a lot bhai, but I think ये बिल्कुल सही बात है। वो चीज improve करनी है, but he is improving. I think the main question is he moving in the right direction or not? If he's improving, then it's all okay. Maybe he's not at Magnus's level just yet, but as long as we know he's moving in the right direction, is great. And meanwhile, Magnus Carlsen somehow, bhai, Magnus effect या जो भी हो, he has won his game against Fabi. -6 था भाई मैग्नस का, बट ही मैनेजेस टू विन। एंड इसके साथ ही देखोगे मैग्नस 3 पॉइंट्स, गुकेश इन सेकेंड प्लेस बिकॉज हिकारू को उन्होंने हराया 1.5 हाफ। एंड आज का फाइनल मैच फॉर गुकेश इज अगेंस्ट फैबियानो कारुआना। That's going to be a crazy match. First game Gukesh will have the black pieces. मैं पोल लगा रहा हूं, चैट क्या लग रहा है? स्पैम कर दो अपनी प्रिडिक्शन। फर्स्ट गेम फैबी गुकेश या ड्रॉ? व्हाट डू यू थिंक हैपेंस चैट? भाई बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यार ये, बिकॉज इफ ही विंस दिस आई थिंक ही कैन मेंटेन दैट सेकंड स्पॉट और इवन चैलेंज मैग्नस फॉर द फर्स्ट स्पॉट। अगर ये वाला मैच हार गए कारू अगेंस्ट, तो देन सडनली यू आर इन थर्ड और फोर्थ प्लेस। हिकारू विल लूज टू मैग्नस लाइकली। तो फोर्थ तो नहीं जाओगे, बट थर्ड तो जाओगे जाओगे। मैं पनौती हूं, मैं कारुआना बोलूंगा। सुयश भाई इट्स ओके यार, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा काउंटर भी लगना चाहिए कि चैट इट्स नॉट देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन, इट्स नॉट टू बायस्ड। Your favorite chess player of all time, pure chess, I think it's Magnus. There's no doubt. Like anybody else would be sad, but personality, as I mentioned, I think Anish. फैवी के लिए बुरा लगता है, बंदा जीतने वाला था यार। पर यू ऑल्सो हैव टू एडमायर मैग्नस। लाइक कैसे किया उसने ये? लाइक यू हैव टू एडमायर, लाइक फैबी ने ऐसे ही किया था ड्यूरिंग द कैंडिडेट्स आल्सो, राइट? एंड बिटवीन फैबी एंड मैग्नस मे बी दैट्स द डिफरेंस। वो क्रंच मोमेंट में Fabi is not able to strike and Carlsen is. मजा आ रहा है भाई। You know what? Clutch chess, great format भाई। I think great players also, great time control. And अगली बार बस कैमरा हमें दे देना भाई। परफेक्ट हो जाएगा। What do you think? In how much time will Gukesh regain his prime classical rating? I think he's going to do it in the World Cup. I do feel कि जो उसने गलतियां करी during the Grand Swiss, आखिरी कुछ rounds में ही he won 3 in a row, and he also had a great performance at the European Club Cup जहां पे गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, अपने लिए भी और टीम के लिए भी। So I think उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है, and he's going to play very very well in the World Cup. अब वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, but he's going to play some amazing chess. एक दिन में कितने गेम्स हैं? 6 गेम्स हैं। सो आज के लिए 4 गेम्स हो चुके हैं, 2 और गेम्स टू गो, बोथ अगेंस्ट कारुआना नाउ। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कारुआना इज स्टिल द इजीएस्ट टू बीट, इवन दो वो कार्लसन को हरा रहे थे, बिकॉज कार्लसन हिकारू उनको टाइम पे हमेशा पीछे रहते हैं हम लोग उनसे। कारुआना से टाइम पे आगे रहना पॉसिबल है, सो दैट्स एडवांटेज। लेकिन रिसेंटली कारुआना हैज अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट गुकेश, थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ेगा उसको। Yeah, Gukesh is playing some good chess. Can he continue? Is the question, right? All's well that ends well, and all's not well that doesn't end well. So let's hope so. He can finish off on a high on day one. World Cup in 30 plus ones. Maybe he will not gain 30, but others might lose, right? It's possible, but he can gain like I think 20 points, 15 points is not unimaginable actually. Although 30 is also not unimaginable. And he's also already gained some points, by the way. He's gained some points back already. कमाल आदमी हो यार, कैमरास नहीं लाए भाई। मेरे हाथ में होता तो मैं तो कैमरा अपने मुंह के बदले लगाया था, बट कैमरा है ही नहीं भाई, क्या करें? Why only 4 players? यार फॉर्मेट ही ऐसा है। They wanted to have world top 1 2 3 4, and उस टाइम पे मुकेश वर्ल्ड नंबर 4 थे। Next will start in the next 3 to 4 minutes chat. Anytime it could start, and whenever it starts, it's gonna be a battle. मजा आएगा।
आप उधर के चैट्स क्यों नहीं पढ़ रहे? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं दोनों, आई ट्राई टू रीड सम चैट फ्रॉम देयर आल्सो। ऐसा नहीं है कि भाई लेफ्ट आउट फील करे। यो और का भाई, आई एम रीडिंग दैट चैट आल्सो। दानिया जाने के बाद मैं चेस में मन नहीं लग रहा। या आई नो दैट वाज रियली सैड एक्चुअली। दानिया वाज, एवरीबॉडी इन द चेस कम्युनिटी लव्ड दानिया। आई थिंक ही वाज एन अमेजिंग कमेंटेटर प्लेयर, एंड ही वाज आल्सो फ्रीजा सेकंड बाय द वे। ऐसा मैंने कहीं सुना, तो रियली रियली सैड टू हियर दैट एक्चुअली। आई वाज सो शुक यार, मतलब कि ये क्या हो गया। मीनवाइल चैट, एज वी वेट फॉर द गेम्स, मैं एक प्रिडिक्शन आपसे पूछूंगा, ठीक है? दिस इज नॉट अबाउट क्लच चेस। हु डू यू थिंक, which players do you think are gonna be top three in the World Cup and will qualify to the candidates? What are your predictions? Because हम दो तीन दिन लिटरली 3 दिन दूर है अब वर्ल्ड कप से, 4 दिन में भी है, whatever, 3-4 दिन। Who do you think are the players who will qualify to the candidates? Top 3 players at the World Cup. क्या है स्टार्ट, अपने predictions डाल दो। 3 प्लेयर चाहिए, 3 प्लेयर। Vidit Rapport in round 4, bro, that's gonna be crazy. एक वो आर्च नेमेसिस है विदित का, but Vidit usually plays well at the World Cup, यार, तो कर सकता है। अर्जुन, विंसेंट अर्जुन प्रग, विंसेंट अर्जुन, साहिल टिक्कू मुश्किल है भाई, आई थिंक मे बी नेक्स्ट वर्ल्ड कप। नेपो अर्जुन अरोनियन, विंसेंट अर्जुन प्रग, विंसेंट फिरूजा इज नॉट प्लेइंग द वर्ल्ड कप जितेश भाई, बाय द वे। विंसेंट अर्जुन नोदर बेक, विंसेंट एरिगेसी अरोनियन। सो क्लियरली विंसेंट तो हर किसी के जबान पे है, तो विंसेंट तो आई एम गोना अग्री। हिकारू इज नॉट प्लेइंग द वर्ल्ड कप, पीयूष भाई, सो I think Vincent and Arjun are the top two favorites. Vincent number one, Arjun number two, and number three will be like a complete surprise. Like nobody predicted. ऐसा कुछ प्लेयर होगा मुझे लग रहा है। Wesley is unlikely. I think is not in his prime, and I think rapid blitz में he might struggle a bit. ऐसा मुझे लगता है। Have you played all of them at once? Uh, at least once. I have played Prag and Arjun. I have not played Gukesh and I think uh, Gukesh and Nihal have not played, I think, and Vidit also have not played. हैंस खेल रहा है क्या? हैंस खेल रहा है भाई, हैंस कुड बी इट, ही कुड डू इट। बाय द वे, हैंस ने धुलाई करी भाई डिंगरन की एंड द स्पीड चेस चैंपियनशिप। व्हेन आई सॉ द स्कोर इट वाज 10-1, सो हैंस इज इन फॉर्म। आई तो बन सकते हैं यार, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स जस्ट टू मच एफर्ट। लाइक आई वुड रादर क्रिएट कंटेंट, आई लव इट मोर। वर्ल्ड कप फॉर्मेट इज नॉकआउट, 2 प्लेयर्स बैटलिंग इट आउट इन द हीट ऑफ गोवा, एंड जो हारेगा वो बाहर, सिंपल। तानिया की न्यूज ये समझ नहीं आया मुझे। 16-3 हुआ शायद, दो 16-3, बाप रे भाई, ऐसा तो मैग्नस रहा था यार, दैट्स दैट लेवल ऑफ स्कोर यार। वेई परम नेपो कह रहे हैं ब्लैक जैक जी। हाँ, निहाल भी खेल रहा है बिल्कुल, टीआरएक्स विजन ही इज प्लेइंग। प्रग इज द फेवरेट कह रहे हैं, या डेफिनेटली पॉसिबल, आई थिंक प्रग इज वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर श्योर। नॉट तानिया, दानिया, नॉट तानिया, दानिया, देख दानियल नाजुत्स्की, आई थिंक उनके बारे में कह रहे हैं हम लोग। um VD Arjun Nihal, VD also a contender for sure. No, I have no idea about the reason. Meanwhile, chat, I think the games are about to begin in the next minute. So if have the players taken their seats? Do let me know. I think, हाँ, 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 I think 1 बजे तक चालू हो जाएगा, 2-3 मिनट में chat. So it should happen pretty soon. Meanwhile, if VD wins, then it's Prague versus VD in round 5. Wow. Oh, that's a crazy match, actually. Are you a fan of E4 or D4? I used to play E4 as a kid, but now I like D4 more. I think only one Indian from 3. I agree. I think एक Indian के chances बहुत high हैं. But I want to qualify because I think candidates में अभी एक ही Indian के chances हैं, that's Prague. We want at least 2 or 3 to be there, right? I think हाँ, मतलब I would take 1, but I would prefer 2. Parag will qualify via the FIDE circuit, so he's almost gone through already. Even if Parag, I think, finishes in the top 3, तो हो सकता है कि like कुछ वो, yeah.
Not about Tanya, Ravi, Ravina. It's not about Tanya. Arjun has the most easy path. Really, I think वो path will be very interesting. Last time Arjun, I think, got knocked out by Magnus, if I'm not mistaken. Not Prag. He got knocked out by Gukesh got knocked out by Magnus last time, and Arjun got knocked out by Prag. He almost knocked out Prag, by the way. क्या crazy matchup था वो. इमेजिन वीडी निहाल अर्जुन भाई, फिर जो हम पार्टी करेंगे गोवा में, तो गोवा आना भाई, लोग गोवा में पार्टी करेंगे फिर. What's your thoughts on Fabiano? As everyone says, Hikaru being always no number two. No, I think we all can agree that Fabiano has been world number two for the last 15 years overall, averaging it out overall. But I think he's not as good at the rapid and blitz formats as Hikaru is and the others are. That's why all rounder may be Hikaru, but in classical, Fabi is the world number two, no doubt. Total Chess Championship. I think एक और नया event है to commentate on, to stream, for players to give it their best. And Magnus Carlsen plays. So if Carlsen plays, I think let's do it. GF भाई वाइफ रिवील ना हो जाए यार, मुझे लग रहा है GF का तो बहुत लेट हो गया. His mother Rapport और रोनिन खेल रहे हैं, बिल्कुल दोनों खेल रहे हैं. Gukesh is playing good, better than Grand Space. Yeah, he's back in form. That's great news. Your winner from World Cup. Yeah, I think Vincent Keimer is the favorite right now. Although favorite कभी जीतता नहीं है, but I think also Vincent Keimer also knocked out Magnus last time. याद है? He won the first game and was winning in the second one, and he missed the winning move. So I'm gonna say maybe Vincent is having the best chances, but Arjun is right up there. And तक का नाम of course इसलिए ले रहे because he's already qualified. Yeah, so यार वो तो ऑब्वियस ही है. कितने राउंड हुए? 4 राउंड हो गए हैं, 2 राउंड पेंडिंग है, एंड द गेम्स विल स्टार्ट एनी सेकंड नाउ. एंड जैसी चालू होंगी तो होपफुली यूके जीतेंगे कारून को हरा यार. वुमेन्स वर्ल्ड कप पहले हो गया भाई, वो तो दिव्या जीत गई. बागा बीच पे मिलेंगे. अरे भाई अभी मैंने देखा नहीं भाई कौन सा बीच कितना दूर है, बिकॉज ये वेन्यू भी आई थिंक बिल्कुल बीच पे नहीं, थोड़ा बीच में है. सो देखना पड़ेगा. साज के साथ कभी चेस खेलेंगे भाई, बिल्कुल गोवा में खेलेंगे बीचेस पे. Does Caruana have a really bad record, Gukesh? Not really, yeah. I think starting में था, but nowadays he has a very good record. In fact, timing हो गया I think 3 p.m. The broadcast will चालू. Broadcast will start at 3 p.m. daily, and roughly 6 hours मान के चलो, क्योंकि classical chess है, a lot of games. And of course, as the games go on, some people get knocked out, and then they will get to enjoy Goa. Want Ugi to win this tournament, so he establishes his dominance. I would love him to win as well, because then he can make a statement. I am getting better at rapid chess. Tickets अभी होंगी available. I think they will probably post it in the next 2 days. So अगर आप Chesscom India या Chess India के Instagram को follow करते हैं, तो आपको वहां पे दिख जाएंगे links. भाई मैग्नस रिटायरमेंट क्यों नहीं लेता? भाई नहीं लेना रिटायरमेंट भाई. You wanna beat him before he retires. Like Gukesh, like the ideal setup for Gukesh or any Indian player who wants to be the GOAT is to beat Magnus. Like for consistently, multiple times. Only then people will ever call you the GOAT. अगर मैच ही नहीं हुआ, and then you can always वो ifs and buts में रह जाएगा फिर. Arjun will not win the event. He can. Let's not forget वो एक कदम दूर था last time. Virat भी एक कदम दूर था last time. So there are multiple people who can win this. And Nihal also, I think, got knocked out by Magnus last time, right? Or maybe I'm wrong here. I don't know. Casino में शायद नहीं जाऊंगा यार. I don't like to gamble. People should not gamble in general. निहाल का बहुत tough है. Path to final extremely tough. वो एक मैं क्लीशे है, बट वो टफ स्टोन्स को हम ग्राइंड करते हैं, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, तो डायमंड्स बनते हैं उनसे. तो इफ इट्स अ टफ पाथ, देन द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स मेक इट. स्लो मोड करो, सबका चैट पढ़ने का मौका मिलेगा. अरे स्लो लाइफ में हम रैपिड चेस खेल रहे हैं भाई. जब गेम स्लो नहीं है तो चैट स्लो क्यों है ना भाई. यो व्हाट्सअप मिसेस इट्स कैचेस. और इज गुड फॉर्म, तो उनके हाँ अरोनियन की बात कर. अरोनियन का डिफिकल्ट है फील. आई थिंक अरोनियन विल प्रॉब्ली रीच द मिडिल स्टेज, बट कोई ना कोई यंगस्टर कोई नॉकआउट कर सकता है. फॉर एग्जांपल अर्जुन हैज अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट अरोनियन.
Yes, Divi, exactly. You can only be the GOAT if you beat Magnus consistently. This starts in the next, I think, start. आगे क्या player? Samir bhai, are they at their seats? Any idea? अच्छा अच्छा, आ रहे भाई, आ रहे भाई, प्लेयर्स आ रहे भाई, प्लेयर्स आर कमिंग pretty soon. Sagar Shah will win the World Cup. Sagar bhai wins every chess championship bhai. Kramnik is नहीं यार. How will you find the only move each game? यार, द बेस्ट पार्ट इज हमें नहीं निकालनी, प्लेयर्स को निकालनी है. दे हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. देयर इंट्यूशन, मैग्नस ने कहा था एक बार कि इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ लुकिंग एट अ पोजिशन आई नो द बेस्ट मूव. मेरा दिमाग बिना सोचे मुझे बेस्ट मूव बता देता है. And 95% of times I'm correct. Then it's just about justifying कि why is it correct. So usually आपका as a strong player intuition इतना strong हो जाता है कि pieces का structure देख के you automatically get your mind to tell you the best move. So that's the best part. Is there a chance Samina World Cup में जाएगा यार? Very hard to know if an Indian is winning in the last few rounds. Who knows where Samay will be? But depends if he has some shows, so you can check. By the way, मेरा कैमरा गया. I think I'm going to change the battery quickly. हमें हमारी प्रोड्यूसर साहब की छोटी सी डीपी दिख रही है. प्रोड्यूसर साहब, आपकी डीपी इतनी छोटी क्यों है? बड़ी डीपी लगाने का था. रुको रुको, मैं बैटरी लगा रहा हूं. मीन वाइल मेरे बदले आपको दिख रहे हैं चार बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्लेयर. ओहो, क्या चमक रहे हैं भाई, क्या स्माइल है, चारों कितने खुश है. हिकारो ये बेचारा थोड़ा सा सैड लग रहा है यार. ही इज लाइक, यार उन तीनों की फोटो कितनी अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं आई. बट चलता है लाइफ में. ओके, कैमरा स्विचिंग ऑन इन द नेक्स्ट चैट. 15 तक काउंट करो, देखते हैं इफ आई कैन स्विच इट ऑन द नेक्स्ट 15 सेकेंड्स. ओके, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. अरे भाई सीधा हो जा. 4, 3, 2.5, 2.4, 2. अरे कहाँ है कैमरा? अरे 1.5, अरे 1.29, अरे 1.1, अरे 1. अरे हाँ हाँ, हो गया देखा, मैंने कहा था ना. आई टोल्ड यू चैट, लाइक आई of course, I'll switch it on in time. Yeah, I mean, always on time. Always. Yeah, I think now the camera is stable, even though I am not, but the camera is. But yeah. So we are back to the games now. Let me check कहाँ पहुंची games. थोड़ा सा tilt करना पड़ेगा, I think. हाँ, now I'm in the center. 2889.2. Yeah, that is the live rating Magnus Carlsen had at his peak. So it's not going to be easy. Neha was knocked by Nepo. Yeah, you're right. Yeah. And then Vidit knocked out Nepo. Yeah, true. Because his calculation is the most accurate out of all players. That's correct, but his intuition is not. So मुझे लग रहा है कि maybe intuition उनकी develop होगी with time and he's gonna potentially be the GOAT. Ignore नहीं करा Falcon में बिल्कुल पटा message. Oh wow. And update chat, the games have begun. C4 by Caruana, E5 Gukesh. Let's go chat. We are going for the third and final matchup. It is Gukesh versus Caruana. 2 games. Let's see who wins. वाओ. एच भाई, ये क्या हो गया कैमरा को मेरे? ना जाने मेरे कैमरा को क्या हो गया, अभी तो यही था, यही खो गया. ओके, अभी ऑन हो जाएगा भाई, डोंट वरी. या ओके, आई एम बैक. And now to the games chat. Let's go. H6, काफी weird move by Gukesh. I think the goal is to basically get Caruana out of prep. And I think it's working. The fact that Caruana is thinking is a sign that he achieved the objective. That's nice. मस्त वॉइस. अरे थैंक यू भाई. अरे कमाल है, मुझे पता भी नहीं था. हिडन हिडन लोग बाथरूम सिंगर है, मैं स्ट्रीमर सिंगर हूँ भाई. By the way, e4 played, so preventing any hanky-panky d5. But of course, you can damage white's pawn structure here. But usually bishop pair काफी strong होता है. So black, unless मजबूर हो, वो bishop नहीं देगा.
एंड नाउ आई थिंक गुकेश टाइम पे आ गए हैं, दैट्स गुड। वो H6 आइडिया उनका फिलहाल काम हो रहा है। आपका बेचारे गोवा, आई थिंक आई विल बी लीविंग ऑन 30th और 31st। मैंने कुछ चीजें बुक करी हैं, अभी देखते हैं वो कंफर्म होगी कि नहीं। मीनवाइल बाय द वे, नाइट 6 played very logical, both sides gearing up for d4, that d4 square is very very important. h3 preventing bishop g4 pins. I think black is gonna castle soon. uh, अरे थैंक यू कार्टून भाई। कार्टून भाई बोलने में कितना फनी लग रहा है। पीक दिमाग लगा दिया तेरे भाई ने। अरे भाई पीक दिमाग लगाना पड़ता है भाई, वर्ल्ड कप में भी प्लेयर्स को लगाना पड़ेगा। चेस्कॉम इंडिया विल नाउ रिसीव कॉपीराइट बिकॉज ऑफ योर डूइंग साइटिको। अरे भाई मेरे गाने कितना अच्छा होगा तो भाई ये तो क्रेजी कॉपीराइट है ना भाई, इसमें तो दुख भी होना चाहिए। इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ऐसा कॉपीराइट तो। अरे A3 प्लेड, नाउ बिशप C5। सो ये B4, बिशप को लात पे लात पड़ी जा रही है। भाई ये क्या हो रहा है मेरे कैमरा के साथ? ऐसा क्या हो रहा है भाई? Why is the camera switching off? Why is it happening, bro? My camera is shy. Any tips for a shy camera, chat? Do let me know. I think we need it right now. बहुत shy हो रहा है camera for some reason. I think not what I expected the camera to do, but we're trying. Shy मत हो भाई. First time में हर किसी को shyness होती है. You know, when you switch on, it happens. It's okay. Let me just quickly switch it on again. मीनवाइल मैं दूसरी बैटरी भी चार्जिंग पे लगाता हूँ, जस्ट इन केस ये ज्यादा शाय हो जाए एंड इज अनेबल टू स्टे ऑन। आई एम बैक बाय समय भाई। मीनवाइल दूसरी बैटरी भी लगाते हैं भाई। हैव अ बैकअप चैट, ऑलवेज ऑलवेज। बैकअप को चार्ज भी करके रखना चाहिए हमेशा। यस, क्रेजी। Okay, while the backup is charging, can you flip the board? Do you want to flip the board? I'm thinking कि यार ऐसे ही रहते हैं यार। ऐसे बढ़िया भाई। वाइट साइड से काम कर रहा है। मुकेश वन द लास्ट मैचअप व्हेन वी आर लुकिंग एट द पोजीशन विद द वाइट पीसेस, तो ठीक है। When Samay was mad at you when you lost an online game, he says, Bhai Sahab, whenever I've played a sub battle for Samay, I lost every single time. But when Samay ka sub battle tha, but Samay was not there, I won every single time. Like was B Stats was leading his sub battle. I won every single time. So weird. By the way, knight d4 played. Now I think मैंने कहा था स्टार्टिंग में d4 square is the crucial square in this game because यहाँ पे आप if black controls this, white cannot break through. By the chat, Gukesh POV please. Okay, let's flip the board भाई। चैट की डिमांड है। चैट वार्न कर रहा हूं तुम्हें, लास्ट टाइम हम व्हाइट पीसेस देख रहे थे जब गुकेश ब्लैक पीसेस जीता। सो यू नो इफ गुकेश वर नॉट टू विन तो हार गलती होगा। बाय द वे बिशप E3, नाइस मूव चैलेंजिंग दैट नाइट इन द सेंटर। पर हमें कोई जल्दी नहीं है भाई, हम कैसल करते हैं मस्त। मारोगे तो हम पॉन या बिशप दोनों से मार सकते हैं। C6, वाओ। सो ही इज प्रिवेंटिंग नाइट D5। Long term, you never know. B5 can be an idea to break this pawn chain. And I think it's a very logical move for sure. But I thought पहले castle करेंगे। I think castling delay क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। Because white cannot castle queen side. So yeah, he castle. And now I think he'll castle as well. He should now. Because castling delay नहीं करनी चाहिए। दिस लुक्स वियर्ड भाई। देखो मैंने वही कहा था क्लियरली, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। आई थिंक वॉरेन बफे ने कहा था इफ यू वांट टू प्लीज एवरीवन देन सेल आइसक्रीम्स, एंड आई वुड लव टू डू दैट बट है नहीं मेरे पास। सो लेट्स स्टिक टू दिस, एंड जो हमारे पास है वही रहते हैं। बाय द वे यहाँ पे क्वेश्चन फॉर व्हाइट इज I would love to play queen d2 to threaten some attacks, but there is knight b3 forking the queen and rook, so you can't do it instantly. आपको कुछ और करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे रुक C1 खेल, रुक B1 खेल सकते हो। मे बी किंग H2 preparing F4 is also a plan. भाई मतलब आई एम प्लेइंग लाइक Caruana भाई, नाइस। ब्रो यूज्ड टू लूज एवरी सिंगल समय, रिमेंबर नो प्रेशर बट फुल प्रेशर। भाई समय के लिए खेलने में प्रेशर अलग पड़ता है भाई। आई थिंक ही हैज दैट वे ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन यू। ऐसा ही होता है इंडिया। बाय द B5 played another one of my moves, very proud of finding that move, now challenging that center. And I think दोनों प्लेयर्स मारेंगे नहीं। If white takes then the C file opens up, black इस्तेमाल करेंगे C file का। And if black takes then black का स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। So I think both sides will maintain the tension. नहीं समय 2000 नहीं पहुंचा भाई।
He plays a lot on chess.com, by the way. If you go to his profile, you'll see he plays regularly, like every second day, and he plays rapid. But he's not been able to reach 2000 so far. By the way, F4 played. The only problem is, yeah, bishop is a bit loose. The bishop on e3, look at that bishop. It's hanging. हवा में लटक रहा है भाई. So any tactics, it can be a problem. So white को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे. आपकी रियल एज और ईएलओ रेटिंग कितनी है भाई? गेस करो भाई. पहले पहले एज गेस करो. हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम? Gukesh is like diesel engine takes time to start. वाह अभिजीत भाई. उस 20% इथेनॉल अगर ना होता तो मैं, अगर होता तो मैं सुनता आपकी बात, बट अभी है भाई. नाउ इट्स नॉट गोना हैपन. 31, 50, अरे बाप रे. 24, अरे थैंक यू भाई. 80, नाइस बेटा. थोड़ा लाइक करने का बेटा. बेटा 150, 42, चलो भाई. 33 भाई, 36 एज. अब रेटिंग गेस करो भाई. फिडे रेटिंग कितनी होगी? टेक अ गेस. मीनवाइल चैट बिशप e3 के बाद गुकेश फिर सोचते हुए, he was ahead on the clock, now he's again behind. So Fabiano Caruana से भी टाइम पे पीछे है. वाह 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 अंश भाई वाह. इसी के लिए मॉडर्न है तुम्हें. एक बंदा 2889 लिखा. नाइस. मैं तुम्हें लग रहा है ये मिशन इम्पॉसिबल मूवी चल रही है. मैं मास्क कैसे निकालूंगा और मैग्नस निकलेगा अंदर से. हाँ नाइस. 2186, 2200 रेटिंग है भाई. भाई 4 लोग फायर आर्म नूब लिखो भाई. 4 लोग फायर आर्म नूब. बाय द वे विषमती के बाद अभी भी सोच रहे हो केश, कम ऑन भाई चलो. वी डोंट हैव सो मच टाइम टू वेस्ट. कम ऑन. एंड चैट डू लाइक द स्ट्रीम. लेट्स गेट टू. जल्दी से भाई, जल्दी से भाई. हमारे लाइक्स बढ़ने चाहिए और लोगों को स्ट्रीम पे बुलाते हैं, बिकॉज गुकेश कुड बी ऑन पाथ फॉर अनदर विक्ट्री हियर. Okay, Bishop g4 played. Not the best move, chat. Idea काफी interesting है, using that bishop, because if you take knight g4 is winning. Bishop hanging and king chaloge. Knight e3, 4 king, both pieces winning the game. But white is not forced to take. Checkers nahi hai mere bhai, and he can just take on d4 apparently. But not an easy move to play, giving the bishop for the knight. Come on, come on, come on. Hikaru bhai, ye move nahi nikalne ka, please. भाई कम बोलो. कम. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. I think this is psychological pressure. It's. I think Gukesh even knows this is not the best move. It's just kind of practical play. He knows कि time pressure बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, and he found this creative idea. He went for it. Hikaru also taking a lot of time. कि भाई, should I? What do I do? Do I take the knight? Gookie effect. I wouldn't call it Gookie effect just yet. Knight e2 is a huge threat, by the way. Lot of pressure on that knight right now. हिकारू का टाइम कम होता हुआ, कम होता हुआ. फैबी, सॉरी, यस फैब. अरे भाई फैबी, मैं हिकारू दिमाग से निकल नहीं रहा है भाई. फैबी, यस फैबी. बाय द वे, a lot of pressure on this knight. He needs to come up with a solution right now. What will he do? 20 seconds, time difference evaporate होते हुए. Come on, come on, come on. हिकारू पगलू क्या करे भाई, हमें हर जगह हिकारू. Oh, by the way, still no moves. टाइम नीचे आ चुका है उनका. Now Caruana again going down the clock. That's great news for Gukesh. He's up on the clock. Super important moment. And he finds the best move. Fabiano Caruana takes the knight with the bishop. And now you don't want to take with the bishop here, because now hg4 is a threat. So आपको pawn से मारना है ताकि you attack this knight. You have to take with the pawn now. Takes with the pawn. Nice move. Knight b1. Okay. Okay, now interesting moment. Do I take on e2? Because I don't want you to take this pawn, but I'm giving up the bishop pair. Do I move the bishop back and admit कि ये bishop g4 idea काम नहीं किया? Or do I take on... this is not an easy choice for, Gukesh. अरे thank you Cheswell भाई. Glad to have you in the stream, and do like the stream, chat. जल्दी से. Oh, rookie blunder. What? Chat, hg4 is the best move and the only move, but hg4, knight g4, king g1 pe there is d3 winning the game.
किंग H3 पे देयर इज क्वीन D7 इन द गेम. सो किंग, अच्छा बोर्ड गया क्या अब भाई? कभी बोर्ड जाता है बट मुझे कुछ दिख रहा है. हाँ आ गया आ गया आ गया. हाँ, so chat, if HG4, knight G4, king H1 only move, knight E3, forking queen and rook, and white is apparently better, but will Hikaru find this and judge this correctly is the problem. टिप्पू भाई भाई टिप्पू भाई क्या होता है भाई? टिक्कू टिक्कू साहिल टिक्कू भाई. टिप्पू क्या होता है भाई? टिप्पू वेयर साउंड्स लाइक सम ब्रांड विच इज अ कॉपी ऑफ टपरवेयर. एक और स्पॉन्सरशिप बाय द वे. अच्छा वो तो ब्रांड ही नहीं रहा ना यार, शिट. अरे फैबी यार, मैं हिकारू दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है? मेरे हिकारू दिमाग में क्यों है? क्यों है दिमाग में हिकारू? हिकारू निकल. निकल. निकल गया. हाँ फैबी. बाय द वे फैबी इन क्लासिकल चेस वुड 100% फाइंड दिस. But in rapid, ooh, he takes it. He takes it. Fabiano Caruana putting pressure on the world champion now and claiming कि भाई आपने पीस फ्री का दे दिया है मुझे. वाह. Come on, come on, come on. Oh. What does he do now? Now, two choices. Either you try to bring the queen into the game and try to bring it to h5 and checkmate white, or you take the fork. You can't do both. So it's a difficult choice. Do you get the material back or do you go on for the attack? Not an easy choice. Even f5 is a move here. अगर आप मारोगे, for example, the rook opens up and knight e3 is much stronger suddenly. So critical moment for Gukesh. टाइम बराबर है, दैट्स गुड न्यूज. टाइम अभी तक नेक टू नेक चल रहा है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन गुकेश. It's over, maybe. I don't think it's over yet. I don't think so. The king is squares. The king has no squares. It can never come to g1. There's d3 check within the game. Can't come to h2. That means it's stuck on an only square. Any check would be checkmate. So I think that's why there's still a chance. Come on, come on. Oh, he's losing a lot of time. 2-2 नहीं भाई टिक्कू भाई. 2-2 क्या होता है? टाइम प्रेशर स्लोली क्रीपिंग इन. अभी भी ठीक है. इट्स नॉट रियली अ लॉट ऑफ प्रेशर जस्ट येट, बट एक ना एक नजर उनकी क्लॉक पे जारी होगी. ही वुड स्टार्ट फीलिंग हिज हेयर राइजिंग ऑन हिज हैंड्स थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होते हुए. +1 इज अ लॉट श्रेयान, बिकॉज यहां पे मटीरियल है, जैसे एक इम्बैलेंस है. 2 pieces फॉर द रुक इफ यू गो फॉर नाइट e3, एंड दैट्स अ लॉट. बार नीचे खींच लू, काश भाई मेरे हाथ में होता. बट मेरे हाथ में नहीं है, वरना तो मैं खुद वर्ल्ड चैंपियन ही बनता भाई. स्टिल नो मूव्स. He still no moves. Still no moves. Queen S6 played. He went for my move. He's trying to come to G6 and H5 checkmate black. So nice practical idea. And now knight A2. Only move for Fabiano Caruana. Only move. Wow. And Gukesh took a whole lot of time. 2 minutes and 5 seconds for the last move. Tough one. But he finds it. What will happen now? Chat, crucial moment in the game. 92 is the move for Caruana now. Try and get the knight, defend the e4 pawn, get the knight to the king side. That's where the pieces belong right now. Queen g6, queen h5 incoming. Caruana thinking, I think उनकी intuition बहुत ही बढ़िया है. He can sense this is the crucial moment, the critical moment. Oof. Fabi is feeling the pressure. Of course he's feeling the pressure, yeah. I mean, he knows. He knows that the position is not equal. Either he's better or he's just worse. This is very unlikely going to be equal. Yeah, it is natural for sure, but you have so many options right now. For example, one of the second best moves is rook a2. Tell me that's natural. It's not. Like, it's not easy to find rook a2, for example. Third best move is knight g1. Again, not natural. So knight e2 is the move, which is the only move for advantage. Will Caruana find it? बचाओ बचाओ क्या है भाई? ये ओम शांति ओम कहां से आ गई?
कम ऑन कम ऑन कम ऑन भाई, टाइम पे नीचे जाते हुए कारुआना फिर से, and he blunders. Let's go भाई, Gukesh's gamble has worked. भाई Gukesh gamble GG, and now bishop is the only move. Rook takes c4, rook takes c4, मार दो भाई. Let's go. Gukesh has a golden chance now. The advantage has evaporated for Fabiano Caruana. Gukesh is back in the game. White के pieces passive है, अभी game में नहीं है. And before the knight comes in, let's grab that pawn. Come on, come on, come on, Gukesh. भाई वो गो कुकी को गाना याद आ रहा है मुझे भाई, गो गो कुकी को, गो गो भाई, मस्त गाना था भाई. कम ऑन, लेट्स गो. Time, I think management better here. By the way, knight d2 is a big threat. You cannot allow it at any cost. AI है. Yeah. कारुआ, आई थिंक जब भी मैं वीडियो गेम खेलता हूं तो मैं तो यही कहता हूं आपको, एआई था ब्लंडर, वाज नॉट रियली मी. बट टॉप लेवल पे आई थिंक यूजुअली उनकी अच्छी चाल भी है कि बराबरी होती है भाई. सो कम ऑन कम ऑन, just grab it man, it's free. I mean rook e4 के बाद you wonder ki what happens on knight d2, but you just sack the rook, you play queen h5. You might win the rook but you will lose the game, so there is some calculation to be done, and that's why Ukesh is calculating. But come on Ukesh, you are the best, one of the best calculators in the world. You can do this. Chat, I'll tell you what a piece up means. For example, if Fabi is a piece up and the bar says it's equal, iska matlab at some point with best play from both sides, either it will be a draw by repetition or Fabi will have to give back a piece to equalize the game. So that's basically what it means. So that's great news, right? Because iska matlab ki Fabi, even though he's a piece up, is not better. That's great. By the way, देखते क्या होगा यहाँ पे. Rookie for best move played. Now bishop g4 is one of the moves. Also knight g1 is another move. Knight d2, as we saw now, is a blunder because of queen h5. So important move for Caruana here. What will he play? Come on, come on. गलती कर दे भाई. यहाँ गलती करना पॉसिबल एक्चुअली. रुक f3 कह रहे हैं वहां पे सुजीत भाई. रुक f3 is a blunder. Queen h5 resigns. Because king g2, if you try to defend the bishop, there is knight d3 check now, and you resign the game. So, I think यहाँ पे गलती करना possible है. On 2 minutes, we are right down to the wire. 2 minutes each now, chat. 2 minutes each. Oof. Come on, come on, come on. Blunder it, Fabi भाई. Fabi भाई कह रहे हो कि मैंने क्या गलती कर दी भाई. Bishop g4 pe, I think you just take it back. And if you take the rook, there is a repetition. Queen h3, king g1, and d3 check. So it's an insane variation. I think let's not go too deep because rapid chess hai and blunders can come up at any move. Let's focus on the game, the live moves right now. Rook takes e4 on the board. Fabi low on the clock. He needs to play right about now. Otherwise, Gukesh could squeeze this out. He won with the black pieces against Hikaru. Can he do it against Fabi as well? Come on, come on, double, bhai, 1 minute, 20 seconds for Fabiano Caruana now. Queen f3 is a decent move, but f5 apparently. And suddenly black is slightly better there. हाँ, queen e4 खेलेगा Fabi, बताओ भाई, ये आ गया नया सजेशन. Queen f3, there is f5 chat, and that defends the rook, defends the knight, and suddenly black is slightly better. So it's a good move, but not the best. Less than a minute now for the world number 3. Fabiano Caruana under pressure on the clock and under pressure in the position. He takes it. Wait, what? भाई एक सेकंड के लिए तो हार्ट मुंह में आ गया था. And now 94, only move for Fabiano Caruana. Otherwise he's lost. This is a repetition chat, but Fabiano has to find knight d4. Rook f2 is a blunder. He has to find knight d4 with 42 seconds on the clock. Will he find it? 34 seconds.
Of course, he'll find it. I know, SG, but time pressure can make you do weird things sometimes. Because knight d4 is admitting that it's a draw, right? It's saying you have repetition now with queen g3. 18 seconds. He has to find it. Gukesh wins. 12. I told you it's not easy. D takes c2 is winning for Gukesh. Come on, let's do it. Let's do it. Come on, Gukesh. Take the knight. Take the knight, Gukesh. Take that knight. Take that knight. Come on. It's completely winning. Let's go, Gukesh. He has time on the clock as well. He has enough time on the clock. He can pull this off. Chat, D takes e2, queen takes e2, and simply opening up the king. And Gukesh is clearly better now. The problem is the piece is sitting at home doing nothing. Take the knight, Gukesh. Take the knight, Gukesh. He's thinking. His intuition should tell him something's wrong about this move. Caruana wanted to win. He wanted to keep putting pressure, but he had to play knight d4. There was no other option. The illusion of choice potentially causing Caruana the entire game. Can Gukesh find the only winning move to prove a point here to everyone and to himself that he's gaining in strength in the rapid format as well? D takes c2 and he has played it. Hi, Gukesh OP in the chat. Let's go. And now DC5 only move played yet again. And now check. Very important. You want to take with check. No trading of queens just yet. You have to attack Gukesh. I mean, it's the most obvious move in the position. He's going to play that. I'm sure he's going to play that. Take that pawn with check, Gukesh. Let's go. Taken it. Absolutely fabulous. And now don't trade queens. Let's bring the queen into the attack. Wow. Plus 3.5 for Gukesh now after queen f5. Queen f5, queen g4, queen d7. Everything is winning. I told you that knight d4 was not easy. I told you. What a game, man. What a game. Wow. Come on, Gukesh. 40 seconds. Some pressure there still. Still, I can see the clock creeping down to that 0-second mark. So you never know with the clock, creeping behind you. You always have to be careful. Come on. Gamble worked. Yeah, it worked. And queen e6, a slight error. Still a decent move. Still winning. But not the best. And now he has to take the rook. Let's take the rook, Gukesh. Let's grab that rook before it, escapes. 19 seconds. Time pressure talking again. He has to look. Come on, Gukesh. Khelo, bhai. Para. 10. Come on. Queen f6 also an option attacking the rook. But you have to do it right now. 5 seconds. Play. Oof. Okay, slight error, but it looks practical. I think it's a practical move, I feel. I don't think this is a bad move, question mark here, but you get a pass on the third rank, you play it, yeah? Now white has a piece, but his king is weak. Black has a bunch of pawns. Rook d8, nice move. Coming to d3, d2. Both players under time pressure. Who will be the first one to crumble and make a mistake? Rook e1 maybe for Caruana now. Played. Queen c4, nice move. Keeping an eye on the knight. Ooh, blunder now again. Let's go see a5, a4. Come on. Apparently that's a big. Ooh, rook d3 also nice move. Like it. B2 only move? Man, that's not easy. B2 is the only move? There is no way he finds B2 in 8 seconds. Come on, B2. Okay, still better, not completely winning anymore. C5, nice move though. Second best move in the position. Okay, queens have been traded off. Can Gukesh, rook d5, only move now. Only move rook d5. Oh, that's tough. That's tough. Arey yaar, that was tough. I think he had a winning move. This might end in a draw now, chat. B2, rook b4. On rook d4, that's the plan. Wow. And rook d4 now is the move. Rook d4, yes. Oh, only move, knight c3, brilliancy. Wow.
Fabi won't find it. No, he will, yeah. He will find it. Of course, he finds it. 4-3. Let's go! Gukesh completely winning now with the Rook end game, I think. I think Rook A4, this is winning. This okay, it's not super simple, but it should be winning now. Because F1 push ho chuka hai. This is not the ideal configuration. This should be objectively winning for Gukesh now. Rook A4, Rook A4. Well done. Let's go. King G6. Aage lao, King F5. H5 maybe. Completely winning for Gukesh now. He can defeat the world number 3 and potentially join Magnus in the lead. Wow. Rook D4. What a find by the world champion. Nice. King walking up. Chill morning walk. हम steps की बात कर रहे थे. How to lose weight. The king is gonna show us the path. Let's go. H5. Nice move. Heck of a game. Agreed. Ooh. Yeah. Still okay. Still okay. I think उस रुक को हटाना है. King को आगे लाना है. I don't know how you do it. I don't want to play G5. That will exchange a few pawns. Okay. He's still keeping it flexible. Not super easy to convert this. King E6 maybe. Used to get the king to D5. Come on, Gukesh. I think A5 ka plan hai abhi. Still winning, chat, still completely winning. And rook endgame time is not as important. I think Gukesh can play a few moves to gain time on the clock, so this is not such a problem. A5, nice move. Now rook C5, king E6, king D5 has to be the maneuver. Rook C5, king E6, king D5 has to be the winning maneuver, I think. Played rook C5 on the board. Maybe G5 also now works, I think. Yeah, G4 then. Yeah, I think G5 also works. Or king E6. G5 played. Okay, nice move. Takes with the pawns. Super important to keep the pawns connected. And apna idea G4 ka hai chat. G4 check. And when the king moves back, we come to E4. That's our plan. And that should be a winning plan, I think. Yeah, 1 second, brother. 1 second. Do like the stream chat. Let's get to 2K likes if possible today because we have a chance to bring more people. Gukesh is playing some fascinating chess today. Let's get more people to the stream. Check. Okay, completely winning now. King E4 aage badhna hai. Let's keep moving forward. Come on. Let's go. By the way, huge upset. Hikaru Nakamura defeats Magnus CARLSEN with the black pieces. If Gukesh wins, he will be in the tournament lead. Wow, let's go. Tied first place. Come on, Gukesh, bye. Check. Yes, completely winning now. Resigns. He has to resign. Caruana has to resign now. There's nothing to do. Time to resign, I feel. He has to resign. I think there's nothing to do now. It's done. Over. Finish. Resigns incoming. Oh, still plays on. King F3 now. Easy peasy. Played rook H5, king G3, king F1, and chat. Yahan pe rook A1. Oh, rook A1 check is the only move. I mean, it's an obvious one. Yeah. And it's resigns for Fabiano Caruana. Unfortunately, the pawns come with check. And Gukesh Damaraju defeats Fabiano Caruana with the black pieces after defeating Hikaru with the black pieces. And he's going to join Magnus Carlsen in the tournament lead with 3 points. Gukesh Opi in the chat, brother. Let's go. Gukesh Opi spam kar do. And final game will start in exactly 4 minutes from now, chat. So, maza aa gaya bhai. Question to you, chat. Who will be in lead of the event after the final game for today? क्या लग रहा है chat कौन होगा lead में? Wow, भाई मजा आ गया भाई. Gukesh, absolutely crazy. Okay, फिर से black दे दो. That's true actually. इसको black से जीत रहा है, white से बेचारा draw कर रहा है यार. इसको black से ही खेलने दो. Nice suggestion. Hikaru defeated Magnus. Yes, by the way, let's look at that game, yeah? So Hikaru defeated Magnus. This was the final position. भाई क्रश कर दिया यार मैग्नस को ब्लैक पीसेस से. वाओ, क्या वाइट मैग्नस, अ किंग कंप्लीटली बेयर ओपन. या बिशप e4 चेकिंग कमिंग डन. And the second game has already started between those guys, so let's stick to this until Gukesh's game starts. I think 2 मिनट में चालू हो जाएगी. Oh, they're going for a draw. Oh, Hikaru is going for a Berlin draw. Hikaru goes for a Berlin draw against Magnus. Wow.
हिकारू इज लाइक ब्लैक से जीत गया, अब व्हाइट से ड्रॉ करता हूं, नाइस। सो दैट मीन्स चैट, if Gukesh defeats Fabiano Caruana in the final game, he will be in sole lead after round one. If he draws, he'll be in tied lead. If he loses, he'll be in second place. So, golden opportunity to finish in first place ahead of Magnus, Hikaru, and Caruana. Let's do it, Gukesh. Let's defeat Caruana and day one end karte hain in first place. That's gonna be insane if it happens. That's gonna be crazy. Wow. Let's go, bhai. Let's go. भाई गुकेश अभी बनता है भाई। गुकेश का 27, तो फैबी इज टू नर्वस। आई थिंक फैबी लॉस्ट टू कार्लसन, लॉस्ट टू गुकेश, मोमेंटम उनके हाथ में नहीं है। सो कैन गुकेश गेट फर्स्ट प्लेस? Berlin draw, we saw just saw that, Arnav, bhai. We just saw that, and Hikaru taking a safe draw in the final game, and now it's about Gukesh. Can he take sole lead? This is a golden opportunity. Hikaru, I think above ऐसा कुछ नहीं है. I think it's just a seeding because Gukesh is the lowest seed. They are tied in second place. Nobody is in second, like second, third. दोनों second पे ही हैं. You know, करण जौहर यार, ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता. I don't see the remnants. Does somebody see it? Why is Hikaru in second? Okay, Magnus game already over, draw. Hikaru took a draw because he won with the black pieces. He wanted a positive score against Magnus and he got that. खेलता तो he would have risked it, right? He could have lost. करण झोपड़ भाई, करण झोपड़ भाई, आई नो गरीब है बट इतने भी गरीब नहीं है भाई। ये बर्लिन ड्रॉ क्या होता है भाई? कई एक फोर्स ड्रॉ होता है सीक्वेंस का, जो सारे टॉप प्लेयर यूज करते हैं जब भी उनको ड्रॉ चाहिए होता है। लाइक दिस इज अनअवॉइडेबल फॉर बोथ साइड्स वंस यू रीच अ सर्टेन नंबर ऑफ मूव्स, एंड ये ड्रॉ लेना पड़ता है, अदरवाइज द अदर साइड बी वर्स। तो या, only one game remaining, chat, that is Gukesh against Hikaru starting in the next 60 seconds. Yeah. You are male. अबे ये क्या है भाई? And D4 on the board. Let's go. Final game chat. Predictions डाल दो. What do you think happens? I'm gonna add a poll as well, jaldi se bhai, because it's gonna be exciting. Who will be in lead after round one? Let's see. मैं poll डालता हूँ. Who will be in lead after day one? Gukesh sole lead. Gukesh, Magnus tied lead, and I think third option is Magnus sole lead, right? Yes, let's go. Oh, another Kings Indian. Caruana Kings Indian खेल रहा है भाई. What? क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे भाई. I think he maybe looked at Gukesh's game against Hikaru and he's prepared something. Like होता है ना, वो टाइम मिला होगा 10 मिनट का. कारुआना ने बैठ के शायद, अगर if they're allowed to, he might have gone back and seen कि कैसे I could have outplayed Hikaru, could have outplayed Gukesh. So he's gone for that opening. Very interesting. Gukesh sole lead 52%. Magnus Gukesh tied lead 31%. Magnus sole lead 17%. So very neck to neck. देखते हैं क्या होगा. शिव जी, कोई तो फायदा हुआ है आपको? बिल्कुल भाई, बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए कॉलेज में भाई, उसका फायदा हुआ है। कमांड वी गॉट इट, बिल्कुल भाई। एंड गुकेश टाइम पे फिलहाल बढ़िया खेल रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट हाफ में ही प्लेज वेरी वेल, सेकंड हाफ में ही लैग्स बिहाइंड द क्लॉक। यू लुक वेरी सिमिलर टू करण जौहर। आई डोंट सी इट, आई डोंट नो व्हाई। मे बी इट्स maybe I don't want to look like Karan Johar, maybe that's the reason, but I don't see the resemblance. Maybe it's there. होगी यार, बहुत लोगों ने बोला है। How is King Fianchetto opening? By Fianchetto is always great. Kisi ka bhi Fianchetto. I think it makes your king very, very safe and makes a lot of sense. By the way, right now, Gukesh has a nice position. I think center hai, D5 pawn hai, E4 bhi फेंक सकते हैं to gain more space. And the thing is, King's Indian structure में usually black attack करता है, but यहाँ C file open है. So that means your attack is not going to go far. Yep, Magnus Hikaru drew, we saw that. डे 2 में विन पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे क्या? हाँ,
I know Gukesh is leading chart. This is where my throat stops working. But day 2 pay, every win will get you 2 points. And day 3 pay, every win will get you 3 points. So Gukesh could be leading, but then day 2, day 3 अच्छा आना जरूरी है. आपकी लव है कि लव. पता नहीं भाई. बाद में e4 played, f3 played, attacking the bishop. इसको इतनी लात पड़ी है जितनी किसी को नहीं पड़ी. And now bishop e3 played, queen d2, rook c1. Very very smart chess by Gukesh, keeping it solid. एक ही pawn chain है, उसेन बोल्ट की तरह. f3, e4 and then d5. बढ़िया है. White Magnus and Hikaru match ends so quickly because I think they were Magnus black tha, so draw has to be okay. And Hikaru just wanted a positive score. He won with the black pieces. He was happy with the draw. By the way, 93 now, very logical. You don't want to keep your knight on the back rank. Isko d3 pe late hai. Also controls the c5 square and also prepares f4 and also a lot of ideas, right? Lot of ideas here. Why didn't Gukesh take Berlin draw? Because he's ambitious. Let's make king great again. Wow. By the way, b6 again. Plan is knight c5. So let's prepare for it. Maybe, I don't know, queen d2, rook c1. Yeah, black is solid, but white is slightly better, more space. Yeah. Kal ko imagine karo ye bishop na ho. Let's imagine the bishop is not there on d7. I can play rook c1 and rook c6, and that's very uncomfortable for black. So white definitely slightly better. Can you tell all the matches which happened till now? I didn't see anything. So Gukesh right now, as you can see, is in tied second place. If he wins this, he will be leading the clutch chess champion showdown after day 1. Magnus ke saath Gukesh lost 1.5-half, but then he defeated Hikaru 1.5-half, and he also defeated Caruana in the first game as leading 1-0. So final game for today. Let's see what happens. मैंस के हाथ में नहीं. हिकार ये क्या है भाई? क्या कहना क्या चाहते हो भाई? अश्लील बातें कर रहा है लौंडा. मीनवाइल 8 मिनट मुकेश के पास, अ मिनट बिहाइंड. उफ, टफ 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 टफ. कम ऑन यार. वेयर इज द पोल? पोल भी आएगा मेरे दोस्त, सब आएगा, डोंट वरी. Final match for is this 10 yes, is 10 plus 5. What about Hikaru's king throw? I think वो किया था उन्होंने in the exhibition match. यहाँ पे वो सब नहीं होगा. Gukesh will win. पार्थ भाई इतने confident हैं. पार्थ भाई काश मैं भी आपकी तरह इतना confident होता यार. फिलहाल गुकेश टाइम पे बहुत पीछे जाते हुए. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग. हमने कहा था स्ट्रीम के स्टार्टिंग में 2 लंबी थिंग्स मिल सकती हैं आपको जहां पे आप 1 से 2 मिनट तक सोच सकते हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग फॉर गुकेश. समोसा और चीज पेपी बर्स्ट पेपी पनीर. भाई पेपी पनीर इज अमेजिंग, बट इट्स आल्सो मोर अनहेल्दी. सो मे बी समोसा अगर एक ही खाना है तो. Yukesh 2703.4 live rating. You mean in nice in the rapid, yeah? That's amazing. Come on Gukesh भाई, बहुत टाइम हो गया यार. I know time allowed है, बस इतना भी नहीं. भूख लेकर ऑर्डर कर दो भाई. रात के 2 बज रहे हैं. रात के 2 बजे कुछ नहीं मिलता. अगर आप किसी मेजर सिटी में रहते हैं लाइक दिल्ली मुंबई एंड क्रेजी रेंट दे के आप रह रहे हैं तो भाई खुद ऑर्डर कर दो भाई. मेरे लिए भी ऑर्डर करो. बाद में B3 प्लेट. सो I mean, it's a normal move. I think it's not that crazy. I think आप rook c1 कभी ना कभी आना पड़ेगा. Queen e2, by the way, again. Apparently, the best move for black is bishop c8, bishop a6. That's a nice move. And there is no clear defense to it, right? Because I don't want to, after bishop c8, I don't want to move the queen again. Like, that's too much, yeah? That's too much. So I think मुझे लग रहा है कि, oh, found by Caruana there. So Caruana putting some pressure. अब शायद मारना पड़ेगा हमें. Hikaru won against Magnus and drew the next game. That's why he's on 3 now. Zomato हर जगह है अब इंडिया में. नॉट मेरी यार, मेरे यहाँ पे तो नहीं आता यार रात को इतनी बजे. सारे टॉक्सिक भाई सही नाम है आपके लिए. नहीं भाई, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ भाई. बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी नहीं फैलाता हूँ. सही में भाई, सही में. मीनवाइल चैट यहाँ पे 6:30 मिनट है भाई. गुकेश भाई जल्दी प्लीज ओपन यूट्यूब चैनल. ओपन भाई. अब ओपन कर दिया तो 100 के भी करने ही पड़ेंगे. डन 100 के ऑल्सो भाई.
बाय द वे अभी भी नहीं चल रहे, 3 मिनट का एज, आई थिंक दैट्स अ लॉट. I have not seen a 3 minute edge at this stage of the game so far today. So, time management wise, I think this has not been a great game. Knight b5, okay, but what happens on bishop a6? How do you unpin? Looks a bit uncomfortable because if you want to take on c5, then knight b5 is not the best move. टिक्कू नाम है भाई, टिक्कू नाम है चैनल का, बाय द वे ये भी अपना ही चैनल है भाई. बाय द वे नाइट c5, डोंट लाइक इट, बट वापस भी नहीं आना है. आई थिंक गुकेश इज स्ट्रगलिंग अ बिट, चैट. Yeah, I think he's overthinking. Well spotted, Nishant. I think he's overthinking. कहाँ रहते हो साहिश भाई? रोड पे पूछ रहा है. I live in पनवेल अभी. I lived in फरीदाबाद, but I shifted. साहिल भाई, आप मैग्नस की लेगेसी को खत्म कर दो. उसके फिडे की वेबसाइट हैक करनी है क्या उसका नाम हटाने के लिए? ओ बाय द वे, दिस इज नाइस, बट नाइट c7 आ रहा है, रुक b8 आ रहा है. आई डोंट लाइक दिस टू मच, टू बी ऑनेस्ट. एयो, नवी मुंबई गैंग. भाई अपन तो नहीं, वैसे भी कोने में रहता है यार. पनवेल इज लाइक इन द मिडल ऑफ नोवेयर. Gukesh is tense. I'm sure he is. Yeah, 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है. Chad, this is not looking great. This is not looking great. Are you taking chess courses? यार courses ढूंढने वाले को मिल जाएंगे, but फिलहाल के लिए, this is not looking nice. 4 minutes 50 seconds. This is 9 minutes 13 seconds. Because the commentary यहाँ करते हैं भाई. We'll also be commenting for the World Cup on this channel, so do subscribe. Come on, come on, come on. चैट 4.5 मिनट डबल टाइम है अब उसके पास लिटरली. व्हाट्स हैपनिंग? मुकेश, डोंट लेट गो ऑफ द गेम. यू हैव टू फिनिश वेल. आई मीन लास्ट मिनट पे क्रम्बल नहीं करना है. आई नो सेकंड प्लेस इज नॉट बैड, बट यू नो व्हाट्स बेटर? फर्स्ट प्लेस. यार क्या चल रहा है गुकेश? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. बाय द वे, ओके, ये यूएस में चल रहा है चैट टूर्नामेंट, सो वहां पे अभी दिन के आई थिंक 2 या 3 कुछ बज रहे होंगे. आई थिंक नहीं, 3 या 4 बज रहे होंगे. A little brain fade. I think he's not able to find a solution to the problem. Bishop d2 apparently is the best move, but even that's not convincing. इंटरनेट खराब हो गया है इसका. नहीं नहीं भाई, दिस इज ओवर द बोर्ड. किलमोंग जी, यार अब मैं ज्यादा डिटेल दूंगा तो आप मेरा एड्रेस ही निकाल दोगे, सो आई कांट गिव टू मच डिटेल्स. बाय द वे, a4 played and knight e8. These were the last two moves, and Gukesh has still not played. Has 1/3 the time now. Is I am better than him? Yes, it is. वर्ल्ड कप वीडियो फीड, हाँ वर्ल्ड कप में वील हैव द वीडियो फीड भाई. वील हैव इट देयर. सो उसमें होगी, उसमें कोई चक्कर नहीं है. ही इज फीलिंग द प्रेशर, ही इज, बट आई मीन freezing is not the solution, right? He has to do something. Who is the member who has been the longest active member in chat? Very hard to know actually. बहुत लोग हैं. I think Mandar Bhai is one of them who's been there for long. Lots of people who are there, but sometimes they might be lurking, but they might not chat now. So very hard to choose one. जो स्टार्टिंग से थे और अब तक है. Why is the title of FIDE upside of CM? I think CM भी है, बस NM भी है. I have both titles. ये गेम फैबी ले जाएगा शायद. अरे भाई यार, शाहरुख भाई थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए युकेश को यार. आप दुल्हनिया ले गए तो यार इंडिया वाले क्लचेस भी ले जाने चाहिए. बोर्ड उल्टा करो. नहीं भाई, उल्टा उल्टा नहीं, हम सीधा देखते हैं. आज का ये लास्ट गेम है. लास्ट गेम फॉर टुडे. कल दोबारा 6 गेम्स होंगे. दोबारा गुकेश विल प्ले ऑल दी अदर 3 प्लेयर्स. स्टे ट्यून फॉर टुमारो चैट 10:30 PM, सेम प्लेस सेम टाइम. बट फिलहाल के लिए दिस गेम इज द वन. 2 minutes 50 seconds वर्सेस 8 minutes. डैम, that's a big difference. But he found the best move. The good news is he found the best move. That's the good news. Okay, knight c7, bishop f1. Wow, what a beautiful maneuver. Yeah, bishop f1. Nice find by Gukesh to hold on to the games, at least for now. And just hold on to that pawn, yeah?
गया भाई गेम हाथ से। आई एम नॉट सो श्योर अभी गया गेम। ग्रेविटी विल हेल्प द बार टू गो डाउन, अरे यार। या आइंस्टाइन ने कहा था कि नो, ये तो मैंने क्रेडिट ले लिया, बट एक्चुअल में मेरी थ्योरी फायर हमने निकाली है। E इक्वल टू एम स्टार स्क्वायर व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। यार पता नहीं भाई, यार अब तो लेट ही उठूंगा कल। कल मैंने शायद टॉक्सिक भाई का कोर्स देख लिया। भाई नहीं नहीं भाई, तो मतलब अच्छा कोर्स है, मतलब कह रहे हो मतलब ही इज प्लेइंग वेल। नहीं नहीं, जबकि जीता तो बोर्ड ऐसे ही था भाई, वी स्विच इट बैक, याद करो। थैंक यू थैंक यू। दीपक बाय। आई थिंक मैक्स विल विन द ओवरऑल टूर्नामेंट एज ऑफ नाउ। डे वन पे तो ही इज डूइंग वेल, गुकेश आल्सो डूइंग वेल। Day three will get 3 points per win. So very hard to know until day three who's going to win. But the good news, Gukesh is playing well. Plan for the future भाई, बस कंटेंट बनाना है, चेस को पॉपुलर करना है। अभी अरे सुपर चैट लर्निंग ट्रेड्स के द्वारा भाई, पनवेल में रहता हूँ। मैं भी पनवेल में रहता हूँ। 711 कैफे। बताओ कहाँ ऑर्डर ही भेजो आपको। नहीं नहीं भाई, आई थिंक अभी ऑर्डर करना मुश्किल है, घर पे खाना बना हुआ है। बट थैंक्स टू लॉट्स सुपर चैट भाई, कभी और मंगाऊंगा भाई। एंड जब थोड़ा जल्दी हो दिन में। मुकेश, where to buy World Cup tickets? Pushpender ji पूछ रहे हैं. I think the World Cup tickets will come out in the next couple of days. So stay tuned. Just follow the Instagram accounts of Chessbase India and Chesscom India, and you'll find them there. Um, Draw gives 1.5 on day three. Yes, I think so. That will make a lot of sense. Still no moves by Caruana. I think that's a good sign. He's not able to find the best idea. कोई clear winning plan नहीं है. साहिल टिक्कू, वर्ल्ड कप का पैसा दिलवा दो भाई। हाँ बस, गरीब आदमी के पीछे पड़ रहे हो भाई। अगर तुम्हें पता होता मेरी लाइफ में भी क्या चल रहा है, तो भाई अभी तो मेरे सारे अकाउंट खाली है भाई, अभी मैं बिल्कुल गरीब हूँ। जब गुकेश के साइड से नहीं देख रहे तब की जीत रहा है, एग्जैक्टली तो इस साइड से परफेक्ट है। थैंक यू नील भाई। नो ड्रॉ इज इक्वल टू 1 पॉइंट। अच्छा रियली? वाओ, oh that's very interesting then. So higher, I'll have to confirm that one. But if that's the case, that's amazing because it really incentivizes wins, right? अच्छा, पास दिलवा दो यार, मतलब मुश्किल है भाई। उसके लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना, वैसे वो क्विड प्रो क्रो करना पड़ेगा, एंड थोड़ा डिफिकल्ट है, मे बी तुम्हें डबल चार्ज करना चाहिए फायर भाई। मतलब H5 प्लेट कारुआ ट्राइंग टू मे बी गेट बुकिंग एट 7, बिशप H6 ट्राइंग टू मूव दिस बिशप, मे बी H4 एट द राइट मोमेंट ऑल्सो पॉसिबल। डिसेंट मूव, आई थिंक नॉट रियली अ क्लियर कट मूव की प्लान क्या है, पर डिसेंट वन। रुक बी एट भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऑल्सो बैक रैंक इश्यूज हट गए अब, इफ दैट्स अ पॉइंट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। साहिल भाई के फेस पे ग्रूम वाला ग्लो कैसे है? गॉड नोज भाई। भाई वे 2 मिनट से कम होने वाले हैं भाई, चलो भाई। अब बहुत स्ट्रेस हो रहा है भाई, अब बहुत स्ट्रेस हो रहा है। गोकू या विजिटा? या गोकू ऑफ कोर्स, बट एट द एंड यू आल्सो हैव टू एडमायर विजिटा, या मतलब कैरेक्टर चेंज टू गो फ्रॉम दैट टू दैट इज क्रेजी। E4 और D4 which is good opening for beginner, I think। बिल्कुल बिगिनर के लिए E4, बट इफ यू हैव लिमिटेड टाइम, बहुत कम टाइम है, तो D4। इफ यू हैव टाइम टू लर्न ओपनिंग्स देन E4। आप तो ब्लश कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। H5 मूव देखते ही कई बार हो जाता है। H5 मूव इज क्रेजी, आई लव दैट मूव। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 1.5 minutes ब्रो, व्हाट्स हैपनिंग, चलो भाई। भाई टाइम पे ऐसे नहीं हारना भाई, वो होता है ना, वो नॉट लाइक दिस, वो नियो की मूवी में जब वो उनका बंदा उनको धोखा दे देता है, एंड देन ही जस्ट कट्स ऑफ द कनेक्शन टू 2 or 3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। लाइक नॉट लाइक दिस। H4, okay, I mean it's a decent, but F5 will be stronger now because the G3 point is weak. There is no point defending the G3 pawn. Someone locked location toilet. नहीं नहीं भाई, I don't, yeah, F5 on the board, gonna be difficult chat. Black queen side पे attack कर रहा है, black king side पे attack कर रहा है। It's black all the way. नेपाल गया कभी? नहीं, नेपाल नहीं गया यार।
We are moving down to less than a minute for the world champion. If he holds this game, that would be a commendable task. It's extremely difficult, first of all, because the position itself is really bad, but the clock makes it worse. And Caruana has all the time in the world to calculate, come up with the best moves. Of course, DPM by Attack on Titan देखी है, नाम सुना हुआ है, I don't know. Rook takes pawn possible. I think depends on your plan. You can also take with the pawn actually. That's also very logical. Because bishop open ho raha hai. Look at the bishop on g7. Look at the rook on a1. That's not a good tactical theme for white. जब भी e4 खेलोगे, rook free का hanging है. So कहीं ना कहीं पे maybe okay, yeah, he takes the pawn instantly. And now apparently the best move is f4, which is I mean, voluntarily allowing this is not easy and just sacking the exchange. Yeah, no wonder Gukesh doesn't find it, and now Caruana is better. No surprises there. Sahil by jumping like I always love to jump like a knight. Actually, the only piece that I can jump over pieces, so that's a great piece to be. Despite empty bank balance, बिल्कुल भाई, that's the crazy part. That's the crazy part. कल डिनर पर चले भाई, कल स्ट्रीम है भाई, कल स्ट्रीम है भाई, तो कल तो स्ट्रीम है और फिर मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड कप गोवा भाई लोग, गोवा, कम टू गोवा फॉर द वर्ल्ड कप. एंड बाय द वे रुके टू बच गया, मेरा रुक बच गया भाई, मैं खुश हूँ. एंड आई थिंक एटलीस्ट रुकेश के चांसेस थोड़े बढ़ते हुए टाइम डिफरेंस कम हो रहा है. एंड ऑल्सो आई थिंक मेरा रुक बच गया तो भाई एनीथिंग इज पॉसिबल. व्हाइट किंग इज सेफ भाई, सेफ. क्वीन और किंग एक ही लाइन पे है, सो आई वुडंट कॉल इट सेफ. रीराउटिंग या मेरे ओ बाय द वे ब्लंडर. See, you need to read out every time. Blunder here, and f4 is a big mistake, apparently. Okay, did not find the best move, but still decent because now after queen c2, queen g6, even white has attacking chances. Complete shift in the game. But does Gukesh have time to kind of convert this? If he wins this, that would be insane. Rook e3. Ooh, that's a tough move to face over the board. But Caruana might not find it also, because also other good options for Caruana. Yeah? Knight b5, as we discussed, as always, a great idea to take on b5. This is the last game for today, chat, and tomorrow we'll be back at 10:30 p.m. So super important game. 3:33. बहुत आगे है यार Caruana. Caruana थोड़ा टाइम तो वेस्ट करने का भाई लोग, बराबर करने का, जैसे वो गोकू करता है. He will like, give his opponent a chance. He will even give Frieza some extra energy to give him a chance. Come on भाई, थोड़ा equal करने का. Any favorite anime than DBZ? Not really actually. DBZ मेरा favorite था, but उसके अलावा I used to watch some of course, but DBZ अलग ही था भाई. Demon Slayer Infinity Castle. I don't even know what that is. 1 minute on the clock. This seems tough. Why? He's had a minute on the clock for a long time. So I think there's hope. There's hope. Fabi will blunder. Please God, दुआएं चल रही हैं chat में. क्या करेंगे Fabi? King h8 खेला है उन्होंने. Not the best move, but a decent one nonetheless. Rook g2. Okay, nice move. Putting some tactical pressure here. You never know. Bishop कुछ move कर सकता है, and Rook g7 could be in the air. Nice move. हिकारू के साथ भी टाइम सेम सिचुएशन है, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं बिल्कुल. एंड टाइम उसका कम हो रहा है Caruana का यार. It's getting lower and lower now. The time difference is reducing by the second. I'll try to watch it. है क्या टीवी मूवी है कोई? आप हाथ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं भाई, माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग. बिल्कुल सही इस्तेमाल है. एंड वी विल चैट 2 मिनट की तरफ जाते हुए यहाँ पे Caruana. सो प्रेशर भाई, प्रेशर देखते ही मजा आ रहा है भाई. अच्छा, बेस्ट एनीमे क्या होता है बोलते हैं? एनीमे है क्या? ओ डैम, I apologize. I said that Magnus will draw in specific relation, not actually Berlin. कुछ तो चल रहा है, डिबेट चल रहा है आपस में, डिबेट चल रही है भाई. तो ओ ब्लंडर भाई, Bishop d3 and wait, what is Rook f5? That makes no sense. अच्छा, he wants to take on d5. Bishop d3, Rook d5 is the plan, but that's a blunder after Rook f4. Rook d3 मारोगे तो Bishop is mate. It's mate in 6. Oh my God, the game is completely gone. Bishop d3, let's go. He might just be in first place. He found it. Oh my
my God, Caruana completely gone. A twist in the tail from losing to winning. And Gukesh Damanaju is proving a point on day one of clutch chess here. You know the best move? Bishop to f6 is the best move. And Queen f4 is the second best move. Oh my God. Wow. Gukesh, 10 seconds. Come on. King h1, also a nice move, by the way. Also a nice move. Also a nice move. Plus 4.5 for Gukesh now. Time situation is the only problem. Position wise, he's completely winning. Look at the black king. यहां से क्वीन अटैक कर रही है, यहां बिशप कर रहा है, बिशप रुक. द ब्लैक किंग इज स्ट्रगलिंग. टाइम मैनेज करना है बस. Gukesh could end up in first place. That would be a big statement. You know, rapid chess में जहां पे he is known to not play that well, he could be in lead after day one, defeating both Hikaru and Caruana. Let's see what happens. Caruana using that time. The clock is ticking down. Tick tock, tick tock. 1 minute 10 seconds now for Caruana. Yeah, he's playing with for check for sure. Is enough time to think. I think it is, but still, you never. Oh, another bishop is still best move. Still best move. And Queen f4. Both are completely winning. Come on, Gukesh. Take that pawn. Take that pawn. Take that pawn. Take that. Ooh, okay, nice move. Again, doubling up the rooks, preparing an attack on the g7 bishop. Decent, decent. Oh, bishop f6, mate in 9. And that's how it's done. Let's go. Gukesh Ofi in the chat. It's mate in 5. He's played a brilliancy. What a move. Bishop f6 to finish the game. The game is over. And it is Gukesh Damaraju winning the game. And he's going to defeat Caruana, world number 3, after defeating the world number 2. And he's going to make a statement. Guys, I am leading after day one. Who's the winner? It's mate in 4. There is no defense. And Gukesh Damaraju is going to do 3.5. He's going to do 4 points actually. Out of what? 6 points? He's going to be on 4. And he's going to be leading clutch chess ahead of Magnus CARLSEN after day one. Let's go. Gukesh अभी spam. जैसी गेम खत्म होगी, Gukesh अभी spam कर दो भाई. Let's go. रुकना नहीं चाहिए भाई Gukesh अभी भाई. What a day and what a game by Gukesh. Give this man a trophy. And Rook G8 check is the nice finish. Another brilliancy. Whoa. Rook G8 and Queen S6 to finish the game. And Gukesh Damaraju is going to lead the match with a half a point lead over Magnus CARLSEN. What a day for the world champion who's proving a point, crushing two of the strongest players in the world, world number 2 and world number 3. By World Cup ki prep बढ़िया चल रही है. And let's just put it out there. Gukesh Damaraju is back, bhai. Let's go भाई. एक बार Gukesh ओपी चैट में हो जाए भाई, मजा आ जाएगा भाई. क्या क्या खेला है भाई. And let's admire this move once. Bishop to f6, sacking the bishop, and then rook to g8, sacking the rook and finishing off in style. भाई जीतना जरूरी है, स्टाइल में जीते भाई. एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर दैट. एंड स्टैंडिंग्स देखे एक बार भाई. गुकेश इन नंबर 1 भाई. इसका एक स्क्रीनशॉट यार, निधि भाई, आई डोंट नो इफ यू आर वाचिंग दिस, एक स्क्रीनशॉट जरूर डाल देना भाई स्टैंडिंग्स का. कितना बढ़िया लग रहा है देखे. गुकेश दमराजू इज लीडिंग. ऑफ कोर्स चैट क्लच चेस है. डे 2 पे जीतने के 2 पॉइंट्स फॉर विन मिलेंगे एंड डे 3 पे 3 पॉइंट्स फॉर विन. सो डे 1 इज इंपॉर्टेंट, but every day as we move on is more important. So day 2 more important than day 1 and day 3 more important than day 2. So do not go anywhere. Tomorrow we'll be back at 10:30 p.m. for day number 2 and we'll have Gukesh versus Magnus again, Gukesh versus Hikaru again and Gukesh versus Caruana again. देखते हैं कल क्या होगा.
थैंक्स अ लॉट चैट फॉर जॉइनिंग टुडे। बहुत मजा आया भाई, आज बहुत मजा आया, इतने लोग देखे थे। स्ट्रीम लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर एनी मोमेंट नाउ, 3 days टू गो, जहां पे 3 स्पॉट कैंडिडेट्स के मिलेंगे एंड वील सी हु विल चैलेंज गुकेश फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो थैंक यू चैट, hearts in the chat for Gukesh. I'll see you tomorrow 10:30 p.m. Thank you so much for the amazing broadcast, and chat. Bye bye, take care and good night. Attention.